boss. For her, I would sail across the cosmic sea to the end of time. देवी और सजनों, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का मोबा लेजेंड्स 5v5 इंडिया शोडाउन सीजन 1, जो कि है स्पॉन्सर्ड बाय मोबा लेजेंड्स एंड ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन गेमिंग कॉर्प्स। देवी और सजनों, आपको बताना चाहेंगे ये जो मुकाबला है वो स्पेशली डिजाइन किया गया है गर्ल्स के लिए, यानी कि देवियों के लिए। हमारे साथी मित्र जो है वो आज हमारे साथ जुड़ नहीं पाए हैं कुछ तकनीकली समस्याओं की वजह से, तो मैं आज रहने वाला हूं आपके साथ कास्टिंग डेस्क के ऊपर। एंड आपकी उम्मीद रहेगी आज आप ऐसा सोच के चले कि एक कास्टर है एसएम और दूसरे आप रहने वाले हैं। जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़ने वाले हैं सभी के सभी आप रहने वाले हैं। आपको गैस करना है कि कौन सा अगला पिक आएगा, आपको गैस करना है कि कौन सा अगला बैन होने वाला है। आज का जो मुकाबला है वो सेमीफिनाले में हम पहुंच चुके हैं। 9 मफिन्स एक तरफ खेल रहे हैं, उनके सामने खेल रहे हैं अंडरडॉग राइस। दोनों कमाल की टीम है। अब देखना ये रहेगा कि आज कौन सी टीम अपना परचम लहराते हैं। आप देखें 9 मफिन्स की तरफ से बैन आना स्टार्ट हो चुका है। चिप का बैन हो चुका है, जॉय का बैन हो चुका है, यहां पे फोबियस का बैन भी देखने को मिल रहा है। अब अगले बैन कौन से हो सकते हैं मैं आपसे पूछना चाहूंगा। आप जो है कमेंट के अंदर अपनी राय जो है वो बताते रहें। देखिए अब यहां पे कहीं ना कहीं मेटा हीरोज ही ज्यादातर बैन देखने को मिल रहा है। सुयू भी ऐसा हीरोज है जो बैन की तरफ आ सकता है। और आप देखिए फोबियस बैन क्यों, तो फोबियस यार एक एक्सपी लेन में काफी परेशान करने वाले हीरोज रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो बैन फेस में दिखते जरूर है। लेकिन बैन में शायद आप ना जुड़ पाए हमारे साथ, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप गैस करें कि कौन सा फर्स्ट पिक आपके हिसाब से हो सकता है। देखते हैं कि कितने एक्सपर्ट
हमारे साथ जुड़ते हैं, कितने एक्सपर्ट की राय सही रहती है। आप देखें तो यहाँ पे सिसिलियन को उड़ा दिया गया, उसके साथ कार्मिला को भी उड़ा दिया गया। इनका डेडली डुओ खतरनाक रहता है। एंड कार्मिला जो है कर्स ब्लड का इस्तेमाल करते हैं तो फिर एक प्रेयर बनता है, उसकी वजह से काफी डैमेज पड़ता है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा बैन देखने को मिल रहा है अंडरडॉग राइस की तरफ से। और यहाँ पे 9 मफिन्स की तरफ देखें तो चलिए यहाँ पे पिक आता हुआ दिख रहा है मैथिल्डा। उस दिन हमने देखा था अंडरडॉग राइस ने कमाल का खेला था, लेकिन आज मैथिल्डा मिल रहा है 9 मफिन्स को। तो देखेंगे कि किस तरह से वो उनका इस्तेमाल कर पाएंगे। और दूसरी साइड देखिए अंडरडॉग राइस वो कौन से हीरोज के साथ जाना चाहेंगे। चलिए जूसिन ओपन थे तो जुक्सिन के साथ जाना चाहेंगे, उसी के साथ एक्सबॉग, एक्सपी लेन में दिख सकते हैं एक्सबॉग। तो चलिए यहाँ पे लास्ट इंफिनिटी उनकी जरूर आएगी, जब ज्वाला फटेगा तो उनके प्रकोप में कौन फंसता हुआ दिखेगा वो भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले आप देखिए स्कारलेट, जिनका नेम काफी स्पैम होता रहता है, अब उनके पास अगला दाव देखते हैं कि कौन सा हीरो वो पैक करते हुए दिखेंगे। उनके साथ जरूर है यूनिकॉर्न। अब देखते हैं कि कौन से दो अगले हीरोज, कौन से दो लेजेंड्स यहाँ पे 9 मफिन्स की देव या 9 मफिन्स की लेडीज पैक करते हुए दिखेंगी। तो चलिए वो हीरोज होने वाले हैं एक ब्रूडी, और उनके साथ दूसरे हीरोज जो आ चुके हैं वो है अल्फा। चलिए 3 ताबड़तोड़ हीरोज। वापस से फिर कहना चाहूंगा कि जितने भी लोग जुड़ रहे हैं कमेंट सेक्शन के अंदर यार अपनी राय जो है वो हमारे साथ शेयर करते रहें। अब चलेंगे सीधा अंडरडॉग राइस की तरफ, तो देखते हैं कि उनकी जो लेडीज हैं वो कौन से हीरोज के साथ जाना चाहते हैं। देखिए ये जो टीम्स है वो कमाल की ताबड़तोड़ टीम्स है, तब जाके वो सेमीफिनाले तक पहुंच चुकी है। एंड ये लड़ रहे हैं टिकट टू फिनाले के लिए। तो देखना रहेगा कि कौन सी टीम बेस्ट ऑफ 5 का मुकाबला जीत के अपना जो स्थान है वो दर्ज करवाते हैं बेस्ट ऑफ 5 के मुकाबले के लिए। चलिए क्लिंट आ चुका है, अब थोड़े हीरोज के ऊपर नजर डाल देते हैं। आप देखें मैथिल्डा, फिर ब्रूडी, फिर अल्फा। मैथिल्डा कहीं ना कहीं एक्सपी लेन में, या तो फिर एक्सपी लेन नहीं, वो रोमिंग करते हुए दिखेंगे। और ब्रूडी की बात करें तो वो गोल्ड लेन में जाएंगे। एंड अल्फा जो है कहीं ना कहीं हाइपर की तरफ हमको प्रयाण करते हुए दिखेंगे। ब्रूडी के सामने क्लिंट आने वाले हैं, डबल शॉट जरूर पड़ेगा। लेकिन ब्रूडी जब एक बार मिड गेम का प्रकोप उनका आने लग गया तो फिर जब सटाक जब पड़ते हैं तो काफी दिक्कत होगी। लेकिन क्लिंट को भी अगर थोड़ा बहुत अच्छे से फार्मिंग करवा दिया गया और आप थोड़ा सा फीड हो गए तो फिर यार वो भी धोबी पछाड़ मारना जरूर जानते हैं। और एक्सबॉग उनके सामने कौन से हीरोज आते हैं वो भी देखना रहेगा कि एक्सबॉग को जंगल करवाएंगे या तो फिर जंगल के लिए कुछ और सोच होगी उनकी, तो वो भी देखना जरूर रहेगा। आप एक्सपी लेन में आप देखें तो कहीं ना कहीं खालिद को उड़ा दिया गया है। तो क्या वो स्ट्रेटेजी, खालिद तो साल पहले उड़ चुके थे, अब देखे फारसा को उड़ा गया है। तो शायद सोच रहे हैं कि मैजिक हीरो अभी आना बाकी है 9 मफिन्स की तरफ से। तो कहीं ना कहीं अगला बैन भी अंडरडॉग राइस है वो सोच के चल रहे होंगे कि एक ऐसा बैन जो मैजिकल जादुई शक्तियां धराने वाला बैन क्या उनके जहन में चल रहा होगा। अब देखते हैं कि कौन सा बैन वो ज्यादातर सोच के चल रहे हैं। आप गैस कर सकते हैं कि आज जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं देवी और सज्जनों, वापस से आपके लिए ये सवाल है, कौन सा बैन या कौन सा पैक आपके हिसाब से आ सकता है। टाइग्रियल इम्प्लोजन को रोकना चाहता है, इम्प्लोजन की ताकत के साथ जब पूरी टीम को धराशायी करने की क्षमता रखते हैं टाइग्रियल, तो उसी वजह से चलिए उनको उड़ा दिया गया है। उनको पता है कि रोमिंग हीरो अभी आना बाकी है, तो कहीं ना कहीं इसीलिए एक रोमर्स को बैन करना उन्होंने सही प्राधान्य दिया है उनको। और चलिए एक और मेज बैन देखने को मिलेगा। मेज बैन इस बार देखने को मिल रहा है रोरू का। अब क्या जूसिन के सामने कौन सी मेज ये लेके आएंगे, ये भी काफी सवाल रहता है। क्या वो डाइवर्जन का इस्तेमाल करने के लिए लू यी को लेके आएंगे या तो फिर वेक्साना, क्या वो वेक्साना के साथ जाना चाहेंगे, कौन सा ऑप्शन के साथ वो जाना चाहेंगे, ये भी एक सवाल जरूर निकल के आता है। थोड़ी समय में पता चल जाएगा, हमको बैन दिखने मिल जाएंगे। उसके बाद देखते हैं कि कौन से हीरोज जो है वो पिक होते हुए दिखेंगे। एंड जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनसे वापस एक और दरख्वास्त करना चाहूंगा जरूर कि आप हो सके तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं या फिर आप किस प्लेयर को सपोर्ट कर रहे हैं उनका नेम जो है वो स्पैम होता रहना चाहिए, ताकि पता चले कि लेडीज के अंदर, इन देवियों के अंदर कितनी क्षमता है और इनके फैन जो है वो क्या चाहते हैं। आपकी डिमांड जो है वो बरकरार रहनी चाहिए कि कौन सी आपकी हीरो है या फिर कौन सी जो लेडीज है वो एमवीपी लेती हुई दिखेगी, या तो फिर आप डिमांड कर सकते हैं कि सेवेज या तो फिर जीत की। बेस्ट ऑफ 5 का मुकाबला है तो लंबा चलने वाला है, तो काफी कुछ उथल पुथल या बदलाव भी देखने को मिलेंगे जरूर। अब देखते हैं कि अगले पिक कौन से आएंगे, कौन से रोमर्स के साथ जाना चाहते हैं अंडरडॉग राइस। रोमिंग में क्या वो गटुड़ के साथ जाना चाहेंगे, चलिए वो कहीं ना कहीं चलिए रूबी को वो गटुड़ मतलब लेके जा सकते हैं अभी के लिए रोमिंग लेन में। तो अब देखते हैं कि क्या एक्सपी लेनर भी यूज कर सकते हैं अगर वो करना चाहें तो।
उन क्या स्ट्रेटेजी के साथ चल रहे हैं वो थोड़ी समय में पता चलेगा, लेकिन आप देखें तो यहाँ पे छोटा सखेल, उनका नेम भी काफी प्रचलित जरूर है। अब वो कौन से हीरोज पिक करते हुए दिखेंगे, देखते हैं, कुछ ही समय में पता चल जाएगा कि कौन से हीरोज के साथ वो जाना चाहते हैं। हालांकि ये पहला मैच है, बेस्ट ऑफ 5 का ये मुकाबला है, तो काफी लंबा चलने वाला है। सीसीएन लिलिया, फटाके फूटने वाले हैं, बम जरूर फूटेंगे, क्योंकि लिलिया यहाँ पे आई है तो थोड़ी सी दिक्कत जरूर देती हुई दिखेगी। आप थोड़ा सा देखें तो मैजिकल शक्तियां थोड़ा सा परचम जरूर है लाएगी। एंड दूसरी साइड देखें, मैथिल्डा थोड़ा सा एस्केप करने के लिए या फिर भागने के लिए मदद करने में काम जरूर आने वाली है, तो ऐसे हीरोज जरूर यहाँ पे पिक करते हुए दिखें। अब आप नजर डालें अंडरडॉग्स राइस के ऊपर, तो अंडरडॉग्स राइस के पास एक्सबॉग आ चुका है, जूसिन आ चुकी है जो मैजिक का रोल करने वाले हैं। क्या वो अब हाइपर में कोई अलग लेके जाएंगे, या तो फिर हमको एक्सबॉग हाइपर देखने को मिलने वाला है? कौन सी रणनीति उनके दिमाग में चल रही है, बस कुछ ही क्षण में ये जो अगले पिक आ जाएंगे उसके बाद पता चल जाएगा कि क्या स्ट्रेटेजी के साथ जाना चाह रहे हैं। और 9 मफिन्स की बात करें तो कहीं ना कहीं हमको एक्सपी लेन में सीसी देखने को मिलने वाले हैं। एंड हाइपर की बात करें तो अल्फा जो है हाइपर का रोल अदा करते हुए दिखेंगे, और कहीं ना कहीं चलिए एक्सबॉग जो है वो हाइपर करते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि खूफरा का आगमन जरूर हुआ है, तो खूफरा जो है वो रोमिंग लेन में जाते हुए दिखेंगे। एंड उनकी साइड से जो रूबी है वो हमको एक्सपी लेन में चलिए जरूर जाती हुई दिखेगी। एंड 2 मार्क्समैन आ चुके हैं, तो दोनों का कमाल का युद्ध होगा ही। अब एक्सपी लेन में देखिए सीसी के सामने रूबी, देखना जरूर रहेगा कि रूबी के पास एक चलिए वो फायदा जरूर रहता है कि उनको मारना थोड़ा सा टफ जरूर हो जाता है। उनके पास जो क्षमता है अपने आप को रीगेन करते रहते हैं, अपने आप को थोड़ी सी शक्तियां देते रहते हैं, और उनके हुक्म में अगर फंस गए, वो ऑफेंडेड होते हैं तो भाई काफी परेशानी तो जरूर लाते हैं। तो ऑफेंडेड होंगे तो किस तरह से वो तकलीफ लाएंगे वो भी देखना रहेगा। चलिए दर्शकों, वापस से क्वेश्चन आपके लिए, दोनों टीम रेडी हो चुके हैं, आपके हिसाब से कौन सी टीम पहली विक्ट्री, पहला पॉइंट लेते हुए दिखेगी? हालांकि वापस याद दिला दूं कि ये बेस्ट ऑफ 5 का मुकाबला है, अभी हमको काफी सारे राउंड्स देखने मिलने वाले हैं, इन दोनों टीम को दरकरार है तो वो पहली जीत की किसकी होगी अच्छी शुरुआत हमको कुछ ही समय में पता चल जाएगा, क्योंकि दोनों टीम तैयार है। चलिए खेतीबाड़ी की हो चुकी है शुरुआत, दोनों टीम जा चुकी है रणभूमि के अंदर। अब देखना ये रहेगा कि कौन सी टीम लेके जाएगी पहला ब्लड, फर्स्ट ब्लड, पहला खून किसकी तरफ से देखने को मिलने वाला है। आप गैस कर सकते हैं आपके ओपिनियन किन की तरफ जा रहे हैं। अभी के लिए देखें तो फर्स्ट ब्लड अभी आना बाकी है, दोनों टीम फार्मिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, खेतीबाड़ी कर रहे हैं। आप यहाँ पे एलईपी को देखिए, लैब को देखिए, वो आगे आ रहे हैं, उनके पास हीरो है लिलिया, माफ करना उनके पास सीसी है, और यहाँ पे सिरीन को देखिए वो खेलते हुए नजर आ रहे हैं, छोटा शकील उनके सामने, लेकिन उनके पास है ब्रूडी, बंदूकें चलने वाली है दोनों तरफ से। तो अब देखते हैं कि आगे आगे होता है क्या। आप देखिए कि 1 मिनट का समय हुआ है, यहाँ पे कहीं ना कहीं लेवल 4 स्कारलेट करते हुए नजर आ रहे हैं, अल्फा उनके पास जरूर है। क्या ये टीम फाइट का आगाज है? क्या यहाँ पे टीम फाइट होगी? एक चलिए उछल कूद के फेंका जाएगा, यहाँ पे अल्फा के स्पीयर का इस्तेमाल किया जरूर गया था, लेकिन क्या उनको किल मिलेगा? लेकिन नहीं, नेको तैयार थे उनका काउंटर करने के लिए, फर्स्ट ब्लड निकाला गया। उसी के साथ सिरेन ने बोला, क्लिंट ने बोला कि हम आपके साथ तैयार है, हम आपके साथ तैयार है दूसरे किल में अपना दाव देने के लिए। तो देखते ही देखते 2 योद्धाओं को धराशायी कर दिया गया। ये देवियां लड़ रही है, ये लेडीज दहाड़ रही है, और चलिए देखते ही देखते अंडरडॉग राइस अच्छी शुरुआत मिल चुकी है उनको। 9 मफिन्स दाव अच्छा था, अप्रोच अच्छा था, लेकिन चलिए खामियाजा भुगतना पड़ा। स्कारलेट समझे हैं इस बात को, वापस से अपनी खेतीबाड़ी को प्राधान्य देना चाहते हैं, थोड़ी देर के लिए पीछे जरूर हटे हैं। अब देखें टर्टल का आगमन हुआ है, सीसी टर्टल की आराधना करने के लिए पहुंच गए हैं, वो थोड़ा सा परेशान करते हुए दिख रहे हैं। अब देखें टर्टल कछुआ महाराज कौन टर्टल को आसानी के साथ लेके जाएगा। अंडरडॉग राइस डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप देखें छोटा सा कील वो अपनी लेन में थोड़ा सा मशगूल है अभी के लिए। अब स्कारलेट को देखिए वो अपना बफ के लिए मशगूल थे, और देखते ही देखते अंडरडॉग राइस आ चुके हैं। ब्लू बफ के लिए फाइट जरूर थी, लेकिन ब्लू बफ ले चुके थे, छोटा सा किल यहाँ पे तैयार जरूर थे। स्कारलेट को घेरा जाएगा, देखते ही देखते 2 किल आपने जरूर लिए, लेकिन काफी कम एचपी आपकी। जोसीन को देखे, आप नेको को देखे, नेको यहाँ पे आज तैयार है, आज वो दहाड़ते हुए नजर आ रहा है। लेंटन की ताकत, उछाल कूद की ताकत, ये है दंगल वाला मूव, ये है धोबी पछाड़ उठक पटक मूव। कमाल का मूव था उनकी तरफ से, और उठा के पटका गया। देखते ही देखते 1 किल और वो अर्जित करके गए हैं अपनी टीम के लिए। 5 किल
अंडरडॉग राइस 5 अंक अंडरडॉग राइस और 2 किल निकाल लिया। आप अभी देखिए आइटमाइजेशन की तरफ, तो कहीं ना कहीं सबके सबके बूट्स बनते हुए दिख रहे हैं। अभी भी आइटम्स कुछ आना बाकी है, तो देखेंगे जब आइटमाइजेशन हो जाएगी, जब सबके 3-3 आइटम्स आ जाएंगे, जिसको कहते हैं कोर बिल्ड। कोर बिल्ड के बाद किस तरह से खेलते हुए दिखेंगे। कोर बिल्ड के पास डैमेजेस आना लगेंगे, कोर बिल्ड के पास डिफेंस थोड़ा सा होने लगेगा, तो फिर रणनीतियां भी थोड़ी काम करती हुई देखिए। अभी के लिए एक अच्छा पहाड़ है, अभी के लिए एक अच्छी युद्ध की रणनीति। अब देखते हैं कि चलिए आगे बढ़े। मिनियंस प्रकोप करते हुए दिख रहे हैं, 4 प्लेयर तैयार है, यूनिकॉर्न आ रहे हैं, लेकिन रिमी को देखे वो आगे बढ़ चुके हैं। कुबरा उनके पास है, जंपिंग जपांग करते हुए गए, लेकिन इनके सूज पीछे जरूर होते हैं, तो किसी ना किसी तरह से वो पीछे चले जाते हैं, अपनी एचपी फुल करके वापस आ जाता है। सीसी कोशिश अच्छी कर रहे हैं। चलिए नेको माना की तकलीफ होती रहती है, इसीलिए कहीं ना कहीं उन्होंने थोड़ा सा उसका इलाज करते हुए दिख रहे हैं। अब देखिए टर्टल का स्पॉन होने वाला है थोड़े ही समय में, 15 सेकंड में वापस से टर्टल का आगमन हो जाएगा। तब तक अब देखें एक बार फिर घेरे जा चुके हैं। चलिए इस बार सीसी को रोका जाएगा। इनकी तरफ से कमाल का रोटेशन आ रहा है, अंडरडॉग राइस कमाल का परिभ्रमण कर रहे हैं। एक अप्रतिम मूव उनकी तरफ से ये देखने को मिल रहा है कि उनका रोटेशन, उनका परिभ्रमण ऑन टॉप देखने को मिलने वाला है। 4 प्लेयर एक साथ जरूर इकट्ठा होते हैं, वहां पे पता है किस तरह से यहाँ पे हैंडल करना है। अपने मार्क्समैन को पीछे छोड़ के आते हैं, तो रेंज जो है वो अकेली लड़ने के लिए तैयार रहती है, और उनके सामने बरूडी छोटा सा कील। उनके ऊपर आज काफी सारी उम्मीद है उनके फैंस को। देखते हैं कि वो कितने खरे उतर पाएंगे उम्मीद के ऊपर, क्योंकि अभी के लिए दबदबा जो है वो अंडरडॉग राइस का कहीं ना कहीं दिखता हुआ नजर आ रहा है। आप देखें रेड बफ के लिए जा रहे हैं, बफ भी आपको नहीं मिल रहे हैं। आपके ब्लू बफ की तरफ फाइट हो रही है, आप बफ गवा रहे हैं, रेड बफ के लिए फाइट हो रही है, आप बफ गवा रहे हैं। जो पॉइंट है, जो शक्तियां हैं, वो कहीं ना कहीं गवाते हुए नजर आ रहे हैं, तो उसका भी आपको जहन में लेके चलना पड़ेगा एक बार। चलिए फिर से यहाँ पे स्पीयर ऑफ अल्कापा इस्तेमाल किया जरूर गया था, स्कारलेट आगे जरूर चले थे। लैंटन की ताकत इस बार दिखाना चाहते हैं, उथल पुथल करना जरूर चाहते हैं, आगे जरूर गए थे। मैथिल्डा एचपी कम है, सही समय पे यहाँ पे अप्रोच दिया है। रीमी पीछे हट चुके हैं, एक्सबॉक्स भी उनके साथ पीछे हट चुके हैं, और उसी के साथ रिकॉल करके वापस जाएंगे। एक्सबॉक्स वॉरेक्स चलिए बिल्ड करते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। अपनी एचपी बढ़ाने के लिए वॉरेक्स उन्होंने अपनी आइटम में ऐड जरूर कर दिया है, बिल्ड में जरूर ऐड कर दिया है। ओके चलिए आप देख सकते हैं कि उनके पास सिर्फ वॉरेक्स अभी बन हुआ है, और आप देखें ब्लेड ऑफ हेपेटाइटिस जहां पे बनते हुए नजर आ रहे हैं क्लिंट की तरफ से, तो वो कहीं ना कहीं डैमेज की तरफ आगे बढ़ते हुए जरूर दिखेंगे। एंड वॉरेक्स सीसी ने भी बिल्ड जरूर कर लिया है। डिफेंस की बात करें तो खुफरा अभी भी आइटम्स आए नहीं है, तो जिस तरह से उनके बिल्ड बनते जाएंगे तो किस तरह से वो डिफेंसिव बिल्ड बनाते हैं वो देखेंगे जरूर। लेकिन उससे पहले लास्ट इंसेंडी का यूज किया जाएगा। छोटा सा किल के ऊपर खतरा जरूर है। 3 प्लेयर्स, जब 3 लेडी आपके ऊपर हमला करेंगे तो किस तरह से बचेंगे, इसका कोई उनके पास जवाब नहीं था, और देखते ही देखते वो भी बचते हुए नजर आए। क्या ये मिड का टावर जाएगा, क्या ये मिड का टावर लेने में कामयाब हो पाएंगे 9 बफेल्स, क्योंकि टावर आपके पास आएंगे तो भी आपका मनोबल बढ़ता हुआ जरूर नजर आएगा। मिड का टावर आपके पास आए ना आए, लेकिन आप दूसरी तरफ रूबी को देखें, रूबी तैयार थे, मौका मिला, मौके पे चौका लगाया एंड उड़ा दिया है उन्होंने टॉप लेन का टावर। एक्सपी लेन में टावर उनको मिला और तुरंत ही उन्होंने उड़ा दिया है। तीसरी बार, एक बार फिर लगातार, क्या बार बार हमको देखने को मिलेगा कि अंडरडॉग राइस आसानी के साथ टर्टल को सिक्योर करते हुए दिख जाएंगे क्या। लगातार हमने देखा है, आप गोल्ड डिफरेंस देखे, स्वर्ण मुद्रिकाओं का डिफरेंस देखे, तो अभी के लिए 3000 का फर्क देखने को मिल रहा है। 3000 का फर्क यानी कि आप एक आइटम जो है वो खरीद सकते हो, एक आप अपनी बिल्ड के अंदर बढ़ोतरी कर सकते हो, तो एक फायदा जरूर रहता है, लेकिन अभी के लिए उतना फायदा भी नहीं। लेकिन आगे देखेंगे कि किस तरह से वो गेम में परिवर्तन करते हैं। अभी भी 9 मशीन्स के प्लेयर्स को जो है काफी सारी उम्मीदें जरूर हैं, अभी भी वो बिलीव के ऊपर चलते हुए जरूर नजर आएंगे, क्योंकि अभी आप देखें तो टावर में उतना कुछ इजाफा है नहीं। आप देखें कि 7.5 मिनट का गेम हो चुका है, उसके बावजूद भी उतना आप देखें तो किल में 7 और 2 का अंक है, यानी कि एक कांटे की टक्कर है। क्योंकि एक कहा जाता है कि बाहुबली के अगेंस्ट बाहुबली का जब मैच होता है तो यार फिर मजा तो बिल्कुल आता है। आज भी बस ऐसा ही कुछ माहौल है। ये दोनों टीम बाहुबली हैं, ये गब्बर टीम है, तो इनके अगेंस्ट में जब मुकाबले होते हैं आमने सामने, तो देखते हैं कि किसकी लॉयल्टीज निकलने वाली है, कौन सी देवियां जो है वो अपने रुद्र अवतार के साथ आएगी, जो किसका प्रकोप ज्यादा रहने वाला है। अभी आप देखें तो नेको वो कमाल का खेल रहे हैं,
दूसरी तरफ आप देखें तो हिल यानी कि एक्सबॉक्स वो भी कमाल का खेल रहे हैं, उन्होंने भी 1-0-5 का स्कोर अपने नाम अर्जित किया है। एंड दूसरी साइड देखें तो सिर्फ मैथिल्डा ऐसा है जिन्होंने मृत्यु का सामना नहीं किया है 9 मफिन्स की टीम में से, बाकी सबको मृत्यु का सामना एक बार जरूर करना पड़ चुका है। ओके चलिए, मैजिक डिफेंस एंड फिजिकल डिफेंस दोनों को कम करने के लिए हमारे जो खूफरा है वो बिल्ड करते हुए जरूर दिख रहे हैं, और रूबी भी चलिए उनके साथ साथ वही बिल्ड के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। आप सीसी को देखें, वो भी कहीं ना कहीं उसी तरह के बिल्डअप के साथ जाना चाहते हैं। स्काई पियर्स यहाँ पे ब्रूडी के पास आ चुका है, लेकिन कितने स्टैक्स जमा कर पाएंगे वो भी निर्भर करता है। अगर उनको कील्स मिलते हैं यहाँ से छोटा सा कील, तो फिर वो धराशायी करने के लिए जाने जाते हैं। फिर जैसे ही आपका एचपी 30 एचपी से कम आता है तो फिर धड़ांग से एक शॉट में आपको मृत्यु दंड दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले देखिए रिमी ने एक किल जरूर निकाल लिया है, छोटा सा किल। चलिए उनको किल चाहिए था, किल निकाला है, क्या दूसरा किल मिल सकता है? लेकिन चलिए भाग्यशाली जी नहीं रहेंगे, उनको एक्सबॉक्स मरने के बाद मृत्यु दंड देते हुए नजर आएंगे। एक बार चलिए मिनी गेम की तरफ नजर डाले तो लॉर्ड का आगमन हो चुका है, क्या अंडरडॉग राइस लॉर्ड के लिए जाएंगे? देखते ही देखते गेम पलटता हुआ नजर आ रहा है। मिड के देखते ही देखते 2 टावर उड़ चुके हैं। पहला टावर लेने की कोशिश आपकी थी, लेकिन मिड का टावर आप ले नहीं पाए। पर आप देखें अंडरडॉग राइस वो आसानी के साथ मिड का टावर उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं, उनको मिल चुका है मिड का टावर। और अब बारी है लॉर्ड की, क्या लॉर्ड के लिए वो जाना चाहेंगे? 9.5 मिनट का समय हो चुका है। अब देखते हैं किस तरह से वो लॉर्ड के इर्द गिर्द पधारते हुए नजर आएंगे, किस तरह से कौन सी टीम लॉर्ड को अपने नाम करने में कामयाब होगी। क्या वो होगी 9 मफिन्स, क्या वो होगी अंडरडॉग राइस? वो पता चलेगा कुछ समय के अंदर। देखते हैं कि कौन सी टीम लॉर्ड को, शिव शंभू को, देवता को प्रसन्न करते हुए नजर आएंगे। लेकिन उससे पहले क्या मृत्यु मिलेगी? जी बिल्कुल, स्कारलेट गए फंसे हाइपर जा चुके हैं, आपको पता है 20 सेकंड का समय है और ये समय पर्याप्त है आपको लॉर्ड को प्रसन्न करने के लिए। अंडरडॉग राइस एक बार फिर से चमकते हुए, एक बार फिर से दहाड़ते हुए, बेस्ट ऑफ 5 का मुकाबला जरूर है, पहला अंक उनको चाहिए और पहले अंक की तरफ वो अपना विजय रथ को आगे लेके जाते दिख रहे हैं, उनको अपने विजय का आगाज करते हुए दिख रहे हैं और ये आगाज के साथ अंत करेंगे तो 1 पॉइंट उनके पास जरूर आएगा। दूसरी साइड आप देखें सीसी जो है वो कोशिश कर रहे हैं प्लीज पुट की, लेकिन कितनी देर तक वो काम आ पाएगा? क्योंकि आपको देखना है कि जब लॉर्ड आएगा तो लॉर्ड को डिफेंस भी तो आपको करना है, तो क्या डिफेंस आप कर पाएंगे? ये भी कई सारे सवाल निकल के आते हैं। सीसी काफी अच्छी कोशिश है, वो आगे जरूर जा रहे हैं बहुत तेजी के साथ। 2 टावर देखते ही देखते उनको मिल जाएंगे, रूबी ने उनको वापस जरूर है, ऊपर की तरफ वो जा रहे हैं, वो रोकने की पूरी कोशिश चलने वाली है और कहीं ना कहीं चलिए ये एक कमाल का मूव उनकी तरफ से भी निकल के जरूर आ रहा है। मैथिल्डा बचने में कामयाब होंगे जरूर। चलिए यहाँ पे गोल गोल रानी करते हुए, घूमते हुए बचने में कामयाब भी जरूर हो जाएंगे और सीसी को यहाँ पे उछल कूद अच्छी कोशिश चल रही थी, लेकिन मैथिल्डा उनके लिए गए थे, थोड़ा सा सपोर्ट मिला, लेकिन सीसी के साथ साथ मैथिल्डा भी अपनी जान जरूर गवाएंगे। लेकिन देखते देखते अच्छे समाचार ये हैं कि आपने अपने हीरोज जरूर गवाए हैं, लेकिन उसके सामने लॉर्ड जो है डिफेंस हो चुका है। एंड अच्छे समाचार कुछ ये भी निकल के आते हैं 9 मफिन्स के लिए कि उनको टॉप लेन के 2 टावर मिल चुके हैं। कहीं ना कहीं ये भी एक फायदा जरूर दिलाता है कि आपके पास टावर होते हैं तो आपका मनोबल थोड़ा अपर जरूर रहता है एंड टावर से आप गेम जीत सकते हो। गलती और मैच पलटी वाली सिचुएशन आती है कि अगर यहाँ से कुछ गलती कर बैठते हैं, अभी आप देखें ऑलमोस्ट सभी के पास 3-3 आइटमाइजेशन बनते हुए दिख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कोर बिल्ड अब यहाँ पे सभी के पास आती हुई दिख रही है। तो अब कहीं ना कहीं ये भी रहेगा कि अब बारी होने वाली असली पावर की, अब बारी होने वाली है स्किल की। अब देखते हैं कि कौन किसको धराशायी करते हुए दिखेंगे। थोड़े ही समय में पता चल जाएगा, जब अगला लॉर्ड आएगा 70 सेकंड्स के बाद, तब वापस से ये फाइट होती हुई दिखेगी, तब पता चलेगा कि क्या 9 मफिन्स में वो क्षमता है कमबैक करने की, क्या 9 मफिन्स इस लॉर्ड के साथ ये गेम में परिवर्तन कर सकते हैं। देखते हैं थोड़ी समय में। चलिए तब तक आप देखें मिनिट्स वेव को क्लियर किया जा रहा है। ये भी एक जरूरी रहता है ऐसे गेम के अंदर, जब आपको पता है कि थोड़ा सा फाइट थमेगा तो जितना हो सकता है मिनिट्स को आप अपने टावर से दूर रखें, टावर तक आने ना दे। जैसे हो सकता है जितना जल्दी लाइन क्लियर करते रहें, स्प्लिट पुश जैसे कि 9 मफिन्स ने किया कि पूरी टीम तैयार है लॉर्ड को डिफेंस करने के लिए। दूसरी साइड में वहां पे 9 मफिन्स ने जो है यानी कि उनकी टीम से सीसी, हालांकि 5 बार जरूर मरे हैं, लेकिन एक अच्छा काम उन्होंने वो किया है कि टॉप लेन के अचानक से 2 टावर दिला दिया। और वहां पे आप देखें कितनी कमाल के साथ मैथिल्डा जो है वो गए, बुश चेक किया, विजन दिया, तुरंत ही वापस आ चुके हैं।
और उसी के साथ अब देखना ये रहेगा कि लॉर्ड का आगमन होने वाला है 11 सेकंड में। तो क्या वो लॉर्ड के साथ ये मैच में परिवर्तन होगा, क्या फिर ये लॉर्ड इनहैंस्ड होके आएंगे और ये लॉर्ड अंडरडॉग राइस को मिलते हैं तो क्या अंडरडॉग राइस अंत करेंगे? देखते ही देखते मैथिल्डा आगे जरूर गए थे लेकिन वो मारे जा चुके हैं। लॉर्ड का आगमन हो चुका है, देवता का आगमन हो चुका है, उनकी आराधना करने के लिए, उनकी अर्चना करने के लिए तैयार हो चुके हैं अंडरडॉग राइस। वो चलिए लॉर्ड को आसानी के साथ ले भी लेंगे, आसानी के साथ प्रसन्न भी कर लेंगे। लॉर्ड उनकी टीम में आ चुके हैं। ये गेम का अंत है क्या? ये गेम का फिनिशर है क्योंकि उठक पटक के फेंका जाएगा यहाँ पे सीसी को भी। सीसी के पास चलिए ताकत थी भागने की, स्प्रिंट उन्होंने जरूर लगाई है, दौड़ उन्होंने जरूर लगाई है, दौड़ के साथ भाग के जरूर गए हैं। और क्या ये अंत है गेम का? क्या ये खत्म है गेम? यहाँ पे लॉर्ड आप देखे मार्च करते हुए नजर आ रहे हैं, वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, वो दहाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मिनियन वेव मिड की तरफ से आगे बढ़ रहे हैं। बॉटम लेन में देखें तो एक्सबॉक्स कोशिश अच्छी कर रहे हैं, वो चाहते हैं, अंडरडॉग राइस को पता है कि यहाँ पे उनके पास मौका है, इस मौके को जाया ना करें और गेम को अंततः की तरफ आगे लेके जाएं। क्या तैयार है उनको जवाब देने के लिए नाइन मफिन्स? क्या उनका कोशिश, क्या उनका प्रयास पर्याप्त होगा एनहेंस लॉर्ड को रोकने के लिए? क्या उनका कोशिश, क्या उनका प्रयास पर्याप्त होगा एक रुद्र अवतार वाले लॉर्ड को रोकने के लिए? जाएंगे इन्वेटर टावर को एक फटके के साथ उड़ाने की ताकत रखते हैं, उड़ाया भी जाएगा। आगे मार्च कर रहे हैं, इनको पता है कि किल कितनी आवश्यकता है, डिफेंस के साथ खेल रहे हैं। लॉर्ड को रोका जरूर जाएगा, आपके पास क्रिस्टल की ताकत है, क्रिस्टल के अंदर जरूर बने रहेंगे। आगे जाएंगे तो मुसीबत आएगी लेकिन लैंटर्न की ताकत खुल चुकी है, नेको तैयार है, उन्होंने अपना अल्टीमेट यूज जरूर कर दिया है। बट दूसरी तरफ नाइन मफिन भी दिमाग के साथ खेल रहे हैं, उनको पता है कि यहाँ पे अगर किल गवा दिया तो मुसीबत आएगी, किल गवाना नहीं चाहते हैं, अपने आप के सभी प्लेयर्स को सुरक्षित रखना चाहते हैं। हालांकि सारे इन्वेटर टावर उनके उड़ चुके हैं, क्रिस्टल अकेला सरवाइव कर रहा है, उनका गढ़ अभी एक थोड़ा सा एक एचपी पे रह गया, मेरे को लगा उड़ जाएगा, तो एक कहीं ना कहीं उनका जो क्रिस्टल है, उनका जो गढ़ है, उनका जो किला है वो अब सरवाइव करता हुआ नजर आ रहा है। अगर वो गया गेम गया। कहीं ना कहीं हमारे साथी मित्र जो है वो हमारे साथ कुछ समय पहले जुड़ चुके हैं, तो उनसे भी पूछेंगे कि ये जो कमाल का मैच चल रहा है, हालांकि थोड़ा सा लेट ज्वाइन किए हैं लेकिन अब का जो रिजल्ट है वो देख के वो समझ ही गए होंगे कि किस तरह से मैच चल रहा है। तो नाइन मफिन जो है थोड़ा सा काफी ज्यादा मुसीबत में आ चुके हैं। अंडरडॉग राइस क्या कमाल का खेल रहे हैं, उनके बारे में वो कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच यार ऐसे मुझे मौका देने के लिए। इसी के साथ पकड़ ले गया है नाइन मफिन्स, यहाँ पर अपना जलवा दिखाने की पूरी कोशिश करते हुए, बस अंडरडॉग्स यहाँ पर दोबारा किल्स पे किल सिक्योर करते हुए। इसी के साथ क्लिंट की बात करना चाहेंगे, 815 का स्कोर, अंदर घुसना चाहेंगे, किल सिक्योर करना चाहेंगे। एक्सबॉक्स अंदर अल्टीमेट यूज किया, किल लेने में कामयाबी मिलती हुई, बट मुझे लगता है यहाँ पर पेस को डिफेंड करने की पूरी कोशिश की जा रही है, नहीं हो पाएगा और यहाँ इनका घर का टिकट कट चुका है। जैसे मुझे अभी पता चला थोड़ी देर पहले, बेस्ट ऑफ 5 का मुकाबला है भाई लोग। तो यहाँ पर पहला मैच बड़े प्यार से हमारे अंडरडॉग्स ने जीत लिया है एंड अंडरडॉग काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं यार। परसों अंडरडॉग्स का आपने मैच देखा था साथ में एसएम, एंड उसमें भी अंडरडॉग्स ने वन साइड परफॉर्मेंस दी थी, आज के मैचेस की तरह ही वो भी मैच था। तो आई एम रियली हैप्पी एंड कि अंडरडॉग्स यहाँ पर अच्छा करे, बट मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा है मफिन्स के लिए। आप सेमीफाइनल्स में पहुंच चुके हैं और सेमीफाइनल्स में पहुंच चुके और वहां पर ऐसे पिटना थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, आपकी स्ट्रैटेजीज में आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, आपको अपने चीजों को बदलना पड़ेगा। तो चलते हैं एसएम से, उन्होंने इस पूरे मैच को अध्ययन किया, तो एसएम से जानेंगे कौन सा हीरो आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा पूरे गेम में। एसएम देखिए पूरे गेम में कहीं ना कहीं दोनों टीम ने काफी प्रभावित तो वैसे किया है, लेकिन थोड़ा सा नाइन मफिन्स की तरफ से जो भी उनकी मिस्टेक्स हुई हैं, हो सकता है कि एक स्ट्रैटेजी हो, बेस्ट ऑफ 9 का मुकाबला है तो हो सकता है वो अपने प्रतिद्वंदी का जो है पहले से ही कुछ ऐसे मूव्स क्या लेके आते हैं वो जानना चाहते हो, क्योंकि आप देखें तो उनकी टीम में ऐसे नामी लेडीज निकल के आते हैं जो अच्छे से खेलना जानते हैं। लेकिन आप दूसरी साइड देखें तो किस तरह से कमाल का गेम प्ले दिखा रहे थे, आप नेको को देखे किस तरह से खेल रहे थे, आप खूफरा देखे किस तरह से वो आ जा रहे थे, आप रूबी को देखे किस तरह से वो सपोर्ट कर रहे थे, अब क्लिंट को देखे किस तरह से वो मारते हुए दिख रहे थे, एक्सबॉक्स जो है असमी समय पे अपना अल्टीमेट यूज करते हुए, लास्ट इंस्टेंट यूज करते हुए दिख रहे थे। कहीं ना कहीं एक कोऑर्डिनेशन था। क्लिंट जो है अकेले रह रहे थे, पूरी टीम को आगे जाने के लिए फोर्स कर रहे थे, 4 लोग साथ में रहते थे और उसी तरह से कहीं ना कहीं अपना गेम प्ले बनाते हुए नजर आ रहे थे। एक रणनीतियां उनके पास काफी सारी थी, तो रणनीतियां ही मे भी हो सकता है नाइन मफिन्स उनसे निकालना चाहते हो और अगले गेम में शायद उनको कट किया जाए। काफी कुछ हो सकता है, देखेंगे। एक अंक लेके जा चुके हैं यहाँ पे अंडरडॉग राइस, उनके लिए उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, उनके लिए उनको धन्यवाद। अब देखते हैं कि
आगे किस तरह से खेलेंगे, इन दूसरे मैच में क्या होगा, अब बस उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि एक छोटा सा ब्रेक लेके वापस आते हैं। अभी 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 ब्रेक नहीं मिलेगा, अभी वो कहते हैं इंतजार करो। I'm the boss. For her, I would sail across the cosmic sea to the end of time.
For her, I would sail across the cosmic sea to the end of time. I'm the boss. For her, I would sail across the cosmic sea to the end of time. वेलकम बैक देवी और सज्जनों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मोबाइल लेजेंड्स 5v5 इंडिया शोडाउन सीजन 1 जो कि है स्पॉन्सर्ड बाय मोबाइल लेजेंड्स 5v5 एंड ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन गेमिंग कॉर्प्स। तो चलिए, पहला मैच बेस्ट ऑफ 5 का जो है खत्म हो चुका है। सेमीफिनाले में आज हम आ चुके हैं। 9 मफिन्स उनके सामने खेल रहे हैं। अंडरडॉग राइस पहला अंक लेके जा चुके हैं। अंडरडॉग राइस थोड़े ही समय में हम देखेंगे कि रिजल्ट क्या निकल के आया है, कौन सा प्लेयर लेके गया है एमवीपी, किसने कैसा खेला है, किसको मिली है चॉकलेट, किसको मिली है सिल्वर प्लेट और किसको मिली है गोल्डन प्लेट, वो थोड़ी समय में पता चलेगा। लेकिन तब तक आप जो है आपके ओपिनियन कमेंट के अंदर बताते रहे। हालांकि हम पूछेंगे आरवी हमारे दोस्त से भी, हालांकि वो थोड़ा सा मैच देख पाए, उस उम्मीद करते हैं कि उन्होंने मैच शायद हमसे लेट जुड़े लेकिन देखा हो। आरवी देखिए, रिजल्ट तो आपके सामने अब आता हुआ दिख ही रहा है।
थोड़ा सा रिजल्ट के ऊपर ना आपकी समरी हमको थोड़ी सी बताइए। देखिए यार, पहले तो आपने वो राइम बहुत अच्छी बनाई थी, बट वहाँ पे सिल्वर की जगह आपको केला बोलते हैं ना। आपने बोला ना, देखेंगे किसने कैसा खेला, किसको मिला चॉकलेट और किसको मिला केला। हाँ तो यार तो ओवरऑल देखिए यार, तो मैच का जो सिनारियो था, 9 मफिन्स को अर्ली गेम से लेके मिड तक बहुत बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, जिसकी वजह से वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे थे। एंड अंडरडॉग्स ने तो क्या छक्के छुड़ाए भाई। इनके टीम की जोक्सिन की बात करूँ, जोक्सिन 90% ऑफ द टाइम्स क्या होता है, गेम से बैन होती है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे नहीं पता कि 9 मफिन्स ने जोक्सिन ओपन क्यों रखा, ओपोनेंट को मौका दिया ही क्यों, क्योंकि मुझे लगता है कि जोक्सिन सबसे मेन रीजन था पूरे गेम में दिक्कत करने का। अगर जोक्सिन को बैन कर दे तो शायद चीजें थोड़ी बहुत कंट्रोल कर ली जाती। उसके ऊपर से भाई कुफरा ने 15 किल लिए। अच्छा, असिस्ट दिखा रहा है इधर, सॉरी, किल उधर दिखा रहा है, 2-1-15 है। तो कुफरा ने यहाँ पर काफी अच्छी परफॉर्मेंस की है। हाईएस्ट किल की बात करें, साइड यहाँ पर मार्क्समैन ने काफी अच्छा परफॉर्म किया। तो अगले मैच में इनको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि मार्क्समैन और मेज इस पे थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए, इनको थोड़ा सा पकड़ा जाए, इनको टारगेट करेंगे तो शायद मैच को जीता जा सकता है। कुछ ही देर में हमारा नेक्स्ट मैच स्टार्ट हो जाएगा। हाँ जी, बताइए बिल्कुल, बताइए। थोड़े ही समय में हमारा दूसरा मैच चले और आपने आगाज़ किया और दूसरे मैच की तरफ हम बढ़ते हुए नज़र आएँगे ज़रूर। तो देखिए, पहले मैच में जैसे आपने बोला कि जुसिन ओपन रखा गया तो उन्होंने परेशानी ज़रूर की, लेकिन आप दूसरी तरफ देखें क्लिंट, तो उन्होंने भी यार अपने डबल शॉट की पावर से जो ताकतें दी हैं, हालाँकि 9 मफिन्स की तरफ से जो गोल लेन में अपना परचम लहराने के लिए गए थे, वो थे छोटा शकील एंड लोगों को उनसे काफ़ी सारी उम्मीद थी। उनके जो फैन्स हैं, वो काफ़ी सारे हमारे साथ जुड़े हुए थे चैट के अंदर। दर्शक जो है, हाँ, काफ़ी सारे हमारे साथ जुड़े हुए थे, तो सबको लग रहा था कि वो जो है गेम चेंजर बन के आएँगे, लोगों को उनके ऊपर काफ़ी ट्रस्ट था। लेकिन वो कहता है ना कि भाई कुछ विधाता को कुछ शायद और मंज़ूर था, नियति को शायद कुछ और मंज़ूर था। तो पहले मैच में ना सही, दूसरे मैच में सही। अब देखेंगे कि किस तरह से वो खेलते हुए नज़र आएँगे। देखिए, सबसे पहला बैन ये कहीं न कहीं ये लेके चलते हैं, फीवीएस का बैन देखने को मिलता है, चिप का बैन देखने को मिलता है। लेकिन क्या इस मैच में आरवी क्लिंट एंड मैथिल्डा या फिर जोसिन, ये क्या बैन देखने को मिलेंगे, या तो फिर इनको ओपन रख के एक बार फिर से दांव-पेच खेला जाएगा? भाई अगर देखो, बेस्ट ऑफ 5 में आप ऑलरेडी एक मैच हार चुके हो और दोबारा अगर आप दांव पेच खेलने जाते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो, तो आपका पत्ता कटने के चांसेस डबल हो जाएंगे। फिर हमारे जो अंडरडॉग्स रहेंगे उनको एक और मैच जीतना रहेगा। इसीलिए मुझे नहीं लगता यहाँ पर रिस्क लेंगे। डेफिनेटली यहाँ पर हमारी जो जोक्सिन है उसको बैन किया जाएगा और मैथिल्डा तो बैन होगी ही होगी, क्योंकि लास्ट मैच में, लास्ट टाइम हमने देखा था, परसों का जो मैच हुआ था, वहाँ पर अंडरडॉग्स ने मैथिल्डा से काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया था। तो डेफिनेटली यहाँ पर मैथिल्डा बैन होगी। इसी के साथ मुझे लगता है कि कुफरा और क्लिंट को भी बैन कर सकते हैं। लास्ट मैच में क्लिंट ने जो तबाही मचाई थी ना अपनी बंदूक की गोलियों से, उसको यहाँ कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो सबसे अच्छी चीज़ है, अगर आप किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते ना, तो उसको बैन कर दो। सबसे ऑप्शन आपके पास यही है, अगर ओपोनेंट को मौका दोगे तो पिटोगे। इसी के साथ बैन्स यहाँ पर फिर से हमें कॉमन बैन्स देखने को मिले। फीवियस आ चुका है, हमारी जो ब्लड क्वीन है कार्मिला आ चुकी है, ओपोनेंट से हमारे चुलबुले लड़के जॉय बैन हो चुके हैं। नेक्स्ट जो अपकमिंग बैन होगा डेफिनेटली इसमें से जोक्सिन होने वाली है। अभी 3 बैन पेंडिंग है, 2 बैन हमारे 9 मफिन के पेंडिंग है और 1 बैन हमारा अंडरडॉग राइज का पेंडिंग है। तो अंडरडॉग की तरफ से डेफिनेटली हमें जोक्सिन मिलेगी मिलेगी, ये मेरी एक्सपेक्टेशन। अगर ये नहीं करते भाई तो जय सीताराम करना पड़ेगा मुझे लगता है इस मैच में भी इनको। बाकी लास्ट मैच में इनका जो जंगलर था वो भी उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाया था। एक्सबॉक ने काफ़ी अच्छा खेला था एज एक्सपी लेनर, उन्होंने अच्छा खासा डैमेज दिया, चीज़ों को हैंडल की, रोटेशन काफ़ी अच्छी दे रहे थे, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। 9 मफिन ने यहाँ पर फाइनली बैन कर दिया है। उन्होंने कहा भाई हम रिस्क नहीं लेंगे, जोक्सिन की तरफ बैन की जा सके। और जो थर्ड बैन आएगा मुझे लगता है थर्ड बैन इनकी तरफ से आएगा। इक्शिया, मुझे नहीं लगता इक्शिया को बैन करना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इक्शिया जितना ज़्यादा कुछ कर नहीं पाती है, और क्लिंट अगर ओपन रह जाता है, दोबारा अंडरडॉग को क्लिंट मिल जाता है, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो मुझे लगता है 9 मफिन्स यहाँ पर क्लिंट को ओपन छोड़ रहे हैं भाई, मुझे लगता है तो बैन करेंगे तो ये क्लिंट वापस मिल सकता है। अंडरडॉग्स के पास चांस है, शायद वो यहाँ पर ले लेंगे, शायद नहीं लेंगे। क्या लगता है इससे, वो दोबारा जाएंगे क्लिंट के साथ या फिर खुला छोड़ देंगे? देखिए, सबसे पहले क्लिंट के ऊपर आए उससे पहले आप देखिए मैथिल्डा को बैन कर दिया गया है। हमने देखा था कि जैसे हमने फर्स्ट डे 9 अंडरडॉग राइस का जो गेम प्ले देखा था, तो अंडरडॉग राइस ने किस तरह से प्रभावित किया था कहीं न कहीं हमें मैथिल्डा के साथ। तो उनको पता है कि मैथिल्डा उनको देना काफ़ी एक रिस्की मूव हो सकता है। हमने ज़्यादातर नोटिस किया है कि कार्मेला एंड सिसिलियन या तो ये बैन किए जाते हैं, तो फिर सबसे पहले पिक में यहाँ पे आ जाता है। तो हमको ये एक नया थोड़ी-सी स्ट्रैटेजीज़ भी यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। तो ये भी काफ़ी मज़ेदार रहता ज़रूर है कि आप देखें, हम ज़्यादातर देखते हैं जो लेडीज़ हैं या फिर जो देवियाँ हैं, वो ज़्यादातर मैजिकल हीरोज़ के ऊपर अपना जो वर्चस्व है, वो ज़्यादा लहराती हुई दिखती है मोस्टली। आप देखिए, अगर रेशियो निकालें तो 80% के आसपास आप कह सकते हैं कि ऐसे होते हैं प्लेयर्स, जो ज़्यादातर जो है मैजिकल हीरोज़ खेलते हुए दिखते हैं। तो कहीं न कहीं ये हीरोज़ के ऊपर जितना हम जानते हैं, उनसे भी कई ज़्यादा जो है उनकी एक्सपर्टीज़ होती है, और इनके मतलब अलग जो स्ट्रैटेजीज़ होती है, उनके दिमाग में काफ़ी न कहीं होती ज़रूर है। तो ऐसे हीरो ज़्यादातर बैन भी होते हुए दिखते हैं। इनके
मैचेस के अंदर। तो आप देखें सबसे पहले इनके पास जो मौका था तो उठा लिया है ना सिसुलियन को, और सिसुलियन को लॉक करने के लिए वहां पे दूसरी साइड देखें तो लॉलिटा जरूर आगमन करते हुए दिख रहे हैं शील्ड के साथ। एक बार फिर से वो ब्रूडी के ऊपर जो है अपना दाव पेच लगाना चाहते हैं। और तो फिर वही सवाल निकल के आता है कि अब ब्रूडी के सामने फिर से वो क्लिंट के साथ जाएंगे। जी हाँ, क्लिंट का नेम लिया और चलिए ब्रूडी के सामने वापस से क्लिंट देखने को मिलने वाले हैं। तो एक बार फिर से चलिए इन दोनों की राइवलरी जरूर होगी। पहला जो मुकाबला है वो डबल शॉट के साथ लेते हुए जरूर गए थे क्लिंट। अब देखते हैं कि क्या ब्रोडी वो अपने शॉट्स के साथ, वो अपनी बिजलियों के साथ कुछ अलग करते हुए दिखेंगे, या तो फिर उनको वापस से वही जो लास्ट गेम में हुआ था उसी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन आप दूसरी साइड देखें तो खलीद का आगमन भी हुआ है। एक्सपी लेन में ये काफी परेशान जरूर करता है। आपने पहले देखा कि आपके पास रूबी थी तो वहां से भी आप थोड़ी सी परेशानियां क्रिएट करते हुए दिख रहे थे। आप दूसरी साइड देखें अभी तो आपके पास अब यहाँ पे आ चुका है खलीद। खलीद भी ऐसा हीरो है जो अपने आप को रीगेन करता रहता है, अपने आप को एचपी देता रहता है। और जो उनकी रेगिस्तान की ताकत है वो रेगिस्तान के अंदर से खून जो है निकालता रहता है एंड अपने में वो समावेश करता रहता है। तो वो काफी परेशान जरूर करेगा। एंड इस बार एक्सबॉक्स जो है 9 मफिन्स के पास जरूर देखने को मिलने वाला है। तो वो किस तरह से उनके इर्द गिर्द खेलेंगे वो भी देखना रहेगा। एंड खूफरा चलिए हार भी इस बार खूफरा का जो है बैन, जैसे आप बोल रहे थे कि शायद आ सकता है, तो आ चुका है। उनके बारे में कुछ कहेंगे? डेफिनेटली यार, कोफरा ने मैंने देखा कि उस भाई बंदे के 15 असिस्ट थे जो बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट कर रहा था। बट इस बार 9 मफिन्स की टीम मुझे थोड़ी सी अग्रेसिव वाली दिखाई दे रही है। उनके पास एक्सपॉक भी आ चुका है, लोलिटा भी आ चुके हैं। लोलिटा बड़े प्यार से क्लिंट के बुलेट्स को हैंडल कर सकती है। बट चमगादड़ से कैसे बचोगे भाई? जब उसने अपने शिकंजे में पकड़ा तो दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर मुझे लगता है 9 मफिन्स को किसी ऐसे हीरो के साथ जाना पड़ेगा जिससे वो चमगादड़ को पकड़ सके, उसको कंट्रोल करने की क्षमता रखता हो। ऐसा हीरो उनको चाहिए इनकी टीम में, वरना इनकी टीम से भी इन्होंने मेज पिक किया नहीं, ऑप्शन में है। तो मेज यहाँ पर एक शायद मुझे लगता है काजिता दीदी आ सकती है, काजिता दीदी देखने को मिल सकती हैं। काजिता बैक लेन पर जाके चार्ज करने की क्षमता रखती हैं। इसी के अलावा हमारे पास लूनक्स यहाँ एक अच्छा खासा ऑप्शन साबित हो सकती है मेरे अकॉर्डिंग। भाई मुझे नहीं पता कि आप लोग क्या सोचते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग लूनक्स एक अच्छा खासा ऑप्शन साबित हो सकती है। सबसे बड़ा रीजन उसके लिए खलीद को काउंटर कर सकती है। लूनक्स का जो बॉस डैमेज है काफी ज्यादा इंसेन रहता है और खलीद को काउंटर किया जा सकता है उसकी सहायता। इसी के साथ हमारे साथ चिप बैन हो चुके हैं और हमारे जो बॉम्ब गर्ल लिलिया थी वो भी बैन हो चुके हैं। दोनों टीम्स के फर्स्ट 3 हीरोज पिक हो चुके हैं, सेकंड पिक फेक स्टार्ट हो चुका है। एंड देखते हैं अब कौन से हीरोज के साथ जाएंगे। अंडरडॉग्स की बात करते हैं, इन्होंने अपना मेज पिक कर लिया, इन्होंने अपना मार्क्समैन पिक कर लिया और शायद यहां पर खलीद एज अ रोमर जा सकते हैं और एक्सपी लेनर भी जा सकते हैं। ऑप्शन दोनों अवेलेबल है। क्या लगता है, खलीद रोमर जाएंगे, एक्सपी लेन जाएंगे? कहीं ना कहीं देखिए मेरे हिसाब से खलीद जो है वो एक्सपी लेन में जाते हुए नजर आने वाले हैं अंडरडॉग राइस की तरफ से। क्योंकि ज्यादातर अभी आप देखें करंट मेटा के अंदर खलीद एक्सपी लेन के अंदर अपना ज्यादा वर्चस्व लहरा रहे हैं। तो उसी वजह से कहीं ना कहीं लग रहा है कि खलीद जो एक्सपी लेन में जा सकते हैं। और उनके सामने चलिए सीसी का आगमन हुआ है तो खलीद के सामने सीसी एक्सपी लेन में क्या यार भी हमको ये लड़ते हुए दिखेंगे दोनों? डेफिनेटली यार, खलीद और सीसी का जो फाइट होगी ना काफी मजेदार होगी। एक तरफ योयो गर्ल है, दूसरी तरफ हमारे पास रेत का सौदागर है। समझ रहे हो, रेत फेंक के मारेगा, योयो फेंक के मारेगी। मुझे लगता है योयो में जो शक्तियां थोड़ी सी ज्यादा हैं, खलीद के पास रीजन पावर बहुत ज्यादा है बट खलीद की मोबिलिटी उतनी ज्यादा नहीं है जितनी हमारी सीसी की है। तो सीसी इधर उधर उछल कूद करके खलीद को डैमेज देने की क्षमता रखती है और स्केप की भी एबिलिटीज काफी अच्छी रहती है, बड़े प्यार से निकल सकती है, मोबिलिटी बहुत अच्छी है। तो सीसी एक अच्छी चॉइस है बट कितनी हद तक रहती है, टीम का सपोर्ट कितना मिलता है, वो देखने वाली बात रहेगी। इसी के साथ हमारे गदाधारी भीम आ चुके हैं और हमारे जूलियन भैया भी मैच में शामिल हो चुके हैं। तो जूलियन यहाँ पर उनकी जो पूरी कोशिश रहेगी वो रहेगी यहाँ पर मार्क्समैन को टारगेट करने की। अगर वो मार्क्समैन को प्रॉपरली टारगेट कर ले जाते हैं तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। उसी के साथ जो गदाधारी भीम है, देखते हो अपना फ्लिकर अल्टीमेट कितना अच्छा उपयोग कर पाते हैं। अगर उनकी फ्लिकर अल्टीमेट टाइम से नहीं लगा तो चीजें खराब हो जाएंगी। लास्ट पिक बची है 9 मफिन की तरफ से एसएम मार्क्समैन। मेज पिक बची है, कौन सी मेज के साथ जाना चाहेंगे? मैजिक डैमेज अभी तक नहीं है इनकी टीम में। देखिए जैसे आप बोल रहे थे कडिता, तो देखते हैं कि क्या वो कडिता के साथ जाना चाहते हैं। आप देखें तो दूसरे ऑप्शन में भी जैसे हमने देखा है कि कई बार जो लेडीज हैं, जो देवियां हैं, वो खेलते हुए दिखते हैं। ओके, लूनक्स का आपने बात किया था और लूनक्स चलिए आ रहा है। मैं वैक्साना आज लूनक्स की बात करने वाला था कि ये मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं ऐसे हो सकते हैं। और तब तक चलिए लूनक्स, आपने जैसे बताया कि कदिता एंड लूनक्स आपके हिसाब से अच्छे ऑप्शन निकल के आ जाते हैं। तो चलिए कदिता ना सही, यहाँ पे लूनक्स आए। लूनक्स चलिए एक ऐसे हीरो हैं, इनके पास ऐसी जहाँ पे जादुई शक्तियां हैं कि वो टैंक को मेल्ट डाउन करने की ताकत रखते हैं। जब उनके सामने टैंकी हीरोज आते हैं तो कहीं ना कहीं कैरी एक अच्छा ऑप्शन निकल के आता है टैंकी हीरोज को मारने के लिए। एंड लुनक्स भी उनके साथ एक अच्छा ऑप्शन निकल के आ जाता है टैंकी हीरोज को जब आपको धराशायी करना हो। तो कहीं ना कहीं टीग्रियल एंड खलीद जैसे आपको पता है कि यार उनकी जो टैंकी पावर है वो कितनी ज्यादा रहने वाली है। और फाइनली हमको एक्सपी लेन में
जाने वाले हैं खलीद, वो तो पता चल चुका है। ज्यादा समय विलुप्त नहीं करेंगे, दोनों टीम खेती बाड़ी की शुरुआत करती हुई दिखेगी। चलेंगे हमारे दोस्त आरवी के पास, उनके जो चहीते सवाल सोचे हैं उनके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी जरूर लेंगे। धन्यवाद ऐसा, हम पहुंच चुके हैं यार हमने लैंड ऑफ डॉन में। दोनों टीम्स ने अपना जंगल में मंगल स्टार्ट कर दिया। इसी के साथ जो मेरा फेवरेट चहीता सवाल रहता है, कौन लेके जाएगा फर्स्ट ब्लड? क्या हमारे वो 9 मफिन्स होंगी या फिर हमारे दूसरे अंडरडॉग्स होंगे? मुझे नहीं पता लास्ट मैच में कौन लेकर गया था, उसके लिए मैं एसएम के पास चलना चाहूंगा। और टॉप लेन में ऑलरेडी फाइट स्टार्ट हो चुकी है। हमारे एसजेड ने अच्छा खासा डैमेज दिया सीसी के ऊपर, बट काउंटर अटैक में उन्होंने भी अच्छी खासी एचपी लो डाउन कर दी है। खलीद के पास सबसे बड़ा एडवांटेज यही रहता है कि भाई वो एचपी रीजन कर सकता है, बट सीसी के पास ऐसा कुछ नहीं है। तो सीसी को थोड़ा सा संभल के खेलना पड़ेगा, थोड़े से अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। चलते हैं एसएम से, पूछते हैं कौन लेके जाएगा फर्स्ट ब्लड इस मैच में। चलिए, जैसे लास्ट गेम की बात करें तो लास्ट गेम में अच्छी खासी कोशिश यहाँ पे की थी स्कारलेट ने। उनके पास हाइपर में उस समय में अल्फा जरूर था, लेकिन नेको ने कुछ रणनीतियां चेंज कर दी थी और वो लेके गए थे। लेकिन इस बार उम्मीद जरूर लग रही है कि एक्सपी लेन में हो सकता है ये दाव पेच। एंड चलिए, योयो गर्ल, जैसे आप बता रहे थे कि उनके योयो में वो क्षमता है और खलीद को मारने की ताकत रखते हैं। फर्स्ट ब्लड, पहला खून, और लेके जरूर गए हैं 9 मफिन। तो जिस चीज की जरूरत थी वो मिली जरूर है, लेकिन उन्होंने आगाज किया है इसमें अंक निकालने का, लेकिन उनको अंक करना पड़ेगा स्कोर बराबरी करने के लिए। आज बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो यहाँ पर आगाज हो चुका है 9 मफिन्स का। इस बार मुझे लगता है कि अपनी गर्जना से डरा के रख देंगे अंडरडॉग्स को, बट अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी से शुरुआत है तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे, थोड़ा सा और गेम को ऑब्जर्व किया जाएगा एंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग चीजें और देखी जाएंगी कि कौन सी टीम यहाँ पर अपना जो परचम है कामयाब रख पाते। इसी के साथ हम मिनी कैमरे में देख सकते हैं कि हमारे जो कछुआ महाराज थे वो अवतरित हो चुके हैं और उनके इर्द गिर्द यहाँ पर घेराबंदी भी की जाने लगी है। टॉप लेन पे फिर से एक अच्छी खासी फाइट देखने को मिल सकती है। यहाँ पर जूलियन आए थे, पोक करना चाहते थे, मौके की तलाश में थे। टिग्रेल भी आ चुके हैं, नेको भी आ चुके हैं। 4-2 की सिचुएशन बनती हुई यहाँ पर जूलियन अंदर के स्किल्स का यूज किया, पकड़ना चाहते थे बट नहीं पकड़ पाएंगे, बड़े प्यार से निकल चुके हैं। और यूनिकॉर्न ने यहाँ पर लूनक्स लिया, मैंने ध्यान नहीं दिया कि भाई इन्होंने मेरी बात सुन ली और लूनक्स उठा लिया है। तो चलो, करिश्मा हो चुका है। इसी के साथ अभी टर्टल पे एक अच्छी खासी फाइट देखने को मिल सकती है, जो हमारे LEV यानी लेवरेज कहूंगा यार, क्योंकि ट्रेडिंग में LEV का मतलब लेवरेज ही होता है। तो लेवरेज भैया देखते कितने का लेवरेज देते हो ओपोनेंट को यहाँ पे। एंड मुझे लगता है यार टर्टल के बाद जो फाइट होगी ना थोड़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोनों टीम्स रिस्क नहीं लेना चाहते, थोड़ा पीछे हट के खेल रहे हैं, ज्यादा अंदर नहीं घुस रहे हैं। कल यहाँ पर हमारे गदाधारी बीम अल्टीमेट का वेट यूज करना चाहता है, अल्टीमेट लगा दिया, पकड़ लिया, एक्सबॉक्स को ज्यादा डैमेज नहीं दे पाएंगे। टर्टल यहाँ पर सील कर लिया गया है 9 मफिन की तरफ से। 1 किल की यहाँ पर चाहते किल भी मिल चुकी है। सेकंड किल की तरफ अंदर बढ़ते हुए दरकार पूरी थी, 2 किल सिक्योर किया। हमारी जो लोलिटा दे दी थी अपने, मुझे नहीं पता हैमर लेके इतना अंदर जाने की क्या जरूरत थी भाई। गदाधारी भी है, मैं वो आप हथौड़े के साथ जाओगे, आप थॉर या हल्क नहीं हो, मतलब हल्क तो हथौड़ा पकड़ता नहीं, थॉर नहीं हो कि आप हथौड़े से अंदर जाओगे और मार के आ जाओगे। तो यहाँ पर बहुत बड़ी गलती की, वो शायद किल नहीं मिलती बट किल दे दिया। चलो, इस गलती को थोड़ा सा इग्नोर किया जाएगा। टॉप लेन की दोबारा मैं बात करूंगा, लेवरेज की बात करूंगा। जैसा कि मैंने कहा था, अच्छा खासा डोमिनेट कर रहे हैं खलीद के ऊपर। खलीद को यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो ये चीज यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है अंडरडॉग्स के लिए, अगर उसे जल्दी ही काउंटर नहीं किया गया एसएम। जी बिल्कुल, उनको उस चीज का जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। और आप देखें दूसरी तरफ तो स्कारलेट अच्छी कोशिश कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं, लेकिन नेको तैयार है इस बार। सिसिलियन उनके पास है, कितने स्टैक्स जमा कर पाते हैं वो भी निर्भर करता है कि जिनके उतने स्टैक्स बढ़ते जाएंगे तो फिर तो ज्यादा मुसीबत आएगी। यार क्लिंट जिस हिसाब से तो वो खेल रहे थे, वापस उनको क्लिंट मिल चुका है, तो कहीं ना कहीं मुसीबतों का सामना थोड़ा सा और उनका बढ़ेगा। और रेत के सौदागर, हालांकि 2 बार वो मरे जरूर है, लेकिन कितनी देर तक उनको रोक पाएंगे वो भी देखना रहेगा। 9 मफिन्स, जिस चीज की उनको आवश्यकता थी वो मिली जरूर है, जिस चीज की उनको जरूरत थी एक अच्छी शुरुआत वो उनको मिल चुकी है। थोड़ी समय में टर्टल आएगा तो उनके इर्द गिर्द किस तरह से जाएंगे, लेकिन आप देखें तो रिमी जो है वो बार बार लोलिटा को पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके मैजिक यानी कि यूनिकॉर्न यानी कि लूनक्स को। लेकिन आप दूसरी तरफ देखें तो वो जो है नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि उनको सुरक्षा के लिए तैयार है, उनके गार्ड तैयार है, उनकी शील्ड के साथ तैयार हैं उनके दोस्त। आप देखिए वापस तो यहाँ पे बुलेट जरूर चलने वाली है, और यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे टर्टल का आगमन होगा, कछुए महाराज का आगमन होगा, उनके इर्द गिर्द पधारते हुए दिखेंगे। उनके इर्द गिर्द यहाँ पे गदाधारी भीम पधारते हुए दिखेंगे, उनके इर्द गिर्द लोलिटा जो है वो अपनी शील्ड के साथ पधारती हुई दिखेगी। एंड एक्सबॉक्स जो है वो भी आ चुका है। एक प्रॉपर टर्टल फाइट, इस चीज की हमको लास्ट गेम में नहीं देखने को मिली थी, लेकिन इस बार देखने को जरूर मिल जाने वाली है। चलिए वो शुरू हो चुके हैं। यहाँ पे सैंडस्टॉर्म का इस्तेमाल किया जरूर जाएगा,
लेकिन जूलियन जो है वो कामयाब हो जाएंगे आसानी के साथ, उनको ज्यादा दिक्कत होगी नहीं। आपने जरूर ले लिया है टर्टल, आपने जरूर ले लिया है कछुआ, लेकिन आपको मृत्यु दंड जरूर दिया जाएगा। लूनक्स जो है वो अच्छी तरीके से भाग चुके थे वहां पे, उन्होंने पकड़ा जरूर। और देखते देखते इस बार देखिए लास्ट गेम में जो कमाल हुआ था, इस बार थोड़ा सा परिवर्तन बदलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे छोटा सा किल जो है वो गेम को चेंज करना चाहते हैं, छोटा सा किल जो है लास्ट गेम का बदला लेना चाहते हैं। रिवेंज रिवेंज, वो सिर्फ एक ही रट लगाए हुए हैं। एंड आप देखिए आइटमाइजेशन की तरफ तो एक एक आइटम्स कहीं ना कहीं आरवी सभी के अभी बनते हुए दिख रहे हैं। डेफिनेटली यहाँ पर खलीद का थंडर बेल्ट बन चुका है, तो मुझे लगता है कि शायद उसका जैसे जैसे स्टैक होगा थोड़ा सा एडवांटेज मिले, बट कहीं एडवांटेज मिलने से पहले अंडर फार्म होंगे तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। आप ओपोनेंट के देखिए यहाँ पर 9 माफिस बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो चुके हैं, अंदर घुस रहे हैं, जंगल में मंगल नहीं करने दे रहे हैं, बार बार पोक किया जा रहा है, तो ये बहुत ज्यादा चीजें मैटर करती हैं। इससे क्या होता है कि जो आपका ओपोनेंट है वो थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंस चला जाता है, उसको थोड़ा सा लगता है यार कि शायद हम ये मैच नहीं जीत पाएंगे, और ये अच्छी खासी साइकोलॉजी है, इसको इस पे फोकस करना बहुत अच्छा चीज रहती है। फिर से यहाँ पर अंदर आया एक्सबो का टर्रेट डाइव की जा रही, खलीद को टर्रेट के अंदर मारना बहुत बड़ी बात है। ये बंदा जाना इसी चीज के लिए जाता है कि चीजों को बड़े प्यार से 2 वर्सेस 1 की सिचुएशन हैंडल कर लेता है। जूलियन ने आए टाइमली सपोर्ट किया, किल सिक्योर की, ओपोनेंट का जो जंगलर थे उनको यहां पर मार गिराया गया है, तो यहां से थोड़ा सा फायदा मिलता हुआ 2-6 का स्कोर ऑलरेडी हो चुका है। फार्मिंग डिफरेंस मुझे यहां बहुत ज्यादा नहीं लग रहा है, एसएम सिर्फ 2000 का गोल डिफरेंस है जिसे कभी भी काउंटर किया जा सकता है। थोड़े से टर्रेट जा चुके हैं, थोड़े से किल्स का डिफरेंस बढ़ चुका है, बट जब तक आपका गोल डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है चीजों को कंट्रोल की जा सकती है। दोबारा से 17 सेकंड में हमारे पास कछुआ महाराज फिर से अवतरित हो जाएंगे। पहला जो टर्टल मिला था वो मिला था हमारे 9 मफिन्स को, दूसरा टर्टल मिला था हमारे अंडरडॉग्स को। देखते हैं तीसरा टर्टल कौन लेके जाएगा अपने टीम में, किसके घर जाएगा कछुआ महाराज का आशीर्वाद। सिचुएशन दोनों तरफ से पूरी पूरी बनती है, कच्ची खासी फाइट में बार बार टर्टल के पास देखने को मिल रही है। क्या इस बार इस फाइट में जो हमारे 9 मफिन्स विजयी भव होंगे, या फिर दोबारा हमारे जो अंडरडॉग्स थे वो अपने स्किल्स का इस्तेमाल करेंगे, टाइमिंग रेट्री मारेंगे और इस टर्टल को निकाल के ले जाएंगे। ओवरऑल मैप देखें तो दोनों टीम 4 लोग आ चुके हैं। यहाँ पर परफेक्ट अल्टीमेट का यूज किया, पकड़ना चाहते थे लोलिटा की पॉइंट एचपी हो चुके, तो ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी थी। यहाँ पर लोलिटा को जान बचा के भागना पड़ेगा, अल्टीमेट यूज करने की पूरी कोशिश, बट उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। स्टन तो लगा बट अल्टीमेट इतना ज्यादा है नहीं, डैमेज इतना है ज्यादा है नहीं कि किल सिक्योर कर पाए। बॉट लेन में देखिए लेवरेज वर्सेस एसजेड की फाइट होती हुई 4 वर्सेस 1 की सिचुएशन हो चुकी है, पकड़े जाएंगे यहाँ पर बट नहीं। इसीलिए मैं कहता हूँ जो हमारी सीसी है यानी जो गर्ल है बहुत ही ज्यादा मोबाइल है, बड़े प्यार से ऐसे सिचुएशन से निकल जाती है। इसी चक्कर में पीछे से चोरी चोरी चुपके हमारे जो एक्स बॉग थे उन्होंने ले लिया टर्टल, और दूसरा टर्टल तीसरा टर्टल था शायद वो भी उनके घर पे आ चुका है, तो इसका बहुत बड़ा फायदा हुआ। किल्स भी नहीं मिली, बात करें हम अंडरडॉग्स की, उनको किल्स भी नहीं मिली और टर्टल भी नहीं मिला, वो इधर उधर भागते रह गए। कहते हैं ना वो हीरे की नहीं सोने की तलाश में वो हीरा छोड़ के, टर्टल वहां पर हीरा था तो उनको उस चीज पे फोकस करना चाहिए था, टर्टल पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना चाहिए था। सीसी को छोड़कर, सीसी को नहीं मारा जा सकता इतना इजीली, सीसी को पहले आपको स्टन करना पड़ेगा तभी आप उसको मार सकते हैं। तो ये गेम मुझे लगता है कि यहाँ पर टोटली रूपांतरण हो चुका है। जो लास्ट मैच था उसमें अंडरडॉग डोमिनेट कर रहे थे, बट इस बार जो मैच है इसमें डोमिनेशन जो हमें कंप्लीट और 9 मफिन्स की तरफ से देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, यहाँ पे परिणाम जो है थोड़े से बदलते हुए जरूर दिख रहे हैं, क्योंकि इस चीज की आवश्यकता थी उनको। 9 मफिन्स को जो है एक कमबैक की आवश्यकता थी, उनकी जो फैंस है वो उम्मीद लगाए बैठे थे यहाँ पे। तो चलिए यूनिकॉर्न एंड छोटा सा कील जो है उनके फैंस के ऊपर अभी के लिए खरे जरूर उतरते आ रहे हैं। उन्होंने अपनी टीम को एक अच्छी शुरुआत दिला दी है। चलिए इम्प्लोजन का इस्तेमाल जरूर हुआ था, और उसी के साथ यहाँ पे घेरा जाएगा लॉलिटा को और उनको उतारा जाएगा मौत के घाट। लेकिन उसी के साथ मिनियन वेव्स को भी क्लियर करने की चलिए पूरी ताकत चल रही है। नेको तैयार है चमगादड़ की शक्तियों के साथ रोकने के लिए, लेकिन आप एक्सबॉक को देखिए, स्कारलेट को देखिए, वो अपना लेवल 11 जरूर कर चुके हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे जूलियन जो है यानी कि हिल जो है वो भी अपने आप को उस लेवल पे लेके जा चुके हैं जरूर है। छोटा सा कील वो भी उनकी बराबरी में है। ओके, छोटा सा कील इस बार चलिए स्काई पियर्सर बनाते हुए जरूर देखेंगे। तो अब यहाँ से जितने जितने उनके कील्स में इजाफा होगा, जितने कील वो ज्यादा निकाल पाएंगे उतना उनको फायदा रहने वाला है, क्योंकि जहाँ पे जैसे ही उनके स्टैक्स जो है ज्यादा बनते जाएंगे तो कहीं ना कहीं ज्यादा फायदा उनको होता हुआ जरूर दिखेगा। चलिए अभी के लिए लॉर्ड का आगमन होता हुआ दिखेगा कुछ ही समय में। चलिए देवी और सज्जनों स्वागत करो, हमारे जो लॉर्ड है वो पधार चुके हैं, इस मैच के अंदर आ चुके हैं। चलिए लॉर्ड का आगमन हो चुका है, अब देखते हैं कि कौन सी टीम लॉर्ड के इर्द गिर्द जो है पधारती हुई दिखेगी, कौन सी टीम जो है वो लॉर्ड के आसपास जाएगी एंड लॉर्ड को प्रसन्न करती हुई दिखेगी। 9 मफिन्स के पास पूरा मौका है, लेकिन क्या अंडरडॉग राइस इतनी आसानी के साथ 9 मफिन्स को लॉर्ड लेके जाने में सक्षम होने देगी?
आप देखिए टाइग्रियल को तो कहीं ना कहीं अब मैजिकल डिफेंस की तरफ ज़्यादातर यहाँ पे देखते हुए मिल रहे हैं, लेकिन आप देखिए टावर ज़रूर निकाल लिया, लेकिन देखते ही देखते स्कारलेट जो है आसानी के साथ लेके जाएंगे लॉर्ड को। अच्छा खासा रोटेशन देखने को मिल रहा है, परिभ्रमण जो है वो काफी तेज देखने को मिल रहा है। इस चीज की आवश्यकता थी एंड क्या और भी ये पहला लॉर्ड कितना पर्याप्त होगा जीत को आगे बढ़ाने के लिए। देखिए ऐसे जो हमारा पहला लॉर्ड होता है उसका जो आक्रोश होता है, जो गुस्सा होता है, डैमेज होता है उतना ज़्यादा नहीं होता, तो बड़े प्यार से उसको रोक लिया जाएगा। बट उस लॉर्ड के साथ जो हमारे 9 मफिन्स रहेंगे उनकी कोशिश ये रहेगी कि एक और टर्रेट लिया जाए, थोड़ा सा डोमिनेशन को और बढ़ाया जाए। बॉट लेन से ऑलरेडी एक टर्रेट का नुकसान उनको हो चुका है, तो वो कोशिश करेंगे बॉटम लेन से थोड़ा पकड़ा जाए। यहाँ पर परफेक्ट अल्टीमेट आया एक्सबॉ की तरफ से, सीसी को पकड़ा गया और इसी के साथ सीसी को धराशाही कर दिया गया। ये बहुत बड़ी अच्छी चीज कर ली है। सिसिलियन के यहाँ पर मृत्यु हो चुकी है, तो 4 वर्सेस 4 की सिचुएशन है, पर टॉप लेन से लॉर्ड आ रहा है, तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ सकती है हमारे अंडरडॉग्स के लिए। उनको भी लॉर्ड भी डिफेंड करना पड़ेगा और मिड लेन का टर्रेट भी डिफेंड करना पड़ेगा। सिचुएशन यहाँ पर कॉम्प्लिकेट होती है। फिर से अंदर जाते हुए पीछे से टिकली पकड़ना चाहते थे, आया उन्होंने नॉक तो किया पर उसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। और इसी के साथ जो हमारे जूलियन भैया हैं उनको उनका बफ भी नहीं मिलेगा। जूलियन बिना बफ के थोड़ा सा इशू मिल सकती है, थोड़ी सी उनको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। मिड लेन का यहाँ पर टर्रेट मिलता हुआ हमारे 9 मफिन्स को दूसरे टर्रेट की तरकार में बढ़ते हुए आगे जाते हुए दूसरा टर्रेट भी उनको मिड लेन का बड़े प्यार से मिल जाएगा। बॉट लेन से मिनियन की जो संख्या है बहुत ज्यादा हो चुकी है, इसीलिए कहते हैं कि जब भी लॉर्ड आए, लॉर्ड आने से पहले आप मिनियंस क्लियर कर लो। चमगादड़ का फटका लगा तो बहुत जोर का, बट डैमेज उतना ज्यादा नहीं है, बड़े प्यार से निकलने में कामयाब हो जाएंगे। ब्रूडी को पकड़ना चाहते थे बट अभी उस काम में सक्षम नहीं हो पाएंगे। बॉट लेन से खलीद यहाँ पर पूरी कोशिश करते हुए टर्रेट को बचाने की, बट वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। उनका जो डैमेज है वो इतना ज्यादा सस्ता नहीं था कि पूरे मिनियंस को क्लियर किया जाए। ओवरऑल इस लॉर्ड के साथ बहुत बड़ा फायदा हुआ है टीम 9 मफिन्स को। 2 टर्रेट उनको मिड के मिले हैं और 1 टर्रेट बॉट का मिला है। एक लॉर्ड के साथ 3 टर्रेट निकालना बहुत अच्छी रणनीति है, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, जिसका फायदा 9 मफिन्स को डेफिनेटली मिलने वाला है। अभी वो अंदर घुस के जा सकते हैं, अंदर घुस के मार सकते हैं, पूरे जंगल में राज कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी रणनीति थी 9 मफिन्स की तरफ से कि उन्होंने किल्स पे फोकस नहीं किया, टर्रेट्स पे फोकस किया है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए आप ऐसी रणनीति आप खेल रहे होते हैं जब आप जो है टूर्नामेंट के अंदर या फिर ई स्पोर्ट्स के अंदर जब खेल रहे होते हैं, कहीं ना कहीं मायने जरूर रखता है कि आपको जो फोकस करना पड़ता है टावर के ऊपर। देखिए जितने जल्दी आप टावर निकालोगे उतने जल्दी आपके जो जीतने के चांस बढ़ते हैं। टावर जो है वो कहीं ना कहीं आपका मनोबल भी बढ़ाता है ना। अब आप देखें तो कहीं ना कहीं कोर बिल्ड ज्यादातर हीरोज के बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखिए खलीद की तरफ तो डिफेंस के साथ जाना चाहते हैं, थंडरबेल्ट के कितने स्टैक्स जमा कर पाएंगे वो भी क्वेश्चन निकल के आते हैं, लेकिन देखते हैं कि कितना वो अपनी टीम को योगदान दे पाते हैं। इस लास्ट गेम में हमने देखा था कि यहाँ पे अंडर डॉग राइस जो है वो परेशान करते हुए नजर आ रहे थे फार्मिंग के समय पे। अब देखिए 9 मफिन्स उतनी ही तेजी के साथ परेशान करते हुए नजर आ रहे हैं। ये है एक बदला, दूसरे ही मैच में बदला देखने को मिलने वाला है। एक कमाल का मजेदार मैच निकल के आ रहा है अभी के लिए जरूर, लेकिन आप देखें तो अंक तालिका में 50% का बढ़ोत लेके चल रहे हैं कहीं ना कहीं 9 मफिन्स, क्योंकि 4 अंक अर्जित किए हैं यहाँ पे अंडरडॉग राइस ने। 4 किल निकाले हैं अंडरडॉग राइस ने और सामने 8 किल निकाल के जा चुके हैं 9 मफिन्स। एक बार फिर से लॉर्ड का आगमन हो चुका था, 12 मिनट के ऊपर का समय हो चुका है, यानी कि इनहैंस लॉर्ड इस बार आए हैं। कार्लेट जो है लॉर्ड को प्रसन्न करने में चलिए अपना योगदान देंगे। उनकी पूजा अर्चना अर्धना जो है सब कुछ हो चुका है एंड अब यहाँ पे आगे बढ़ते हुए नजर आने वाले हैं। लॉर्ड जो है वो मार्च करते हुए नजर आने वाले हैं, लॉर्ड आगे बढ़ेंगे एंड इसी के साथ क्या ये अंत होगा? 9 मफिन्स इस बार तैयार है, आक्रोश वाले लॉर्ड के साथ जाना चाहते हैं। उनके पास इस बार है इनहैंस लॉर्ड। दूसरी तरफ अंडरडॉग राइस पूरी तरह से तैयार, पूरी तरह से वो है डिफेंस करने के लिए तैनात। सभी दिशाओं से, तीनों दिशाओं से, ऊपरी लेन, मध्यम लेन, स्तरीय लेन, तीनों लेन से मिनियंस वेव जा रही है। लेकिन आप देखें लॉर्ड को कितनी आसानी के साथ वहां पे रोका गया है। आपके जो प्रतिद्वंदी है वो आप तक पहुंच ही नहीं पाए। अंडरडॉग राइस कमाल का ये दावपेच खेला है। 9 मफिन्स को इस चीज को ध्यान में रख के भी चलना पड़ेगा, हालांकि उनके पास मिनियन वेव्स अभी भी है, तो मिनियन वेव्स अगर पहुंचती है वहां पे उनके इन्वेटर टावर तक तो थोड़ा सा फायदा जरूर होगा, लेकिन जब तक वो पहुंचेंगे तब तक शायद से 9 मफिन्स चाहते हैं कि उनको अभी के लिए जाने दीजिए, बाहर आने दीजिए यहाँ पे अंडरडॉग राइस को, तब तक हम उनका खेत चुरा लेते हैं। यार बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर जो स्ट्रैटेजी थी और जो हमारे अंडरडॉग से इन्होंने अपने लास्ट लॉर्ड से गलतियों से सीखा और इस बार मिनियंस को पहले ही क्लियर करके रखा।
लॉर्ड को रोकने की सबसे अच्छी रणनीति यही होती है कि आप मिनियंस को हावी मत होने दीजिए। मिनियंस नहीं रहेंगे तो आप बड़े प्यार से लॉर्ड को रोक सकते हैं, बट अगर तीनों लेन से मिनियन का प्रेशर बढ़ जाएगा तो आपसे रोका नहीं जाएगा, आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ बड़ी अच्छी यहाँ पर हमें अंडरडॉग्स की तरफ से देखने को मिली। और मुझे लगता है कि अब जो मैच में रूपांतरण देखने को मिलेगा, थोड़ी सी उठक पटक देखने को मिलेगी और शायद यहाँ से कमबैक हो सकता है हमारे अंडरडॉग्स का। अभी जो हमारी अंडरडॉग है थोड़ी सी डिफेंसिव चल रही है, वेट करिए ओपोनेंट की गलतियों का, और ये बहुत अच्छी रणनीति है। आप उस सिचुएशन में पहुंचे कि आप ज्यादा बाहर जा नहीं सकते, ज्यादा ओपोनेंट के खेमे में जाके फाइट नहीं कर सकते, तो आपको अपने घर में रहकर वेट करना पड़ेगा, रणनीति लगानी पड़ेगी, जाल बिछाना पड़ेगा, ओपोनेंट को बुलाना पड़ेगा, फिर उनका काम तमाम करना पड़ेगा। अगर आप बाहर जाके रिस्क लेने की गलती करेंगे तो आपके हाथों से मैच बड़े प्यार से निकल जाएगा। तो मेरी पर्सनल सजेशन यही रहेगी हमारे अंडरडॉग्स के लिए, थोड़ा सा वेट करो, ओपोनेंट गलती करेगी, क्योंकि ऑलरेडी जो हमारे 9 मफिन से एक मैच हार चुके हैं, ये मैच उनके लिए जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है। इतना सारा डोमिनेशन होने के बावजूद भी अगर वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं दिखाएंगे तो उनको हजम नहीं होगी ये चीज़, टू बी ऑनेस्ट वो कंट्रोल नहीं होगा। थोड़ी देर में अगर आप 2 मिनट का भी वेट करते हैं बिना किसी गलती के, बिना किसी इनिशिएशन के, बिना कि अटैक किए, तो डेफिनेटली जो हमारी 9 मफी से अंदर आएगी, कोशिश करेगी किल्स निकालने का, और जब हमारी जो ओपोनेंट होती है इस चीज़ में फंस जाती है कि अभी मैच खत्म करना है, तो कोई ना कोई गलती करते हैं, आपको उस गलती का वेट करना है। अगर अंडरडॉग के अंदर इतनी सहन शक्ति है, कितना वेट कर सकते हैं, पेशेंस है, तो ये मैच वो जीत जाएंगे। बट अगर उन्होंने अपना पेशेंस लूज किया तो ये मैच उनके हाथों से निकल जाएगा। इसी के साथ हमारे जो शिव शंभू है वो भी यहाँ पर अवतरित हो चुके हैं, कोशिश करना चाहते थे चमगादड़ यहाँ पर थोड़े से आगे बढ़ते हुए, बट डैमेज बहुत ज्यादा मिल गया हमारे बुलियन को, पीछे रहना पड़ेगा, अभी आगे नहीं जा सकते। यही मैं कह रहा था, गलती कर दी यार इन्होंने। अब यहाँ पर इनको बॉट लेन के मिनियंस क्लियर करने पड़ेंगे और इसी चक्कर में बड़े प्यार से जो शिव शंभू है उसका आशीर्वाद मिल जाएगा हमारे 9 मफिन को। थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है अंडरडॉग्स को। अगर यहाँ पर इन्होंने किल दे दी ओपोनेंट को, मारे गए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। टीगरेल अंदर गए थे, किल्स लेना चाहते थे, अल्टीमेट मारना चाहते थे, बट टाइमली नहीं लगा। थोड़ी सी वहाँ पर उन्होंने मिस्टेक कर दी और अल्टीमेट प्रॉपरली नहीं लगी उनकी वजह से। तो इसी के साथ लॉर्ड भी मिल चुका है हमारे 9 मफिन्स को, और यहाँ पर कोई भी किल भी नहीं दी है, मतलब एक डेथ भी नहीं हो। तो बड़े प्यार से ये मैच का जो कंट्रोल था उनके साथ में है। क्या एसएम जो हमारी अंडरडॉग्स हैं इस बार इस लॉर्ड को डिफेंड कर पाएंगी? 17 मिनट का लॉर्ड हो चुका है, थोड़ा सा अग्रेसिव होते हैं, इनका डैमेज बहुत ज्यादा होता है, सस्टेन बहुत ज्यादा होता है। बॉट लेन से मार्च करते हुए आ रहे हो, तो मुझे लगता है बड़े प्यार से जो बॉट का टरेट है, इनहिबिटर टरेट, वो तो चला जाएगा, उसको तो प्रोटेक्ट करने की कोई यहाँ पर पॉसिबिलिटी मुझे नहीं दिखाई दे रही है। बट टॉप लेन से सीसी यहाँ पर आ रही है, बड़ी प्यार से स्ट्रैटेजी लगाई जा रही है। तीनों लेन से यहाँ पर जो हमारी 9 मफिन से आगे धीरे धीरे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी रणनीति है 9 मफिन की तरफ से। बट बहुत बड़ी दिक्कत है हमारे इनके लिए, टिगरेल को पकड़ा जाएगा यहाँ पर। अल्टीमेट की पूरी कोशिश बर्निंग डैमेज देना चाहता था, ट्रू डैमेज एक्सबॉक्स की तरफ से आया, बट वो इतना ज्यादा सफिशिएंट नहीं था कि यहाँ पर हमारे जो गदाधारी ग्रीन थे उनको पकड़ा जाए। फिर से यहाँ पर जूलियन आए और मुझे लगता है कि लॉर्ड को बड़े प्यार से यहीं पर रोक दिया जाएगा, सिर्फ 1 टर्रेट के नुकसान पर। इसी के साथ मिड लेन में अंदर घुस चुके हैं, एक्सबॉक्स यहाँ पर अंदर आ चुके हैं। चमगादड़ अपने पंजों का इस्तेमाल करते हुए, कोशिश पूरी करते हुए डैमेज देना चाहते हैं, बट डैमेज अभी मुझे लगता है मुझे सफिशिएंट हो पाएगा। पूरी कोशिश करते हुए, जी जंतोजहद करते हुए, पूरी जान लगाते हुए, एंड इसी के साथ मुझे लगता है कि 9 मफिन्स ये मैच अपने घर की तरफ लेकर जाते हुए लगातार सिर्फ टर्रेट पे फोकस किया जा रहा है, किल्स पे ध्यान नहीं दिया जा रहा। बिना मिनियंस के टर्रेट नहीं ले सकते और यहाँ पर शायद गलती कर सकते हैं। चमगादड़ यहाँ पर अच्छा खासा डैमेज देते हुए 2 वर्सेस 3 की सिचुएशन बची है। मिनियंस बहुत ज्यादा आ चुके हैं और इसी के साथ ये मैच यहाँ पर समाप्त होता हुआ 9 मफिन्स के हित में। 9 मफिन्स ने ये मैच जीत लिया है और जो अब स्कोर हो चुका है बराबरी का हो चुका है, दोनों टीम्स 1-1 के स्कोर पे पहुंच चुकी हैं। जो थर्ड मैच होने वाला है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हाँ जी बिल्कुल, एक कमाल का मैच, एक कमाल का दाव पेच, एक कमाल का अदला बदला। जैसे हमने मैच खत्म हुआ तब बात कर रहे थे कि छोटा सा कील, जिस तरह के उनके उम्मीद कर रहे थे उनके फैंस जो है वो नहीं उतर पाए थे उसके ऊपर सक्षम। लेकिन आप इस बार देखें, इस बार पूरा उथल पुथल करवा दिया गया है। आप देखें क्लिंट के सामने प्रॉपर बदला ले लिया गया है। अब क्लिंट देखें तो उनके स्कोर के बराबर भी नहीं है, वो MVP लेके गए और क्लिंट जो है उनके प्रतिद्वंदी जो कि काफी लो स्कोर के ऊपर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक कमाल का स्ट्रेटेजिक कमबैक इन्होंने किया है। तो अब आके वापस से स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है 1-1 के ऊपर। अब वापस से शुरुआत होने वाली है 0 से। अब बनेंगे कि यहाँ पे कौन से टीम है वो आगे लेके जाने वाली है अपने स्कोर को। काफी कमाल का मैच आप देखें, दोनों टीम्स ने काफी अच्छा खेला। 11 किल निकाल के गए यहाँ पे टीम 9 मफिन्स, और सामने उनके प्रतिद्वंदी जो है हमले में 6 किल निकालने में कामयाब जरूर हुए हैं। लेकिन क्या वो पर्याप्त होगा? क्या अगले गेम में कुछ रणनीतियां चेंज होगी? जैसे मैं बात कर रहा था पहले मैच में कि 9 मफिन्स कहीं ना कहीं हो सकता है कि किस तरह से
खेलते हैं अंडरडॉग गाइस, उनकी जो स्ट्रेटेजीज है वो निकालना चाहते हो, तो शायद कहीं ना कहीं वो चीजें उन्होंने भापी, उनको लगा कि जो हीरोज निकालने चाहिए, जैसे खोफरा निकालना चाहिए, जैसे जुसिन को निकाल देना चाहिए, तो उनको निकाल दिया। उनको पता था, हालांकि एमवीपी लेके गए थे क्लिंट, फिर भी लेकिन छोटा सा किल उनके सामने ब्रूडी खेल रहे थे, उनको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंट था, उसको खुद के ऊपर बिलीव था कि मैं इसको तोड़ सकती हूं, मैं इसको खदेड़ सकती हूं। वापस ब्रूडी के साथ तो छोटा सा किल उस बात के ऊपर खरी उतरी एंड उन्होंने बदला लिया अपना, उन्होंने जीत दिलाई अपनी टीम को एंड स्कोर पहुंच चुका है 1-1 की बराबरी पे आरवी। बिल्कुल सही कह रहे हैं ऐसे में, जैसे कि हम स्टार्टिंग में मैंने आपको जैसे ही उन्होंने पिक्स की थी, मैंने तभी बोला था कि इस बार जो 9 मफिन्स का पुल है वो थोड़ा सा भारी लग रहा है। उसका सबसे बड़ा रीजन यही था कि इनके पास इस बार लोलिटा थी जो क्लिंट को काउंटर करने की क्षमता रखती है, सीसी था जो सिसिलियन ओ खलीद को बड़े प्यार से हैंडल कर सकता था, और लास्ट में जो उन्होंने लूनक्स के पिक की वो बहुत ज्यादा काबिल तारीफ थी। उसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि लूनक्स यहाँ पर अल्टीमेट का गुड अल्ट का यूज करके फाइट को इनिशिएट भी कर सकती है और बड़े प्यार से फाइट इनिशिएट करके निकल भी सकती है पतली गली से, मारना थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, और उसके साथ जो बर्स्ट डैमेज आता है वो बहुत ज्यादा इशू क्रिएट करता है। तो यही सारे रीजन थे जहां पर 9 मफिन्स के पास अपर हैंड था और जो हमारे अंडरडॉग्स थे वो थोड़ा सा कमजोर पड़ते हुए दिखाई दिए। तो इसी के साथ गए दोस्तों और भाइयों और उनकी बहनों, हम अभी लेंगे थोड़ा सा ब्रेक और जाते हैं, अभी आते हैं मैच रिजल्ट्स के साथ और देखते हैं कौन मिला एमवीपी, किसको मिला। शायद हो चुका है ना रिजल्ट्स वाला सीन, हाँ, थर्ड मैच के साथ आएंगे। वो हमने देखा, छोटा सा किल लेके गए। For her, I would sail across the cosmic sea to the end of time. I'm the boss. For her,
I would sail across the cosmic sea to the end of time. I'm the boss. For her, I would sail across the cosmic sea to the end of time.
I would sail across the cosmic sea to the end of time. स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से, वेलकम बैक। इंडिया शोडाउन सीजन 1 में चलिए तीसरे मुकाबले के लिए रेडी हो जाइए। सेमीफिनाले में हम आ चुके हैं। बेस्ट ऑफ 5 का ये मुकाबला जरूर है। अब देखेंगे हम 9 मफिन्स ने जो पिछले मैच में कारनामे किए हैं, कमाल के कारनामे थे, उथल पुथल किए जरूर है। अंडरडॉग राइस ने पहले मुकाबले में थोड़े से कारनामे किए थे, उन्होंने उथल पुथले जरूर करवाई थी। अब देखेंगे कि तीसरा मुकाबला, अब वापस से दोनों आ चुके हैं इक्वल लेवल पे, तराजू हो चुके हैं बराबरी पे। अब किसका तराजू जो है वो ऊपर जाता है, किसका तराजू जो है नीचे जो आता है। तराजू भाई आप जो है तराजू में देखिए, ऊपर नीचे तराजू जाता है। और देखते हैं कि किसका लेवल जो है निकल के आता है। लेवल देखो सबके निकलेंगे, लेवल सबके निकलेंगे, बट ये तराजू मुझे समझ नहीं है भाई। अब देखते हैं कि कौन से टीम लेके जाएगी तीसरी विक्ट्री। आरवी विक्ट्री तो ठीक है, मुझे तराजू चाहिए भाई। जहां कौन सा तराजू था भाई? ऐसे देखो, आपका जो विचार है उसको थोड़ा सा शुद्धिकरण करें। हम देखिए स्ट्रीम पे दिखाने के लिए इतना ऊपर लेके आना पड़ता है। आपने ऐसे नहीं रखा था, आपने ऐसे रखा था। तो वो भी वही हुआ ना, ऐसे हाथ ऊपर ऐसे लेके आना पड़ता है कि कितने लेवल तक ऊपर नीचे जाएगा। थोड़ा सा शुद्धिकरण की आपको आवश्यकता है, जरूर है। चलिए वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, आपको मैच की तरफ भी आगे बढ़ना पड़ेगा। वैसे आपकी जो एक्सपर्टीज है वो इसमें से हटा के एक्सपर्टीज को आप बैन की तरफ भी लेके जाइए कि कौन से अगले बैन आने वाले हैं, कौन से अगले पिक आने वाले हैं हमारे आरवी जी। देखिए टोटल आपको 5 ही बैन से मिलती हैं, 5 एक तरफ 5 दूसरी तरफ। तो जैसे लास्ट बार क्या हुआ था कि जो हमारे 9 मफिन्स थे उन्होंने बैन कर दिया था ओपोनेंट के तगड़े हीरो, जिसमें से एक थी जूक्शिन और दूसरी थी हमारे कुफरा भैया, जिसकी वजह से वो मैच जीतने में कामयाब हो पाए थे। बट इस बार 9 मफिन्स ने वो बैन नहीं किया है। जूक्शिन यहाँ पर ओपन है, तो शायद वो या तो जूक्शिन अपने लिए रखना चाहते हैं या तो ओपोनेंट को देना चाहते हैं। और इसी के साथ कार्मिला भी अभी तक बैन नहीं हुई, तो कार्मिला भी एक अच्छी खासी पिक है, शानदार पिक है। तो ऑप्शन यहाँ पर दे दी है, या तो 9 मफिन्स को जूक्शिन मिलेगी या तो कार्मिला मिलेगा। बट इस बार अंडरडॉग कहते हैं भाई ये इस ब्रोडी को बैन करो। लास्ट मैच इसने बहुत ज्यादा दिक्कत दी थी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी ब्रोडी की वजह से। ब्रोडी को यहाँ पर आउट ऑफ द बॉक्स कर दिया, उनका रास्ता बंद कर दिया गया। यहाँ पर अभी हमारे 9 मफिन्स की फर्स्ट पिक आ रही है और देखते हैं हमारे 9 मफिन्स कौन से हीरो के साथ जाना चाहेंगे, कौन सी यहाँ पर उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगी। क्या वो यहाँ पर जूक्शिन के साथ जाएंगे या फिर वो कार्मिला के साथ जाएंगे या फिर वो अपने सिसी के साथ जाएंगे। लास्ट मैच में सिसी ने जगह सा परफॉर्मेंस दिया था। तो ऑप्शंस बहुत सारी हैं, बस देखते हैं किस चीज की दरकार है उनको, उनकी टीम को। क्या कहेंगे एसएम, वाइल्ड गैस कौन सा पहला पिक हो सकता है? आपके पास 5 सेकंड है। हाँ, हमने तो कई बार देखा, हमने सुयो वगैरह देखने को नहीं मिल रहे हैं, लेकिन अभी रेगुलर जो पिक है वही देखने को मिल रहे हैं। जूसिन वगैरह आ रहे हैं। मैं कहीं ना कहीं दिमाग में लेके चल रहा हूँ कि क्या सुयो आएगा, क्या नोलान हमको देखने को मिलेगा। लेकिन वो स्ट्रेटेजीज शायद से इनकी स्ट्रेटेजीज काफी अलग रहती है। तो वही वापस चलिए जूसिन छोड़ा गया था जानबूझ के, चलिए पता होगा। मेरे को ये देखना है कि अंडरडॉग राइस ने यहाँ पे जुक्सिन को ओपन छोड़ा था, तो वो कौन सी स्ट्रेटेजीज लेके चल रहे हैं जुक्सिन को काउंटर करने के लिए। आपके अकॉर्डिंग कौन से मेज आ सकते हैं कि शायद जो जुक्सिन को काउंटर करके अपना कामयाबी कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले कमाल का पिक यहाँ पे ये भी निकल के आता है। अब देखिए एक्सबॉग एंड यूजोंग कई बार आमने सामने आते हैं, तो एक्सबॉग जो है वो थोड़ा सा शुरुआती गेम में बिछड़ता हुआ दिखता है, लेकिन उसको काउंटर करने के लिए आप जो है मच्छर को थोड़ा साइड रखें एंड यहाँ पे देखें तो ये यहाँ पे आते हुए दिख रहे हैं। एंड ये हीरोज के ऊपर आप क्या कहेंगे कि किस तरह से दोनों का चलिए डुओ एक तरह से बनेगा। अभी हम देखते हैं कि आमने सामने लड़ते हैं, लेकिन आज देखिए डुओ बनने वाला है, तो ये डुओ किस तरह से रहेगा एंड सामने जुसिन के लिए कौन सा हीरोज इनको लेके आना चाहिए।
देखिए वही मैं कहने जा रहा था, जैसे ही मैंने ड्रैगन के पिक देखे और साथ में एक्सबॉक, भाई ये डेडली कॉम्बो है। ठीक है, यहाँ पर दोनों हीरोज ऐसे हैं जो चार्ज करने की क्षमता रखते हैं और बर्स्ट डैमेज देते हैं। एक्सबॉक का डैमेज भी बहुत ज़्यादा खतरनाक आता है, ट्रू डैमेज आता है। ऊपर से जो ड्रैगन होते हैं, इसकी जो शाह एसेंस होती है, उसका जो डैमेज है बहुत ही ज़्यादा काबिले तारीफ है। तो अभी जो हमारे 9 मफिन्स है, उनको ऐसे हीरोज लेने पड़ेंगे कि जो ड्रैगन को भी हैंडल कर ले और एक्सबॉक को भी हैंडल कर ले। एक्सबॉक का ट्रू डैमेज आप काउंटर नहीं कर सकते। आपने बेलरिक लिया, एक अच्छी खासी पिक है, अच्छा ऑप्शन है, बट मुझे नहीं लगता कि बेलरिक का जो अल्टीमेट है वो बहुत ज़्यादा ड्रैगन को या फिर एक्सबॉक को रोक पाएगा। बिकॉज बेलरिक ने अल्टीमेट मारी, ड्रैगन अपने ड्रैगन फॉर्म में आ जाएगा एंड बड़े प्यार से निकल जाएगा। एक्सबॉक ने अल्टीमेट यूज कर ली, वो वहां से निकल जाएगा। तो बेलरिक की अल्टी वहां पर वेस्ट होने वाली है। बेलरिक को पहले वेट करना पड़ेगा उनकी अल्टी यूज होने का, इसी के साथ बेलरिक को काउंटर करने के लिए, या फिर आप कह लो टेरिजला के अल्टीमेट को काउंटर कर ले कि हमारा जो उल्लू है वो आ चुका है और ये उल्लू अभी ओपोनेंट को उल्लू बना के छोड़ेगा, जिसकी मुझे उम्मीद है। इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट बैन फेज में आ चुके हैं। क्या यहाँ पर नेक्स्ट जो बैन है वो होंगे, जो लास्ट मैच में दिक्कत कर रहा था, सीसी वगैरह बैन होंगे, लूनक्स बैन होंगे या फिर नहीं होंगे? आप देखें तो अगर लूनक्स अगर बैन होगा तो भी मे भी देखने को मिल सकता है कि वो 9 मफिन्स जो है उन्होंने तो उठा लिया है अपना मैजिकल हीरो, तो उनकी तरफ से शायद देखने को मिले। और अंडरडॉग राइस की तरफ से शायद से वो उतना देखने को ना मिले, क्योंकि आप लूनक्स देखें तो वो टेरिजला के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन निकल के आ जाता है। वहां पे देखें कि दूसरी तरफ बेलरिक, तो उनके लिए भी अच्छा ऑप्शन निकल के आता है। लेकिन जैसे आपने बताया कि उल्लू यहाँ पे डीगी आ चुके हैं, तो अपने अल्टीमेट की ताकत से जितने भी बंधन होते हैं वो सभी बंधन से मुक्ति दिलाने के लिए अपनी अल्टीमेट का यूज करते हैं। तो जब अपना टाइम मशीन का जो क्लॉक की पावर है वो चलाता है, तो काफी सारी परेशानियां खड़ी करते हुए जरूर दिखते हैं। तो उसी देखना पड़ेगा कि पिक करते हैं या फिर नहीं करते हैं और अगले हीरोज कौन से आएंगे। लेकिन उससे पहले देखते हैं कि बैन क्या करते हैं। अगले बैन की तरफ बढ़ते हैं तो रॉजर हमने देखा कि कई मैच में पिक भी नहीं हो रहे थे और बैन भी नहीं हो रहे थे, लेकिन इस बार शायद वो सोच रहे हैं कि ऐसी रणनीतियां निकल के आ रही है तो उनको उड़ा दिया जाए। हो सकता है कि हाइपर के लिए वो रॉजर लेते हुए दिखे, तो उन्होंने रॉजर को उड़ाना इस बार सही समझा है। और उसके साथ साथ अरोरा का भी देखिए, चलिए कमाल का निकल के आ जाता है। फ्रीज करने की ताकत उनकी जरूर है, उनका पैसिव में उनके पास बचने की ताकत भी जरूर है। फ्रीज से वो बच भी सकते हैं, फ्रीज से वो मार भी सकते हैं यार भी। बात तो आप सही कह रहे हैं कि फ्रीज से बच भी सकते हैं, फ्रीज से मार भी सकते हैं, बट मैं यहाँ पर अभी 9 मफिन्स की पिक्स को लेके थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। उन्होंने जुक्शिन उठाई है एज अ मेज, हमारा जो टेरिजला रहेगा वो एक्सपेलिनर रहेगा, बेलड्रेक रहेगा, हमारा रोमर रहेगा। इनको अभी एक मार्क्समैन चाहिए और एक जंगलर चाहिए, और मुझे नहीं लगता कि जो हमारे अंडरडॉग है यहाँ पर इनको सुटेबल मार्क्समैन या जंगलर लेने देंगे। ऑप्शंस बहुत सारी अवेलेबल है, बट ऐसी कोई ऑप्शन नहीं है जिससे आप ड्रैगन को या फिर एक्सबॉक्स के डैमेज को काउंटर कर सके। तो यहाँ पर जो हमारे 9 मफिन से थोड़ा सा ड्राफ्ट में फंस चुके हैं, इनके पास ज़्यादा ऑप्शंस बची नहीं है काउंटर करने के लिए, तो ये यहाँ पर दिक्कत होने वाली है। जबकि बात करें हम अंडरडॉग्स की, तो इनको तीनों पिक्स अभी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने वाले हैं और अर्ली गेम से ओपोनेंट को प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं। दूसरी तरफ 9 मफिन्स में जो हमारी जुक्शिन है, इनका मिड टू लेट गेम अच्छा खासा डैमेज आता है। टेरिजला भी मिड टू लेट गेम में अच्छा खासा जलवा दिखाते हैं। बेलड्रिक थोड़ा सा अर्ली गेम में अपना कंट्रोल करने में जो फाइट्स होते हैं उसको योगदान देते हैं, बट उतना ज्यादा नहीं दे पाएंगे, स्पेशली अगेंस्ट ड्रैगन और हमारा जो एक्सबॉग है। तो मुझे लगता है कि ये मैच ऑलरेडी अकॉर्डिंग टू द ड्राफ्ट, मेरे अकॉर्डिंग, मुझे नहीं पता भाई जो एक्सपर्ट होंगे उनके अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग 9 मफिन्स का जो पलड़ा है थोड़ा सा यहाँ पर झुक चुका है और जो अंडरडॉग्स है उनका पलड़ा थोड़ा सा उठ चुका है इससे। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप देखें तो देखेंगे कि अगली तरह से कौन से जो पिक है वो भी आते हुए दिखेंगे। अब तराजू जो है वो ऊपर नीचे करते हुए जरूर दिखे, लेकिन गेम के अंदर देखें, अरे चाहिए मजेदार पैक इक्सिया का यहाँ पे। देखिए इक्सिया का पिक से थोड़ा सा प्रभावित क्यों है बताया। देखिए अब इक्सिया जो है उनके पास हालांकि बचने की ताकत जो है वो नहीं रहती है, लेकिन जो उनका दायरा जब बढ़ता है तो एक बड़ा एरिया उनके पास आ जाता है और उनके अंदर जितने भी प्लेयर्स फंसते हैं ना वो धड़ाधड़ मरते हुए दिखते हैं। तो ये एक फायदा जरूर है। और उनके ऊपर जब टर्न पड़ता है तो बचने की ताकत भी उनके पास जरूर निकल के आ जाती है। अब देखते हैं कि दूसरी साइड जो है 9 मफिन्स, जैसे आपने बताया कि आपकी जो एक्सपर्ट एडवाइस हमेशा रहती है, कहीं ना कहीं कई बार हमने देखा है और कई बार अच्छी साबित निकल के आ जाती है। आपको पता होता है पहले से ही कि कौन सी स्ट्रेटेजीज लेके चल रहे हैं। जैसे लास्ट टाइम आपने शायद मिस कर दिया, लेकिन मैंने आपको ड्राफ्ट फेस के टाइम ही बताया कि जैसे आप बात कर रहे थे बार बार लगातार लूनक्स की बात कर रहे थे कि लूनक्स आपको आपके हिसाब से यहाँ पे पिक होते हुए दिखेंगे। तो लूनक्स का पिक होता हुआ दिखा था अभी, एंड किस तरह से उन्होंने प्रभावित किया। वो टैंक को मेल्ट डाउन भी करना जानते हैं, एंड जब उनको बचना हो तो बच के निकलना भी जानते हैं, यानी कि उनकी लाइटनिंग पावर है उससे वो बचना भी जानते हैं, डार्कनिंग पाकवर्ड से वो धराशायी करना भी जानते हैं। अब आप देखिए
ब्रूनो आ चुका है, ब्रूनो काफी प्रभावित करेगा। ब्रूनो एक करंट मेटा के हिसाब से एक अच्छा मार्क्समैन निकल के भी आ जाता है, तो उसके पास एक अच्छी क्षमता है जरूर। लेकिन आप उसके साथ साथ देखें तो वेल का आगमन भी होता हुआ दिख रहा है। एंड यहाँ पे आप देखें तो बम्बिंग मशीन यहाँ पे जो गोले पटाखे फोड़ने के लिए, लेलिया जो है वो उछलने कूदने के लिए आ चुकी है। तो दोनों टीम ऑन पेपर रेडी हो चुकी है। अब आप जो है आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन इन दोनों टीम के ऊपर दे सकते हैं। देखिए अभी दोनों टीम्स ना बेन और मार्क्समैन यानी ब्रूनो के पिक्स की वजह से थोड़ा सा बैलेंस हो चुकी है। उसका रीज़न ये है, जो बेन का डैमेज है अल्टीमेट का वो बहुत ज़्यादा रहता है, उससे बहुत ज़्यादा चीज़ें हैंडल की जा सकती हैं। और ओवरऑल 9 मफिन्स के पास अभी सीसी बहुत बहुत ज़्यादा हो चुका है। सपोज डिगी है 1 सीसी से बचा लेगा, 2 सीसी से बचा लेगा, बट आप 4-4 सीसी से अपनी टीम को नहीं बचा सकते। तो यहाँ पर अंडरडॉग्स को थोड़ा सा बच के चलना पड़ेगा, थोड़ा सा संभल के खेलना पड़ेगा, चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा। अगर उन्होंने गलती की, सीसी का जो हमारी डीगी है उनका जो क्लॉक एबिलिटी है उसका प्रॉपर्ली टाइमली इस्तेमाल नहीं किया तो दिक्कत हो सकती है। इसी के साथ हम प्रवेश कर चुके हैं हमारे लैंड ऑफ डॉन में। दोनों टीम्स की हो चुकी है खेती बाड़ी स्टार्ट, अपने जंगल में करते हुए मंगल। बेन यहाँ पर हमारे हाइपर, दूसरी तरफ है एक्सबॉक्स। चलते हैं एसएम से, पूछते हैं उनसे हमारा फेवरेट सवाल, कौन लेके जाएगा फर्स्ट ब्लड। फर्स्ट गेम में था अंडरडॉग के पास, सेकंड गेम में था 9 मफिन्स के पास, थर्ड गेम में किसके पास होगा? चाहे अंडरडॉग होंगे या फिर 9 मफिन्स होंगे? हाँ चलिए, अभी के लिए तो जरूर लग रहा है अंडरडॉग्स लेने की पूरी ताकत में है, लेकिन छोटा सा खेल, चलिए नाम जरूर छोटा है लेकिन वो बचने में कामयाब जरूर होगा, क्योंकि उनकी पास स्किल जो है वो कमाल की रह के आती है। एंड आप देखें यूनिकॉर्न उछल कूद करने के लिए वो इस बार तैयार है। लास्ट टाइम नेको के पास जब जूसिन आई थी तो उन्होंने उछल कूद काफी करवाई थी। इस बार चलिए उनको उछल कूद करवाने के लिए ये लोग तैयार हो चुके थे। लेकिन फर्स्ट ब्लड कौन लेके जाएगा, अभी भी ये सवाल निकल के आता है। टीम फाइट अगर होती है तो कहीं ना कहीं वहां पे प्रेडिक्शन गलत निकल के आ सकता है, बट कहीं ना कहीं इस बार भी मेरी जो आशाएं हैं और यूनिकॉर्न के ऊपर ज्यादातर टिकेगी कि यूनिकॉर्न या तो फिर यहाँ पे सिरेन जो है वो फर्स्ट ब्लड लेती हुई दिखेंगी। दोनों में से एक आरवी मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं फर्स्ट ब्लड के दावेदार होंगे जरूर। लेकिन एक बात पे मैं और आना चाहूंगा कि ज्यादातर 2 मैच में लगातार ये भी हुआ है कि फर्स्ट ब्लड मैच आपका, तो क्या इस बार भी होगा कि फर्स्ट ब्लड और मैच आपका? पॉसिबिलिटी बन सकते हैं। इसी के साथ जुक्शी ने फर्स्ट ब्लड निकाल लिया है। टीम हमारे 9 मफिन की तरफ से हमें फर्स्ट ब्लड देखने को मिला, बड़े प्यार से उन्होंने नेको को पकड़ा और उन्हें धराशायी कर दिया। इसी के साथ टॉप लाइन में अच्छी खासी फाइट देखते हुए एक्सबॉक्स ने अल्टीमेट यूज किया, इंसेनिटी का यूज किया और यहाँ पर धराशायी कर दिया गया है हमारे छोटा शकील को। तो छोटा शकील की यहाँ पर मृत्यु हो चुकी है। जो हमारे स्नेप्स थे वो शायद रिकॉल करके वापस आ रहे थे, इसी के बीच में उनको निपटा दिया गया। तो दोनों टीम्स ने एक किल ले ली है, ये बहुत अच्छी चीज है। यहाँ पर जो फर्स्ट ब्लड का खुशी थी वो उसको गम में बदला गया छोटे शकील की मृत्यु के बाद। तो जैसा कि आप कह रहे थे फर्स्ट ब्लड और मैच आपका, ये चीज़ पॉसिबल होती है। उसका रीज़न ये होता है कि फर्स्ट ब्लड के साथ ना आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है, आपकी टीम का कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। और इसी के साथ टर्टल को भी बड़े प्यार से बिना किसी ऑब्जेक्शन के, बिना किसी अवरोध के ले लिया गया है। हमारे जो बेन है यानी समुद्र के देवता है उनकी तरफ से जो ये ऑक्टोपस है ना भाई, ये बहुत दिक्कत करने वाला है। इसको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा हमारे अंडरडॉग्स को, वरना प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। इसी के साथ अच्छा खासा डैमेज। यार मैं बेलरिक प्लेयर हूँ, मुझे पता है जो हमारा डिगी है ना, अगर बेलरिक वर्सेस डिगी करते तो बेलरिक को बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। डिगी का मैजिक डैमेज बहुत ज्यादा इशू करता है और बार बार जो इसकी सेकंड एबिलिटी है रिटेन करने की और ट्रैप करने की बहुत बड़ी इशू क्रिएट करेगी। बेलरिक वहां से अपने स्किल्स प्रॉपर्ली नहीं यूज कर पाएंगे। दोबारा टॉप लाइन में जो फाइट का माहौल बनता हुआ है, हमारे पास रिमी है, सायरन है, नेको है, पीछे से हमारे एक्सबॉक्स भी आ चुके हैं। 4 वर्सेस 3 की सिचुएशन बनती हुई है और मुझे लगता है जो हमारे बेन है वो अभी अपने जंगल में जाएंगे, थोड़ा सा मंगल करेंगे, वेट किया जा रहा है। 4 वर्सेस 1 की सिचुएशन बन सकती है। दोबारा यहाँ पर हमारे छोटा शकील को पकड़ा जा सकता है। टर्रेट के अंदर टर्रेट डाइव की क्या की जाएगी? मुझे लगता है टर्रेट डाइव की जाएगी। छोटे शकील को निकलना चाहिए, टर्रेट के लिए वेट नहीं करना चाहिए। पीछे से बेन अल्टीमेट यूज करना चाहेंगे, क्या के लेने में कामयाब हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। इसी के साथ परफेक्ट टाइमिंग हमारे डिगी की और इसी के साथ किल सिक्योर करने में पूरी कोशिश है। डेफिनेटली एक किल मिल चुकी है, सेकंड किल की सरकार थी बट नहीं मिलेगी। सेकंड किल भी मिल चुकी है। यहाँ पर ब्रूनो को भी एक किल मिली बट उन्हें एक सिंगल किल के साथ काम चलाना पड़ेगा। और यूनिकॉर्न यहाँ पर आए थे अपने टीम को सपोर्ट करने, वो सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। यूनिकॉर्न की भी जान यहाँ पर फंस सकती थी। ड्रैगन यहाँ पर आ चुके हैं। ड्रैगन कहते हैं हम नहीं जाने देंगे, ये यूनिकॉर्न हमारा है, इसको लेके जाएंगे हम घर। और इसी के साथ यूनिकॉर्न की मृत्यु हो चुकी है। डोमिनेशन कंप्लीटली देखने को मिल रही है अंडरडॉग की तरफ से। पहला टर्रेट जा चुका है, दूसरा टर्रेट ऑलमोस्ट यहाँ पर ले चुके हैं और वो भी सिर्फ 4 मिनट के अंदर है। तो आप देख रहे हैं जो डोमिनेशन है, डिसाइड करके आए कि इस मैच को हम ऑलरेडी डोमिनेट करेंगे और उसको डोमिनेशन को बरकरार रखेंगे और इस मैच को किसी भी कीमत पे जीत के ही जाएंगे।
जो बिल्कुल अभी के लिए तो वही दर्शा रहे हैं, लेकिन उससे पहले ना यार थोड़ा सा मैं आंकड़े भी देखता हूँ, कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैं ये भी चीज देखता हूँ कि संभावनाएं जो है वो क्या बनती है। जैसे मैंने बताया कि संभावना ऐसी बनती हुई नजर आ रही थी, समीकरण ऐसे बनते हुए नजर आ रहे थे कि पहला ब्लड, पहला खून, जीत आपकी। लेकिन समीकरण ऐसे भी बनते आ रहे हैं, हमने जब से लेडीज के जो मैचेस है वो देखना स्टार्ट किया है कि रेड साइड की तरफ जो बैठे होते हैं ना उनका पलड़ा भारी रहता है। हमने ज्यादातर देखे हैं कि जो हमारे बॉयज के मैचेस होते हैं उनमें ज्यादातर ब्लू साइड जीतती है, लेकिन गर्ल्स में थोड़ा सा उल्टा देखने को मिल रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। और आप देखें, देखते ही देखते एक अच्छा टीम फाइट का आगाज जरूर हुआ था और 8 किल निकाल के जा चुके हैं अंडरडॉग राइस। और राइस वो करते हुए वो एक बार फिर से चमकते हुए भी काफी कम एचपी है, उनको मारा जाएगा पता है। यहाँ पे ड्रैगन ने अपने जहर जो है फैला दिए थे, उनके जो दांत थे, उनके जो तित थे वो उनके फंस चुके थे और वो धीरे धीरे करके जहर ने अपना काम कर दिया और एक किल जो है उन्होंने निकाल लिया। और देखते ही देखते चलिए मिड का टावर भी चला जाएगा। डिवीजन की तरफ चले तो माना बूट चलिए जूसिन करते हुए जरूर, जूसिन माना बहुत खाते हैं और उनका जो दूसरा जो आइटम्स बना है उसके ऊपर भी देखे तो वो भी कहीं ना कहीं माना के लिए उन्होंने जरूर लिया है। हॉस्टलों के साथ जाना चाहते हैं ब्रूनो। चलिए सबसे पहले ही वो अपने आप को एचपी दिलाने की तरफ प्राधान्य देना चाहते हैं। लेकिन अब दूसरी साइड देखें, सिरेन वो काफी मजबूत स्थिति में यहाँ पे निकल के आने वाले हैं क्योंकि उन्होंने कोरिजन बना लिया है, उसके साथ साथ उन्होंने बना लिया है स्काई स्पीयर्स भी। स्काई स्पीयर्स के उनके स्टैक्स बढ़ते हुए जरूर दिखेंगे क्योंकि आप देखें तो डोमिनेट करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, डोमिनेट करना ड्रैगन ने स्टार्ट कर दिया है। इस बार उनके पास है इक्सिया, तो इक्सिया के साथ वो कितना कमाल करेंगे वो देखना जरूर रहेगा। और देखते देखते क्या ड्रैगन की इस बार मृत्यु कंफर्म है, लेकिन नहीं, ड्रैगन की काफी कम एचपी थी, अपने आप को रीगेन किया वहां पे और उसी के साथ 4 लोग इकट्ठा हो चुके हैं। वापस वो रणनीति की तरफ आते हुए दिख रहे हैं, टीम इकट्ठा जल्दी हो जाती है। परिभ्रमण इस बार यहाँ पे देखना पड़ेगा कि अंडरडॉग का जो है वो ज्यादा तेजी के साथ आता हुआ दिख रहा है। आप देखिए अकेले यहाँ पे गिरने की पूरी कोशिश चली है, लेकिन पेनल्टी जोन का एक बखूबी इस्तेमाल कुछ और ही मंजूर था इक्सिया को। अच्छी कोशिश थी, अच्छा अप्रोच था, लेकिन किल दे बैठेंगे वहां पे टेरिस्ला आर्मी। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं सैम आप। यहाँ पर बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है डिकी के एंट्री की वजह से। डिकी यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है यार, बार बार कोई भी अंदर जाता है। बेलरी की बात कर लो या फिर आप हमारे टेरिस्ला की बात कर लो, आप अंदर जा रहे हो, बाहर आने का मौका ही नहीं मिल पा रहा है। ड्रैगन यहाँ पर 9 लेवल का हो चुका है, लेवल डिफरेंस बहुत बहुत ज्यादा हो चुका है और मुझे लगता है यहाँ पर बनने की संभावना है किसी के साथ छोटा शकील को फिर से मारा जाएगा, धराशायी किया जाएगा। बेलरिक ने अपनी जड़ों का इस्तेमाल किया था, पकड़ना चाहते थे बट उनकी जड़ें अभी खो चुकी हैं कमजोर, उनकी जड़ों में उतना दम ज्यादा नहीं रह गया, दमकम नहीं बचा। लेवरेज यहाँ पर पकड़ा जाएगा, डिकी ने ट्रैप किया, लेवरेज यहाँ पर मारे जा चुके हैं। अनस्टॉपेबल के साथ हमारी इक्सिया अच्छा खासा परफॉर्मेंस देती हुई 3-14 का स्कोर हो चुका है यार। ओवरऑल टर्रेट्स की बात करें ना तो 4 टर्रेट्स की एडवांटेज मिल चुकी है, 11 किल्स की लीड है। गोल्ड डिफरेंस की बात करें तो ऑलमोस्ट 7000 गोल्ड की लीड है, जो बहुत बहुत ज्यादा मायने रखती है। और ये सब हुआ है सिर्फ 7 मिनट के अंदर, बहुत लंबा टाइम नहीं हुआ है, कोई 12-15 मिनट के गेम नहीं हुए, सिर्फ 7 मिनट के अंदर इतना ज्यादा एडवांटेज ले चुकी है। और ये मैच मेरे अकॉर्डिंग ऑलरेडी अंडरडॉग्स के घर में जा चुका है और यहाँ से वापसी बहुत बहुत मुश्किल होने वाली है टीम 9 मफिन्स के लिए। तीसरा टर्टल भी सिक्योर करते हुए जो अभी लॉर्ड आएंगे यानी शिव शंभू आएंगे, वो पूरे 9-9.5 मिनट के पास आएंगे और मुझे लगता है शिव शंभू के साथ ही इस मैच को खत्म करने की कोशिश की जाएगी। ऐसे जी बिल्कुल, उनके पास पूरा मौका है, उनके पास पूरे यहाँ पे समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, बस उनको उसका फायदा उठाना है। लेकिन यहाँ पे जो दोनों टीम से हमने 2 मैच में लगातार देखा कि उनके पास वो क्षमता रहती है, वो डिफेंस करना जानते हैं, वो गलती ये नहीं करते हैं कि एक आध प्लेयर गवा दे। देखिए यहाँ पे समीकरण बन रहे थे, वो निकाल सकते थे यहाँ पे बेलरिक को, लेकिन तुरंत बैकअप आ गया, बचा के अपने साथी मित्रों को लाया गया है क्योंकि पता है इनको कि जब लॉर्ड अवतरित होते हैं, जब लॉर्ड इनके ऊपर मार्च करते हैं तो कहीं ना कहीं पूरी टीम तैनात होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले अभी उनको समय है आने में, तो तब तक देखें मिड लेन में, मध्यम लेन में एक प्रहार होता हुआ जरूर दिख रहा है। बेलरिक जो है अपनी मौत को भेज जरूर सकते हैं, लेकिन चलिए वेंजेंस की ताकत से वो बच के जरूर आए हैं। उन्होंने यहाँ पे दाव पे उल्टा खेल दिया था कि आपका डैमेज आपके पास, तो एक तरह से अच्छा मूव उनकी तरफ से। दूसरी तरफ आप यहाँ पे देखें टेरिस्ला, वो भी पीछे हटने के लिए मजबूर हो रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि जब टीम एक साथ यहाँ से हमला कर देगी तो काफी मुसीबत होगी। और दोनों टीम मिड लेन में है, एक्सिया का अल्टीमेट यहाँ पे जरूर आएगा और उनके दायरे में फंसेंगे तो दिक्कत तो होने वाली है। डेडली केज का इस्तेमाल जरूर हुआ था बैंक की तरफ से, शार्क को छोड़ा गया था, लेकिन मिनियन वेव को थोड़ा सा क्लियर अप करने के लिए इनको पता है कि मिनियंस को जितना हो सकता है दूर रखें। और देखते ही देखते चलिए बॉटम लेन में एक टावर धराशायी हो चुका है। अब देखते ही देखते अब चलिए वो आ रहा है कि आपका जंगल भी हमारा होगा, हमारे जंगल भी हमारा, आपका जंगल भी हमारा।
ये वाली सिचुएशन अब यहाँ पे बनती हुई जरूर दिख रही है। हालांकि देवियां ज्यादातर ये करती हैं कि आपका पैसा भी मेरा, मेरा पैसा भी मेरा, लेकिन आज यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा चल रहा है। आज आरवी ये कह रहे हैं आपका जंगल भी मेरा और मेरा जंगल भी मेरा। बिल्कुल बिल्कुल सही है सम। यहाँ पर डोमिनेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है। जो हमारी 9 मफिन्स है बहुत ज़्यादा अंडर फार्म हो चुके हैं। उनका मनोबल टूट गया यार, टू बी ऑनेस्ट। उनका जो मनोबल था वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ चुका है। इतनी बार मार खाने के बाद ओवरऑल टीम्स की बात करें, छोटा शकील को 5 बार मारा गया, जो बहुत बड़ी बात है। मार्क्समैन को यहाँ पर बचा नहीं पा रहे हैं। और 1 वर्सेस 1 की फाइट में यहाँ पर जो ड्रैगन अंदर आए, अच्छा खासा डैमेज दिया, लेवरेज को पकड़ना चाहते हैं। तो फाइनली एक किल यहाँ पर मिलेगी पॉइंट एचपी के साथ। यहाँ पर शट डाउन कर दिया गया हमारे ब्लैक ड्रैगन को। तो इसी शटडाउन के साथ जो थोड़ा सा गोल डिफरेंस है वो कम, उसमें थोड़ा सा इजाफा मिलेगा, थोड़ी सी यहाँ पर बढ़ोतरी मिलेगी टीम 9 मफिन्स को। बट इसी के साथ इसी बीच में जो हमारे एक्सबॉक्स भैया थे वो चोरी चुपके आरती अर्चना कर रहे थे हमारे शिव शंभू की। शिव शंभू को यहाँ पर अवतरित किया जाएगा और मुझे लगता है जो शिव शंभू आएंगे वो शायद मिड लेन की तरफ से आएंगे और यहाँ पर अपना जलवा दिखाएंगे। लास्ट मैच में क्या हुआ था कि जो हमारा पहला लॉर्ड आया था वहां पर 9 मफिन्स के अपोनेंट में अंडरडॉग्स के ऑलमोस्ट 6 से 7 टर्रेट्स बचे थे। तो 9 मफिन्स ने वहां पे टर्रेट्स निकाले थे। बट इस बार की सिचुएशन टोटली बदली जा चुकी है, सिर्फ इनहिबिटर टर्रेट्स बचे हैं। तो शायद मुझे लगता है कि इस लॉर्ड के साथ इस मैच को यहाँ समाप्त किया जा सकता है। अंडरडॉग्स के पास 2 चार्जिंग फ्रंट चार्जिंग हीरोज हैं। उनके पास एक्सबॉग है, ड्रैगन के साथ डिगी है जो बड़े प्यार से ओपोनेंट के सारे क्राउड कंट्रोल को काउंटर कर सकता है। और शायद ये चीज यहाँ पर दिक्कत करेगी। यहाँ पर रिमी थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए पकड़ना चाहते हैं, कोशिश करना चाहते हैं, अपने ट्रैप में फंसाना चाहते हैं। अपने बॉम्ब्स को आगे फेंक दिया गया। ड्रैगन यहाँ पर ड्रैगन फॉर्म में आ गए, अंदर आकर टर्रेट डाइव की पूरी कोशिश की जा रही है। जबकि 9 मफिन्स की तरफ से सिर्फ ये कोशिश की जा रही है। यहाँ पर टेरिस लाइफ फ्लिकर अल्टीमेट यूज किया, डैमेज अच्छा पीछे से बेन का अल्टीमेट है, पकड़ना चाहते थे बट गॉड लाइक मिलता हुआ हमारी इक्शिया को। इक्शिया के साथ यहाँ पर एक्सबॉक अंदर आए, टर्रेट डाइव किया, इंसेनिटी का यूज किया बट डैमेज इतना ज्यादा सफिशिएंट नहीं था, किल लेने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। बट इसी के साथ मैच यहाँ पर समाप्ति की और बढ़ता हुआ लगातार बेस को टारगेट किया जा रहा है कंटिन्यूअसली। लेजेंडरी के साथ इक्शिया एक और किल बटोरती और मैच को यहाँ पर समाप्त कर दिया गया है। इक्शिया ने यहाँ पर लास्ट शॉट लिया और ओपोनेंट का जो क्रिस्टल था उसे तोड़ के इस मैच में जो विजय का बिगुल बजा है वो बहुत ज्यादा काबिल तारीफ था। जो ओवरऑल मैच था वो 19-5 के स्कोर पे खत्म हुआ है। 11 मिनट के अंदर मैच खत्म हो गया है। 9-0-2 का स्कोर है इक्शिया का, 6-0-10 का स्कोर है हमारे एक्सबॉक्स का, जो बहुत ज्यादा काबिल तारीफ है सब। जो बिल्कुल काफी अच्छी तरीके से खेलते हुए देखे। जैसे इक्शिया का पिक हुआ था तो मैंने आपको उसी समय बोला कि यार काफी कमाल का पिक है और इनके दायरे में कितने लोग फंसते हैं उसके ऊपर भी निर्भर करता है। एंड चलिए समीकरण तो जरूर बन रहे हैं। फर्स्ट ब्लड का समीकरण ना सही, लेकिन यहाँ पे रेड साइड का समीकरण बनता हुआ जरूर नजर आ रहा है कि रेड साइड में टीम जाएगी तो रेड साइड की टीम जीतती हुई नजर भी आएगी। लेकिन इक्शिया की तारीफ करनी पड़ेगी वहां पे भी कि आप उनका टरेट डैमेज देखें। टरेट पुश करने के अंदर उन्होंने 72% का योगदान दिया है और वहां पे जुसिन ने जो है 100% का योगदान जरूर दिया था, लेकिन उनका योगदान जो है इस मैच के अंदर काम आ नहीं पाया। यूनिकॉर्न जो है वो सफलता दिला नहीं पाया अपनी टीम को। हालांकि उनकी पूरी टीम को मुसीबत का सामना करना पड़ा है जरूर। अच्छी खासी गेम प्ले के साथ अभी आप देखें तो अब स्कोर जहां पहुंचा है 2-1 की तरफ। यहाँ पे 2 पॉइंट लेके जा चुके हैं हमारे अंडरडॉग राइज। वो चमक रहे हैं, वो महक रहे हैं। तो उनके पास 2 अंक आ चुके हैं। 9 मफिन्स वापस 1 पॉइंट के ऊपर जा चुके हैं। तराजू जो है वो वापस ऊपर नीचे हो चुका है। अब बारी ये है कि क्या अगले मैच में तराजू जो है वो वापस बराबरी पे जाएगा या फिर हो सकता है कि एक विजय रथ के साथ आगे बढ़ते हुए अंडरडॉग राइज जो है अपने आप को पहुंचा देंगे फिनाले के अंदर। देखिए अभी जो ये मैच है ना, जो हमारा 4th मैच होने वाला होगा ना, ये सिर्फ रणभूमि का मैच नहीं रह जाएगा, इसमें मनोभूमि में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बन जाएगी। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो हमारा 3rd मैच में था उसमें पता था यार अगर हार भी गए ना तो एक मौका मिलेगा। बट अभी जो 4th मैच है ना, 9 मफिन्स अगर यहाँ से हारती है तो उनका घर का टिकट पक्का है। तो अभी उनके पास प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, वो गलतियां करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जबकि दूसरी तरफ अंडरडॉग्स के पास थोड़ा सा एडवांटेज रहेगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ज़्यादा रहेगा। तो मुझे लगता है कि अंडरडॉग्स के पास यहाँ पर ज़्यादा जीतने के चांसेस है एज कम्पेयर टू 9 मफिन्स। बट जो हमारा मोबा लेजेंड्स 5v5 है, अनिश्चितताओं का खेल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। परिवर्तन संसार का नियम है। इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और फटाफट आएंगे हमारे 4th मैच के साथ, जहां पर अंडरडॉग्स कोशिश करेंगे अपना 3rd पॉइंट क्लेम करने का और जो 9 मफिन्स है वो कोशिश करेंगे अपना पॉइंट डिफेंड करने का।
her, I would sail across the cosmic sea to the end of time. I'm the boss. For her, I would sail across the cosmic sea to the end of time. वेलकम बैक देवियर सज्जनों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। स्वागत है आपका एक और बार, और हम वापस आ चुके हैं इस बार फोर्थ मुकाबले के लिए। आरवी चलिए, एक एक अंक लेके गए, फिर दूसरा अंक लेके गए यहाँ पे अंडरडॉग राइस। हमने देखा कि आज लाल रंग जो है
तो काफी जचना है टीम्स को। तो क्या आज एक बार फिर अब लाल रंग की तरफ से इस बार जाने वाले हैं 9 मफिन्स, तो क्या इस बार रेड टीम वापस जीतती हुई नजर आएगी, या तो फिर जो है कि जैसे आपने लास्ट बार हमने बात की, जैसे आपने बताया बखूबी आपने एक्सप्लेन किया कि अब जो है कहीं ना कहीं ये रणभूमि के साथ साथ मनोभूमि का खेल भी बनता हुआ जरूर नजर आएगा। आप देखें तो मनोबल काफी तेज है इस बार 9 मफिन्स का। मनोबल टूटा है थोड़ा सा यहाँ पे, माफ करना, मनोबल तेज है थोड़ा सा यहाँ पे अंडरडॉग राइस का, और मनोबल टूटा है थोड़ा सा यहाँ पे 9 मफिन्स का। तो वो देखना रहेगा कि किस तरह से फिर वो कमबैक करते हैं, और वापस अगर ये मैच 9 मफिन्स जीत के जाते हैं आरवी, तो तराजू हो जाएगा वापस बराबरी पर। फिर से भाई बराबर ही हो जाएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक है, तो वहां से फिर ना चीजें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएंगी। और आपका जो आइडिया है रेड साइड वाली मैच जीत रही है, दोबारा ऐसा होता है कि रेड साइड वाली ये मैच जीत जाती है, फिर तो अगली बार दोबारा वो अंडरडॉग से रेड साइड आ जाएंगे, तो मतलब वो दोबारा जीत जाएंगे। तो इनडायरेक्टली आप ये कहना चाहते हो कि अंडरडॉग्स मैच जीत चुके हैं, वो नेक्स्ट स्टेज पे पहुंचने वाले हैं, या फिर आप कुछ और कहना चाहते हो? ये एक परी जो समझो समीकरण बन रहे हैं, ये जो वातावरण है वो कह रहा है एक तरह से, जो एक तरह से कायनात जो है ना वो ऐसे कह रही है कि बन रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि मैं रॉन्ग हो जाऊं एंड इस मैच में ब्लू टीम जीतती हुई नजर आ जाए अरवी। बिल्कुल सही। और हम दर्शकों को बताना चाहेंगे गाइस, ये डबल एलिमिनेशन स्टेज है, तो अगर यहाँ पर 9 मफिन्स हारती है या फिर अंडरडॉग्स हारते हैं, तो उनके पास एक और मौका रहेगा, एक और चांस रहेगा अपने आप को बचाने का और फाइनल्स में लेके जाने का। तो टेंशन वाली बात नहीं है। बट हाँ यार, अगर आप यहाँ से जीत जाओगे तो आपको एक कम मैच खेलना पड़ेगा, एक टीम के साथ कम फाइट करनी पड़ेगी फाइनल्स में जाने के लिए। बट यहाँ पर हारते तो दिक्कत बढ़ सकती है। इसी के साथ हमारा जो मैच है कुछ ही क्षणों में स्टार्ट होने वाला है। एसएम, आप इस बार कौन से प्लेयर या कौन सी टीम की तरफ थोड़ा सा झुकना चाहेंगे? जैसे पिछली बार मुझे था यार रेड वाली जीत, मतलब अंडरडॉग्स जीत जाएंगे। इस बार मैं चाहता हूँ यार 9 मफिन्स जीत जाए, उनमें फाइनल बेस्ट ऑफ 5 में 5th मैच जब होता है ना, बहुत बहुत ज्यादा मजा आता है। मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा खुशी होती है उस चीज को लेके। तो आप भी इस बार रेड साइड की तरफ जा रहे हैं आरवी? हम जा कहीं नहीं रहे, हम यहीं पर हैं, बट हम चाहते हैं कि जीत जाए, क्योंकि मुझे 5th मैच देखना है, बस इसलिए। आप लेकिन ऐसा मत कहिए कि हम एक टीम को फिर भी सपोर्ट कर। फिर भी आबो हवा जो है, वातावरण जो है आपको उसी साइड लेके गया ना, मतलब पूरी कायनात जो है वो चाहती है कि रेड साइड जो है जीते, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं कायनात को कुछ और मंजूर होगा एंड ब्लू कलर जो है इस बार छाता हुआ नजर आएगा। क्योंकि आप देखें तो हमारे आसपास भी ब्लू कलर जो है काफी फैला हुआ है, तो मेरे को लग रहा है कि इस बार थोड़ा सा ब्लू साइड जीतती हुई शायद से नजर आ सकती है। बाकी तो ये एक ऐसा गैस है कि भरोसा नहीं है इस तरह का। तो अंडरडॉग राइज ब्लू साइड में है, अगर वो जीत गए तो फिर यार सफर समाप्त हो जाएगा और भी फिर आज का। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आप जो बार बार कायनात कायनात कह रहे थे ना, उस पर एक डायलॉग है बहुत अच्छा सा, आपने ओम शांति ओम देखी है? हाँ जी बताइए। उसमें शाहरुख खान कहता नहीं है, मैंने उसे इतनी शिद्दत से चाहने की नहीं, पाने की चाहत की है कि जर्रे जर्रे ने मुझे उससे मिलाने की हिदायत की है, ऐसे कुछ है। वाह यहाँ वाह पर वाह वाह। क्या 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 अंडरडॉग राइज की जो चाहत है वो पूरी होगी, या फिर 9 मफिन्स की जो मदद है वो पूरी कायनात करेगी उनको रेड साइड में ले जाकर? वो खैर समय बताएगा, वो समय के ऊपर छोड़ते हैं। तो हम दोनों शायद खैर नहीं है ना, बचा पाएंगे, लेकिन नहीं, उनसे भी ऊपर वाला समय, समय का समय। समय का समय बताएगा। मुझे लगा लेकिन क्या। उससे पहले जैसे आपने बताया कि हिदायत, तो किस टीम को जीतने की हिदायत आप करते हैं आज? मेरे अकॉर्डिंग यार, जैसा मैंने पहले बोला, मुझे 5th मैच देखना है बस। मुझे नहीं फर्क पड़ता अगर यहाँ पर अंडरडॉग्स के पास 1 पॉइंट होता और 9 मफिन्स के पास 2 पॉइंट होता, तो फिर मैं कहता यार अंडरडॉग्स को जिता दो भाई, मुझे 5th मैच देखना है। बट इस बार सिचुएशन अलग है, 9 मफिन्स यहाँ जीत जाती तो मैं खुश होऊंगा, मुझे 5th मैच देखना है। 5th मैच बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहता है यार, किसी भी बेस्ट ऑफ 3 का जो 3rd मैच हो गया, बेस्ट ऑफ 5 का 5th मैच हो गया, बेस्ट ऑफ 7 का 7th मैच हो गया, बहुत ज्यादा मजेदार रहता है। बस मुझे वो चाहिए, बाकी मुझे नहीं फर्क पड़ता आप अंडरडॉग्स जीते 9 मफिन्स जीते, मैं दोनों टीम्स को तहे दिल से सपोर्ट करता हूँ। बट अभी जो मैं चाहता हूँ वो 9 मफिन्स के हक में चाहता हूँ कि वो जीत जाए। क्योंकि आप चाहते हैं कि 5वां मैच की तरफ ये जाए, जो बेस्ट ऑफ 5 का बिल्कुल मुकाबला है। तो 5वां मैच देखने को मिले, पर शायद से इस बार तो अंडरडॉग राइस जो है वो जिस हिसाब से लास्ट टाइम छोड़ा था, वो सोच रहे होंगे कि उसी हिसाब से खत्म किया जाए। तो लग रहा है कि शायद से वो जीत सकते हैं और अपने नाम करते हुए दिख सकते हैं। खैर वे तो समय बताएगा कि कौन जीतेगा। लेकिन जैसे आप चाहते हैं कि 5th मैच के लिए ये मैच जाए, तो बैन एंड पिक की तरफ वापस बढ़ते हैं। एंड कौन से
ऐसे दावेदार हैं जिनके ऊपर आपको थोड़ा-सा ऐसे ट्रस्ट बिल्डअप हो रहा है? जैसे दर्शकों को हमारे ज़्यादातर ट्रस्ट बिल्डअप होता है या आप ऐसे कील के ऊपर, जैसे छोटा-सा कील उनका आईजीएन है, उनका रियल नेम आपको अभी पता नहीं है क्या है, लेकिन उनका जो गेम प्ले है, वो उनके रियल नेम को साइड में कर देने वाला है, क्योंकि आप उनका गेम प्ले जब देखेंगे तो आप उनका नेम पूछने के लिए भी नहीं रह पाएँगे। इस तरह का गेम प्ले उनकी तरफ से आता ज़रूर है, लेकिन पिछले गेम में थोड़ा-सा टीम में उथल-पुथल थोड़ा-सा हुआ तो उसकी वजह से थोड़ा-सा रुके ज़रूर। लेकिन इस बार में आपके हिसाब से कौन से ऐसे दावेदार हीरोज़ निकल के आए, या फिर कौन-सी ऐसी लेडीज़ जो है या फिर गर्ल्स जो हैं वो अपना जलवा बिखेरते हुए नज़र आएँगे? देखिए लास्ट मैच में छोटा शकील की पिक अच्छी थी, ब्रूनो एक अच्छा हीरो था, डैमेज देने की क्षमता रखता था, बट जो गलती हुई नाइन मफिन्स की तरफ से वो ये हुआ कि वो छोटा शकील को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, उनकी जान बचा नहीं पाए। वो पूरे मैच में ऑलमोस्ट 5 से 6 बार मरे थे, और एक मार्क्समैन का इतनी बार मरना ये दर्शाता है कि आपकी टीम प्रॉपरली या तो रोटेट नहीं कर पा रही है या तो अपने मार्क्समैन को डिफेंड नहीं कर पा रही है, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत थी। जबकि दूसरी तरफ क्या था, अंडरडॉग्स का जो हमारा उल्लू था ना, वो कंटिन्यूसली इक्शिया के साथ चिपका हुआ था, और जो रोटेशन और प्रोटेक्शन उसकी तरफ से मिल रही थी, उसकी टीम की तरफ से इक्शिया को मिल रही थी, वो बहुत ज्यादा काबिले तारीफ थे। एंड उसकी वजह से इक्शिया ने 9-0 का स्कोर मारा था, जो अलग ही लेवल पे था यार, अनस्टॉपेबल चल रही थी, लेजेंडरी चल रही थी वो बंदी। तो यहां पर इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको मैच जीतना है तो करंट सिनारियो में ओपोनेंट के मार्क्समैन को पकड़ लो यार। ओपोनेंट का मार्क्समैन और मेज आपको मिल गई ना, तो मैच आपका हो जाएगा। तो यहां पर नाइन मफिन्स को इस चीज पे फोकस करना पड़ेगा कि ओपोनेंट का मार्क्समैन और मेज पे थोड़ा सा ध्यान रख के उसको बार बार टारगेट किया जाए और किल सिक्योर की जाए। दोनों टीम्स के पिक हो चुके हैं, अंडरडॉग्स ने हमारे जो बैन हो चुके हैं, अंडरडॉग्स ने बैन किया हमारा फीवियस, और साथ में हमारा जो चमगादड़ था इसी के साथ ब्रूडी को, जबकि नाइन मफिस ने बैन किया जूक्शिन को, मेटिल्डा को और जॉय को। फाइनली अंडरडॉग्स को दोबारा से एक बार और मिल चुका है हमारा एक्स बॉग। एक और चीज कहना चाहूंगा एक्सएम, फर्स्ट मैच में एक्स बॉग था हमारे अंडरडॉग्स के पास, वो जीत गए थे। सेकंड मैच में था नाइन मफिन्स के पास, वो जीत गए थे। थर्ड मैच में था अंडरडॉग्स के पास, फिर से वो जीत गए थे। तो क्या दोबारा अंडरडॉग्स एक्स बॉग की जो शक्ति है उसका इस्तेमाल करके मैच जीत पाएंगे? देख रहे हो, समीकरण तो बन रहे हैं, इसलिए बन रहा है, इस बार समीकरण तोड़े जाएगा। लास्ट टाइम समीकरण बन रहे थे कि रेड जीत रहे हैं, एक्सबॉक्स जीत रहा है, तो ये इस बार तराजू इस जगह पे आप पहुंचा है कि तराजू अब ऊपर ही जाने वाला है, अब बराबरी पे नहीं होने वाला है। तो ये ऐसे संकेत भी दे रहा है कि अब तो देखो कायनात के समीकरण बराबरी पे आ चुके हैं, तो अब दूसरे जो समीकरण है वो कह रहे हैं कि अब ऊपर जाएंगे, अब सीधा रॉकेट फ्लाई करेगा। तो मे भी हो सकता है कि नाइन मफिल्स के फैंस को थोड़ा सा दुख का सामना करना पड़े, लेकिन कहा भी वो जाता है कि भाई 1% की जो उम्मीद होती है ना, उसके ऊपर भी दुनिया कायम रहती है। लेकिन यहाँ पे तो इनके पास ज्यादा उम्मीद है, इनके पास डू और डाई की सिचुएशन जरूर है। लेकिन कहा जाता है कि जब कोई भी अपने अस्तित्व के लिए, जब अपने वर्चस्व के लिए लड़ता है, तो एड़ी चोटी का यहाँ पे जोर लगाने में वो कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। एड़ी चोटी का जोर जो है लगा देते हुए दिखते हैं। और आप देखें इस बार लूनक्स का आगमन भी होता हुआ दिख रहा है। लूनक्स जो है मेल्ट डाउन करने की ताकत रखते हैं टैंकी हीरोज को। तो क्या लगता है कि लूनक्स एंड कार्मिला को भी मारना थोड़ा सा काफी टफ हो जाता है। एंड डिगी वापस से देखने को मिल रहे हैं, एंड एक्सिया तो कहीं ना कहीं पिछले मैच में जो हीरोज के ऊपर उन्होंने अपना दावा बोला था, उसी हीरोज के साथ वो कायम रहना चाहते हैं। अब लास्ट मैच में क्या हुआ था, डिगी के अगेंस्ट में बेलरिक था, और मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि बेलरिक थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है डिगी के अगेंस्ट में, बट इस बार कार्मिला है, और कार्मिला अच्छा खासा एक तरह से कह लो कि बराबरी का मुकाबला देगी डिगी को। और क्लिंट यहाँ पर बड़े प्यार से स्केप करने की क्षमता रखते हैं, जो उनकी सेकंड स्किल है वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहती है, स्पेशली ट्रैप से बचने में। तो यहाँ पर इस बार मुझे लगता है कि नाइन मफिन्स का जो गोल्ड लेन रहेगा वो थोड़ा सा अपने आप को लास्ट मैच के कंपैरिजन में अच्छा खासा प्रदर्शित करेगा, अच्छा खासा दिखा सकता है। इसी के साथ आपने बात की हमारी लूनक्स दीदी की, तो लूनक्स दीदी यहाँ पर एक अच्छी खासी शील्ड तोड़ने की क्षमता रखती है एक्सबॉक्स की। लूनक्स ने अपनी बैड अल्टीमेट का यूज किया, 2 शॉट और जो हमारा एक्सबॉक्स है उसकी पूरी की पूरी शील्ड खत्म हो जाती है। तो एक्सबॉक्स को यहाँ अपनी जान बचा के रखनी पड़ेगी, अपने आप को थोड़ा सा छुपा के रखना पड़ेगा लूनक्स से। इसी के साथ बाकी बैन हमें देखने को मिल सकते हैं। ड्रैगन बैन हो चुका है, लास्ट मैच में बहुत दिक्कत कर रहा था नाइन मफिन्स को। लिलिया दिक्कत कर रही थी, लिलिया भी बैन हो चुकी है। इसी के साथ सीसी भी बैन हो चुका है, और रॉजर को फिर से बैन कर दिया अंडरडॉग्स ने। शायद यहां पर रॉजर अंडरडॉग्स को लगता है कि रॉजर कैन बी अ गुड पिक फॉर द साइड ऑफ नाइन मफिन्स, पर देखते हैं बाकी क्या किस्मत को मंजूर होता है। और नाइन मफिन्स और अंडरडॉग्स अपने बाकी 2 पेंडिंग हीरोज के साथ जाते हैं। गेस करना चाहेंगे कौन से 2 हीरोज होंगे यहाँ पर? देखिए अभी हीरोज में नाइन मफिन्स की तरफ से कार्मिला को किस तरह से यूज करते हैं, वो रोमिंग के लिए जाते हैं या फिर एक्सपी लेन के लिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक एक्सपी लेनर या तो फिर एक रोमर जो है नाइन मफिन्स की तरफ से देखने को जरूर मिलने वाला है। और उनका जंगलर भी आना बाकी है, तो जंगलर में किसके साथ जाना चाहते हैं
ओके चलिए, यहाँ पे एस्मेल्डा भी आया है, तो यही सवाल वापस निकल के आएंगे कि एस्मेल्डा एक्सपी लेन में जाएंगे और हो सकता एस्मेल्डा एक्सपी लेन की तरफ मे भी जाते हुए दिखेंगे। एंड यहाँ पे कार्मिला जो है वो रोमर्स का रोल अदा करते हुए दिखेंगे, तो एक हाइपर उनका आना बाकी रहेगा। तो कौन सा हाइपर आएगा थोड़े ही समय में देखेंगे। और दूसरी साइड जाए तो कहीं ना कहीं अंडरडॉग राइज जो है वो एक्सबॉक को एज अ मार्क्समैन यूज करते हुए दिख सकता, एज अ हाइपर यूज करते हुए दिख सकते हैं। और मार्क्समैन में तो उनके पास एक्सिया है ही, वो कमाल का प्रदर्शन दिखाते जरूर हैं। और एक बार चलिए, उनके पास उल्लू जरूर आ चुका है, तो उल्लू की ताकत कितनी तेज रहेगी वो भी देखते हैं। और उसके बाद जैसे ड्रैगन तो जा चुका है, तो ड्रैगन के अलावा उनके जहन में कौन से चल रहे हैं, क्या कुछ अलग हाइपर के साथ जाके एक्सबॉक को हो सकता है कि वो एक्सपीलियन की तरफ भेज दे, लेकिन नहीं, एक्सबॉक के साथ वो स्टिक करना चाहेंगे। पर अभी तो ऐसे ऑप्शन निकल के आ रहे हैं। यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे खलीद जो है वो आ चुके हैं, तो खलीद कहीं ना कहीं एक्सपी लेन की दावेदारी ज्यादा पेश करते हुए दिखेंगे, क्योंकि एक्सपी लेन में करंट मेटा में खलीद कुछ ज्यादा चल रहे हैं आरबी। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं, यहाँ पर खलीद का दबदबा रहेगा। बट यहाँ पर जो हमारी एस्मेरल्डा दीदी आई है ना, इनका बहुत बड़ा फायदा होने वाला है टीम 9 मफिन्स को। उसका रीज़न ये है, जब डीके अपना अल्टीमेट यूज़ करता है तो शील्ड देता है, ठीक है। एंड वो शील्ड हमारी एस्मा दीदी बड़े प्यार से चुरा सकती हैं, तो ये दिक्कत हो जाएगी। एंड उसका फायदा 9 मफिन्स को मिलेगा। अभी देखते हैं 9 मफिन की तरफ से जंगलर का रोल कौन खेलने वाला है। जंगल यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। और ओपोनेंट का जो जंगल है यार, शायद मेरे हिसाब से जुलूक्स है, ऐसा कुछ नाम है इसका, मैं भूल गया हूँ, मुझे नहीं याद है, ठीक है। हाँ हाँ जी। हाँ, इसको कल मैं देख रहा था तो मेरे हिसाब से भी मेरे लिए नया निकल के आया था। मैं इसको उल्लूस बुला रहा था, डी किंग इसको अलियस बुला रहे थे, तो हम दोनों में से किसी एक के ऊपर ऑलस सेलेक्ट कर देंगे। ऑलस हाँ ऑलस ऑलस ऑलस। तो इसी के साथ सुयो आ चुके हैं यार, तो सुयो का डैमेज मिड अर्ली गेम से बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। तो मुझे लगता है इस बार जो एडवांटेज है वो 9 मफिन्स के पास है, और उनके जीतने के चांसेस ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू द अंडरडॉग्स। बट सारी चीजें अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएंगी, पहुंच जाएंगे हम लैंड ऑफ डॉन में, और दोनों टीम अपना वर्चस्व दिखाएंगी, अपना जो उनका अस्तित्व है उसको बचाने के लिए एक मैच खेलेंगी। स्पेशली 9 मफिन्स का अस्तित्व है, क्योंकि उनके लिए डू और डाई। अंडरडॉग के पास तो एक और मौका, हार भी जाते हैं तो 5th मैच खेलने का चांस है, बट 9 मफिन्स के लिए ऑप्शंस नहीं है भाई। उनके लिए ऑप्शन नहीं करके नहीं आते। लेकिन सुयो देखिए, हम कितनी देर से बात कर रहे थे, सुयो काफी कम देखने को मिलता है, लेकिन इस बार आया है 9 मफिन्स। कायनात आपके साथ हो ना हो, लेकिन हम चाहते हैं हाँ, कि आप 5th राउंड के लिए लेके जाए अपनी टीम को, ताकि थोड़ा सा और मजा आए। लेकिन 5th राउंड में फिर जीतेगा वही जो हकदार होगा। यहाँ पे वो थोड़ा सा कहते हैं राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, लेकिन हम यहाँ पे कहते हैं कि देवियों की देवी देवी नहीं बनेगी, देवी वो बनेगी जो हकदार होगी। थोड़ा सा कई लोगों को समझने के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन इसी बात में वो बताएं कि यहाँ पे टाइटल वो लेके जाएगा, यहाँ पे थ्रोन के ऊपर या तो फिर क्वीन वो बनेगी जो हकदार रहने वाली है। चलिए, खेतीबाड़ी की आरवी शुरुआत हो चुकी है, ज्यादा समय का विलंब नहीं करेंगे, सीधा आएंगे आपके पास और पूछना चाहेंगे आपके कुछ चहीते सवाल। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर जो मेरा सबसे पहला सवाल है कि फर्स्ट ब्लड कौन लेके जाएगा टॉप लेन पे। यहाँ पर एस्मा को बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, और देखो लेवरेज की एचपी लेस देन हाफ रह गई थी। बट सेम चीज़ यहाँ पर खलीद को भी बहुत ज़्यादा इशू हुआ था, उनकी एचपी भी लेस देन हाफ ही बची थी। तो दोनों एक दूसरे का अच्छा खासा कॉम्पिटिशन, अच्छा खासा डैमेज देते हुए। बॉट लेन की बात करना चाहेंगे, जो हमारे स्नाइप्स थे उनको बहुत ज़्यादा डैमेज मिला है। कार्मेला दीदी को रिकॉल करना पड़ेगा, एचपी भर के वापस आनी पड़ेगी। टॉप लेन में खलीद के पास सबसे बड़ा एडवांटेज है भाई, ये अपनी एचपी फुल कर लेगा, क्योंकि एस्मा दीदी ऐसा कुछ कर नहीं सकती है। तो एस्मा दीदी को थोड़ा सा सेफ खेलना पड़ेगा, थोड़ा सा बच के खेलना पड़ेगा, वरना उनकी लंका लगना कंफर्म है। इसी के साथ जो खलीद का डोमिनेशन धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बॉट लेन पे यहाँ पर फिर से हमें थोड़ी सी कशमकश दिखाई दे रही है दोनों टीम्स के बीच में। खलीद सॉरी नॉट खलीद, यहाँ पर हमारी जो कार्मिला दीदी वापस आ चुके हैं, फिर से पकड़ना चाहते हैं। अच्छा खासा डैमेज है, खलीद की भी बहुत ज्यादा लो हो चुकी है। ZA यहाँ पर बच के निकल पाएंगे, कोशिश पूरी की जा रही है। एस्मा कंटिन्यूसली उन्हें चेज करे, पॉइंट एचपी के साथ भागने की पूरी कोशिश, और इसी के साथ फर्स्ट ब्लड हमारी एस्मा दीदी ने सिक्योर कर लिया है। 9 मफिन्स को मिल चुका है फर्स्ट ब्लड, और मुझे लगता है इस फर्स्ट ब्लड के आरंभ के साथ वो अपना दबदबा बनाने की कोशिश करेंगे। 9 सेकंड में हमारे पास जो कछुआ महाराज है वो भी अवतरित हो जाएंगे। देखते हैं इस बार का टर्टल कौन लेके जाएगा, क्या वो 9 मफिन्स होंगे या फिर वो अंडरडॉग्स होंगे। देखते चलिए कछुए महाराज इस बार कौन लेके जाते हैं 9 मफिन्स को। जिस चीज की शुरुआत थी, जैसे हम बोलते हैं कि शुरुआत आपने कर दी है, लेकिन आपको अंततः की तरफ भी लेके जाना पड़ेगा। चलिए, अभी के लिए तो थोड़ा सा कार्मिला को पीछे जरूर हटना पड़ा, लेकिन उनके पास ताकत जरूर रहती है, तो बचने में भी कामयाब हो जाएंगे, ज्यादातर उनको दिक्कत नहीं हुई। लेकिन दूसरी साइड से आप देखें, नेको तैयार है, लास्ट इंफिनिटी का यूज किया जाएगा। एक्सिया उनके साथ यहाँ पे दे रहे हैं, दावा बोल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ चलिए टर्टल गवा दिया है, आपने किल लिया।
लेकिन किस कीमत पे आरवी आपने गवाया है यहाँ पे टर्टल। बिल्कुल बिल्कुल, और शायद मुझे लगता है कि जो हमारे अंडरडॉग थे उस चीज़ से ऑलरेडी अवेयर थे कि वो टर्टल तक नहीं पहुंचते सकते, इसीलिए उन्होंने किल्स पे फोकस करना ज़्यादा प्रेफरेंस रखी और सारे लोग अपनी अपनी लेन्स पे वापस पहुंच चुके हैं। खलीद वापस अपनी लेन में जा रहे हैं। एस्मा दीदी अपना लेन छोड़ के बॉट लेन पे यहाँ पर घूमने क्यों आई है मुझे नहीं समझ आ रहा है। उनकी आवश्यकता नहीं थी, जिसका फायदा डेफिनेटली खलीद को मिलेगा। उनका जो गोल्ड है थोड़ा सा उसमें इजाफा होता हुआ मिलेगा और गोल्ड डिफरेंस यहाँ पर अगर क्रिएट होता है तो एस्मा दीदी की थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, उनसे चीज़ें कंट्रोल करना मुश्किल हो सकता है उनके लिए। इसी के साथ हमारे जो डिगी हैं झाड़ियों में अपने छोटे छोटे बॉम्ब फेंकते हुए ओपोनेंट की चेकिंग करने के लिए चेक करते रहते कि कोई जंगल में कोई एम्बुश करके तो नहीं बैठा है, वेट तो नहीं कर रहा है। पीछे से नेको आ चुकी है, पकड़ा जाएगा। यहाँ पर बड़े प्यार से ट्रैप किया गया। नेको ने यहाँ पर फ्रीज का यूज किया, स्नैप का अल्टीमेट यूज किया। यहाँ पर प्रॉपर डैमेज दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। सुयो यहाँ पर आए थे, पकड़ना चाहते थे, बहुत टाइम रहते उन्हें पता चल गया कि अभी सिचुएशन अनुकूल नहीं है, अभी जो सामान जो स्थिति है वो उनके अनुकूल नहीं है, वो किल लेने के लिए अंदर नहीं घुस सकते। अगर वो अंदर जाते तो शायद उनकी मृत्यु हो जाती। वेट किया जा रहा है, 3 वर्सेस 3 की सिचुएशन यहाँ पर है। इसी के साथ एक्सबॉक यहाँ पर टीज करने की कोशिश कर रहे हैं। एस्मा दीदी कंप्लीटली अपना लेन छोड़ चुकी है और जो मुझे थोड़ी सी चिंताजनक बात लग रही है, अगर आप अपनी लेन ऐसे छोड़ेंगे, हमारे रेत के सौदागर को फार्मिंग करने का मौका देंगे तो आपको अंदर घुस के मारने की क्षमता रखता है। इसी के साथ पकड़ना चाहते थे सूर्य को, हमारे एक्सबॉक ट्रू डैमेज का प्रॉपर इस्तेमाल करना चाहते थे, बट उसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। जो बॉट लेन में है बहुत सारा तनाव हो चुका है एसएम और कोई भी टीम अभी किल लेने में कामयाब नहीं हो पा रही है। एक एक किला पीछे से हुआ पकड़ने जाता है। एक्सबॉक को यहाँ पर वो उनकी शील्ड पे फोकस करे, मुझे लगता है कि वो चाहते हैं उनकी शील्ड फटाफट टूट जाए। इक्शा ने परफेक्ट अल्टीमेट यूज किया। इसी के साथ एक और किल मिलता वो अंडरडॉग्स को। सेकंड किल की तरफ बढ़ना चाहते थे, खलीद यहाँ पर आए, अटैक किया बट डैमेज सफिशिएंट नहीं है। 4 मिनट 2-1 का स्कोर। इसी के साथ एक लॉर्ड मिलता हुआ टीम अंडरडॉग्स को। एसएम चलिए बिल्कुल, उन्होंने देखते ही देखते एक टावर निकाल लिया है और देखते ही देखते किल की आवश्यकता थी तो किल भी निकाल ली है। अब चलिए जा रहे हैं वो सीधा टर्टल के लिए, कछुए महाराज के लिए। कहीं ना कहीं लग रहा है कि टर्टल को आसानी के साथ वो सिक्योर कर लेंगे। और चलिए टर्टल मिल चुका है इस बार उनको, लेकिन क्या किल भी उनको मिलेगा। चलिए रैथ के सौदागर सैंडस्टॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, आगे जाएंगे, यूनिकॉर्न को घेरा जाएगा। एक्सिया एक बार फिर से ताबड़तोड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। एक्सिया को आपने इस तरह से खुला छोड़ दिया तो फिर वो प्रचंड करते हुए, प्रलोभ करते हुए, विलोप करते हुए दिखेंगे, आपकी टीम के ऊपर सर्वनाश करते हुए जरूर दिखेंगे आरवी। डेफिनेटली ऐसे मैन, ये बहुत चिंताजनक बात है स्पेशली 9 मफिन्स के लिए। उनके लिए करो या मरो की सिचुएशन है और ओपोनेंट की जो एक्शिया है वो बार बार लगातार ताबड़तोड़ किल लिए जा रही है। 2-0 का एक स्कोर हो चुका है, अच्छा खासा डैमेज आ रहा है और यहाँ पर जो बचने की संभावना है बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है 9 मफिन्स पे। उनको थोड़ा सा सेफ खेलना पड़ेगा, थोड़ी सी अपनी सिचुएशन को इंप्रूव करना पड़ेगा। बॉट लेन से उन्होंने टर्रेट निकाल लिया। अब स्ट्रैटेजी देखिए अंडरडॉग्स की, बॉट लेन से एक टर्रेट लिया, पूरी की पूरी टीम झुंड बना के टॉप लेन में पहुंच चुकी है टॉप लेन का टर्रेट निकालने के लिए। एंड इसके बाद शायद ये मिड लेन की तरफ जाएंगे। कार्मिला यहाँ पर अंदर आना चाहती थी, विजन देना चाहते थे, बट एक्सबॉक ने बर्निंग डैमेज या पीछे हटा दिया। इसी के साथ यहाँ पर खलीद आए, अपना रेत का स्टॉर्म यानी सैंड स्टॉर्म का यूज किया, रेत का जो बाउंडर था उसको लेकर आए, अच्छा खासा डैमेज दिया और इसी के साथ एक और किल लेके जा चुके हैं। छोटा शकील की यहाँ पर मृत्यु हो चुकी है। कार्मिला यहाँ पर अल्टीमेट यूज किया, उसका जो कोई बेनिफिट नहीं मिल पा रहा और एस्मेराल्डा दीदी को छुप छुप के खेलना पड़ रहा है। जब आपकी सिचुएशन ऐसी आ जाना कि आपको छुप छुप के खेलना पड़े तो समझ जाओ कि मैच आपके हाथों से धीरे धीरे निकलता जा रहा है। वापसी के चांसेस बहुत कम हो चुके हैं सब यहाँ पर टीम 9 मफिन्स के लिए। हाँ जी बिल्कुल, जैसे आप देखें तो जैसे मैच फिसल रहा है, जैसे रेत भी फिसलती है तो रेत के सौदागर सामने हो तो रेत फिसलेगी कैसे नहीं। तो उसी के साथ साथ मुसीबत जरूर इनके ऊपर आई है। एस्मा काफी अच्छी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप किस तरह से बचेंगे। यहाँ पे खलीद बहुत ही तेजी के साथ आए, किल निकाल लिया और कितनी शिद्दत से उन्होंने अपने आप को वापस एचपी भी जो है वो दिला दी। स्कारलेट आगे आ रहे हैं, पता था चलिए यहाँ पे नहीं लड़ सकते हैं तो थोड़ा सा अपनी टीम को विजन देने की कोशिश कर रहे थे। विजन दिलाया अपनी टीम को, इन पीछे हट चुके हैं। फोकस के लिए वापस चलने वाला है, क्योंकि आप देखें टावर के मामले में देखें तो सभी दिशाओं से एक एक टावर उड़ा लिया यार भी इन्होंने। बिल्कुल जैसा कि मैंने कहा था, पहले से बॉट लिया, फिर टॉप गए, फिर मिड में घुस गए और इनकी स्ट्रैटेजी बहुत शानदार है। चार के चारों मतलब पहुंचे हुए प्लेयर ऑलमोस्ट एक ही जगह पहुंच जाते हैं और ओपोनेंट को फिर मौका नहीं मिल पाता। और दूसरी बात, इसका एक शानदार पिक है, बैक लेन पे रह के इतना ज़्यादा डैमेज देती है कि ओपोनेंट को अंदर आने का मौका ही नहीं मिलता। जब आप अंदर आओगे नहीं तो इक्शा को टारगेट कर नहीं सकते, इक्शा को टारगेट कर नहीं सकते तो आपके जीतने के चांसेस नहीं बढ़ेंगे। और मुझे यार अभी एक बहुत अच्छी सी चीज़ याद आई, आपने टेकन 3 तो खेला ही होगा ना, हीरो है योशी मित्सु करके हीरो होता है,
जो नीचे जमीन पे बैठ के अपनी एचपी भरने लगता है। मुझे खलीद को देख के ना उसकी याद आ गई भाई, ये भी जमीन पे बैठ के अपनी एचपी भर रहा है। और इसी के साथ ये मैच जो हमारे अंडरडॉग्स है उनके खाते में जाता हुआ बॉट लेन से एक और टर्रेट निकालने की कोशिश की जाएगी। एक शॉट अच्छा शानदार डैमेज, और बहुत ज्यादा डैमेज आ रहा है। और मुझे एक बार बिल्ड देखनी कि हमारी जो कार्मिला दीदी उन्होंने क्या बिल्ड बनाया है, क्या अगर बिल्ड देखने को मिल जाए। इसी के साथ किलिंग स्प्री और बर्निंग डैमेज 8-1 का स्कोर हो चुका है। गोल डिफरेंस यहाँ पर 8000 का हो चुका है। 8 मिनट के अंदर 8000 का गोल डिफरेंस, 6-7 किल्स की लीड, बहुत ज्यादा काबिल तारीफ चीज है। 66 सेकंड्स के बाद हमारे जो शिव शंभू हैं वो अवतरित हो जाएंगे और शायद ये मैच इसी के साथ समाप्त हो जाएगा और सारे जो समीकरण थे जो अभी तक हम नोटिस कर रहे थे वो बदले जाएंगे और जो रेड टीम है इस बार हमें हारती हुई दिखाई देगी। ऐसे चलिए समीकरण बदलेंगे अगर हार होगा, हालांकि उनके पास एक मौका जरूर रहेगा, एक कमबैक वो जरूर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सीधे पहुंचते हैं फिनाले के लिए तो फिर कहीं ना कहीं एक खुशी अलग रहती है, आपका मनोबल जो है वो काफी तेज रहता है। एंड जिस हिसाब से लास्ट गेम छोड़ा था अंडरडॉग राइज ने, उसी तरह से इस मैच के अंदर उन्होंने शुरुआत की और अंततः की तरफ भी उसी तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए हमको काफी सारी उम्मीदी थी यहाँ पे एस्मेल्डा जो है वो शील्ड चुराते हुए देखेंगे, ऐसी उम्मीदी थी। लेकिन जो रेत के सौदागर ने सौदा किया है और सौदा है एस्मेल्डा की मौत का। और आप देखिए कितना दौड़ाया, गोल कितना घुमाया, लेकिन पूरी टीम जब आ जाती है तो दिक्कत जरूर रहती है। जैसे आप बात कर रहे थे आरवी, यहाँ पे एक्सिया की बिल्ड चली वो आ चुकी है, तो उन्होंने कहीं ना कहीं जो है अपोनेंट को जल्दी हील ना मिल पहले उन्होंने एंटी हील किया जाएगा। इस बार थोड़ी सी अच्छी स्ट्रेटेजी ये लगाई, स्कारलेट यहाँ पर आ चुके थे, मिनियंस का यहाँ पर थोड़ा सा पुश मिल चुका है, तो शायद इस बार वो चीज ना। पर बड़े प्यार से एस्मा दीदी को कच्चा चबाते हुए नजर आ रहे हैं, भागने की पूरी कोशिश की जा रही है, इंसेनिटी का यूज किया, थोड़ी सी पोजीशन गलत हुई बट एट द एंड उनको उसकी किल मिल चुकी है। बॉट लेन से हमारे मिनियंस का प्रेशर है, मिड लेन से शंभू आ चुके हैं एंड मुझे लगता है कि ये मैच यहाँ खत्म होता हुआ दिखाई दे सकता है। वेट कर रहा हूं मैं इक्शिया के अर्धन से, ठीक है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हमको, और हमें भी नहीं दिख रहा, आपको भी नहीं दिख रहा, तो हम दोनों एक ही पहलू पे हैं। ऑडियंस भी हमारे साथ वही पहलू पे है। शायद मुझे लगता है कि ऑडियंस को दिख रहा है और मैच हो चुका है, जी अंत हो चुका है ये। और जैसा आप बता, चलिए अभी समीकरण भी नहीं चले, कुछ नहीं चला है, क्योंकि अब जो है ये जीत के जा चुके हैं अंडरडॉग राइज जो है वो अगले राउंड के लिए अपने आप को क्वालिफाई करवा चुके हैं। बिल्कुल अंडरडॉग राइज यहां पर पहुंच चुके हैं नेक्स्ट राउंड के लिए, जबकि जो हमारे 9 मफिन्स हैं उनको लूजर ब्रैकेट में खेलना पड़ेगा आज का जो सेकंड मैच है उनके लूजर के साथ, और शायद अगर उसको हराते हैं तो फिर उन्हें परसों खेलना पड़ेगा, नहीं हाँ कल खेलना पड़ेगा थर्ड मैच के लूजर के साथ। तो भी संभावनाएं हैं, आपको ये है कि अगर आप यहां से जीत जाते तो सिर्फ आपको एक और मैच खेलना रहता है, बट अगर आप हारेंगे तो आपको भी 2-3 मैच और खेलने पड़ेंगे एंड उसके बाद ही आप नेक्स्ट स्टेज में जाएंगे। तो इसी के साथ आज का जो मैच है यहाँ समाप्त होता हुआ। बहुत सारी बधाई हमारी टीम अंडरडॉग्स को इतना अच्छा खासा परफॉर्मेंस देने के लिए, एंड स्पेशली यार बिग सैल्यूट फॉर द साइरन, बहुत शानदार परफॉर्मेंस दिया यार। इक्शिया ने अच्छा खासा डैमेज दिया, चीजें कंट्रोल की, मिड गेम से लेके बात करें या फिर लेट गेम की बात करें, बहुत ज्यादा काबिल तारीफ था। उनकी टीम का भी सपोर्ट बहुत ज्यादा अच्छा था, झुंड बना के जहां जाते थे एक साथ आ जाते थे। कहते हैं ना, उन्हें पुरानी क्लासेस में पढ़ा है जब हम छोटे होते थे 6-7 में, एकता में बल है, तो वो चीज हमें टोटली देखने को मिली है अंडरडॉग्स की तरफ से। भाई उनकी टीम अकेला छोड़ ही नहीं रही है, कोई भी फाइट में वो 1v1 नहीं जा रहे हैं, 1v2 भी नहीं जा रहे हैं, 4 वर्सेस 2 जा रहे हैं, 4 वर्सेस 3 जा रहे हैं। उसी का फायदा उन्होंने उठाया और इस मैच को जीत लिया है। एसएम से जानेंगे उनके विचार कुछ ही शब्दों में इस मैच के बारे में। बेस्ट ऑफ 5 का ये मुकाबला था। ओवरऑल मैच की समरी में आप क्या कहना चाहेंगे एसएम? देखिए उम्मीदें काफी सारी थी, दर्शकों को भी उम्मीदें थी, हम भी चाहते थे कि एक आध मैच और देखने को मिल जाए तो थोड़ा एंटरटेनमेंट और चलता रहे, क्योंकि
आखिरी मजा तो उसी के अंदर आता है कि आप भी एंटरटेन होते रहे एंड फिर हकदार वो जो हो वो जीत के जाए। लेकिन अंडरडॉग राइज बोल रहे थे कि थोड़ा सा समय तो है, ज्यादा निकलता जा रहा है, बाकी उनको जीत की आवश्यकता है, तो अगले वाले मैच में जीते उससे अच्छा यही वाले मैच में जीत के। कुछ समीकरण के हिसाब से चलते तो वही चल रहा था ना कि रेड साइड में जाओगे तो फिर आप जीत जाओगे, तो फिर जीतना तो आपको खैर है ही। तो सोचा कि चलिए मैं जैसे बोला ब्लू ब्लू, अरे वो फिर ब्लू ब्लू करके निकल गए। अंडरडॉग राइज क्या चमके हैं, सूरज की बात ही वो निकले हैं, उनकी जो किरणें हैं वो फैली है और वो किरणों की ताकत के साथ, उनकी ताकत के साथ, उनके प्लेयर्स की रणनीतियों के साथ, उनके प्लेयर्स के कोऑर्डिनेशन के साथ उन्होंने दिखाया, जैसे आपने अभी एक अच्छे एग्जांपल के साथ समझाया, उन्होंने अपनी एकता की ताकत दिखाई और एकता की ताकत के साथ अपनी टीम को लेके जा चुके हैं। और फिनाले के लिए अभी एक और मौका जरूर मिलेगा। नाइन मफिन्स को उम्मीद करते हैं कि वो वापस से हमको हो सके तो दिखे। लेकिन चलिए अगले मैच भी काफी कमाल के होने वाले हैं, क्योंकि जैसे हमने बोला था कि कल के मैच के जो टीम माफ थी, उनकी टीम में अंदर भी काफी अच्छे प्लेयर्स हैं, तो और उनके सामने जो और भी टीम्स खेलने वाले हैं, तो देखते हैं कि किस तरह से फिर वहां से चैंपियंस निकल के आता है, फिर उनमें से कौन आगे जाता है। थोड़ी देर में आपके मिलेंगे दूसरे मैच के साथ। हम एसएम एंड हमारे दोस्त आरवी आपसे लेना चाहेंगे अलविदा, क्योंकि अगले मैच में आपके साथ जोड़ेंगे दूसरे कास्टर्स जो कि रहने वाले हैं। वो आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा दोस्तों, कौन होगा उसके लिए। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, शुभ रात्रि। Boss. I would sail across the cosmic sea to the end of time.
would sail across the cosmic sea to the end of time. I'm the boss. For her, I would sail across the cosmic sea to the end of time.
I would sail across the cosmic sea to the end of time. I'm the boss. For her, I would sail across the cosmic sea to the end of time.
For her, I would sail across the cosmic sea to the end of time. I'm the boss. For her, I would sail across the cosmic sea to the end of time. Hello everyone and welcome back to India Showdown Season 1, powered by Indian Gaming Corps. And after the victory by Underdogs Rise, we are back again into the next semi-finals match of tonight. And it's going to be Team MAAF going against Luminaire's Lyre. And I'm going to be your caster, Ray, and joining me would be the beautiful and amazing friend and caster, BT. So BT, are you not looking forward to how girls are going to be performing? Because look at that. Both of the teams are already into the draft phase. I'm looking so ahead because I want to see what these girls have in store. After all, this is the semi-finals. You know, girls are as amazing as boys so far. We have seen a lot of tournaments. We have seen a lot of guys participating. Now it's time for the girls to show their best. And yes, we have the best of the best teams fighting it out. And yes, this is the semi-final, guys. So please make sure that you guys are supporting your favorite teams. And there we go. The bands are all up. Yeah, and so far we're just seeing the typical meta bands coming in from both sides. It's gonna be the Phobias from Luminaire's Lyre, and it's gonna be the Matilda, one of your favorite heroes, PT, from the side of Team MAAF.
So typical meta bans so far, they're probably going to follow the standard procedure. After all, they're well equipped with a meta, and I'm interested to see what these girls are maining. I mean, just putting like many people saying girls, stick to mages or support, but obviously this is a 5 versus 5, so I'm interested to see Yeah, what junglers, what gold misconception. laners. Yeah, this is a misconception, and those girls are here to prove it wrong. And I'm really curious to see what junglers and what gold laners they are really proficient at, and I want to see what they're gonna go at. So far, they're taking their time to, not really banning out. So, what are you looking to forward? Like, what do you think they're going to be prioritizing or banning? On the tank side, I'm kind of looking for an Angela and a Link combo as well coming. It is one of the most used combo in this game as well, or maybe an Alpha as well. You know that the Alpha could be capitalized very, very well into this game. Again, he has that early game damage. He dishes out that true damage, so you know that he would be the one just jumping around with the Alpha charge and just trying to make sure that they are down. But again, he's kind of situational. They just need to see if they are able to go in. Once the Alpha gets bursted down, it is going to get hard. And with that, okay, sweet, sweet bans are all up now. We will be shortly going through the picks. Yeah, and I think, okay, that was the Gatot Kacha. I was actually a little bit confused what hero that is due to the bad marker, but yeah, it's going to be the Gatot Kacha from the side of Luminous Lyre. And so far, they're going in with the fighter. I mean, Gatot, he's a EXP laner, does go into the roam position, but I feel like he's much more played in the EXP lane. On the other hand, the Team MAAF, they're banning out the Sicilian, respect-worthy ban, because after all, his late game damage is insane. And Luminous Lyre, they're also following up with a Lilia ban. Perhaps it is a respect, because I don't think Lilia is something that you'd consider in your priority. Definitely a respect ban, in my opinion. Even I agree with you, Ray. It definitely feels like a respect bet again, but the Lilia could really come handy into the late game. With the black shoe, she can really step out in any kind of dangerous situation, like traveling back to the time, trying to give her that extra HP. So, yep, again, a good choice for them. And it's good that teams are prioritizing that kind of ban so that they won't be creating a menace into the battlefield. Yeah, and so far, Team MAAF has finalized their ban. It is going to be the Benedetta, along with Sicilian and Matilda. I think they're really going in hard with the respect bans and want to make sure they're choking down on the heroes that these girls are competing from the side of Luminous Lyre, but there's still options available. Khalid, despite nerf, he's open. And Suyu, he's still open. Zushin, one of my favorite heroes, he's open. So I'm curious to see what Luminous Lyre is going to be thinking. No, it's going to be the footballer, the Bruno. People really want to showcase that girls also have the balls to fight. Okay, The Bruno pick coming in. Okay, understandable. Bruno is actually coming up in this meta quite well, and he's kind of viable here. Again, with Bruno, you're talking about the Beatrix as well. Beatrix, or maybe the Brody as well. I have seen the Brody creating a havoc into the early game, making sure that he's getting farmed and literally carrying the entire game till the late game. So, yep, that is one of the strongest picks that you might be seeing. And we did see, like a few days ago, we did see one of the best of the best players. Maybe they will be battling it out into the, they did battle out like previously. Chota Shakil, if I'm right, the best Brody player I have seen so far. Ooh, quite interesting. So we'll have to see what both of these teams have in store for us. So far, though, the side of Team MAAF, they're going ahead with the Carmilla and the Khalid. So actually, what's your okay? There is also the Xborg and Angela combo coming in from Luminous Lyre. I feel like it's quite strong, but at the same time, Bruno might be sufficient enough with the hard guard. What do you think of that? Again, I feel like this Angela was picked up for the Bruno itself. Bruno, again, that early game he lacks. He's quite dependent on the item. He needs to make sure that he will be playing around that mid game rotation to getting up his items, making sure that he has a wind of nature along with the other important items and trying to get it to the late game. This is the kind of gameplay that Bruno has to show. And again, that Angela coming into
to the play will be waiting it out. I was hoping Angela and a Ling, but again, Xbox won't disappoint us. But diving back to the next, the Nolan coming into the play along with the Khalid. What are your thoughts on that, Ray? I mean, we just spoke about it after all. I spoke about it a few seconds ago. The Khalid, despite the nerf, he's still a decent EXP laner, mainly because of the fact that he has the lane clear and the rotation speed. The only one who can match him on it is the Hilda, who has been rising in the meta lately as well. So perhaps that's something that Luminous Lyre will be looking for. At the same time, though, Nolan, we haven't seen him that recently, but Nolan is still quite of a fast jungler, and he has the fracture to deal a lot of damage. He can even one-shot this Bruno if she's not that careful. And Nolan even has a double 11 skin, so yeah, they're going to be styling it the Land of Dawn. So I'm looking forward to that. So far, though, second phase of the ban has already started, and this is where they're actually started to choke down on the mages, because I mean, Luminous Lyre didn't really go in for the mage yet, so I guess it's understandable. They're banning out the Valentina and Zushin, and on the other hand, Luminous Lyre is going in with the Lunox ban. Well, that's a gold laner. Okay, it's a gold lane ban. They're also banning out the Ixtia. So Luminous Lyre doesn't want the gold laners, and MAAF doesn't want the mages. Understandable. See, MAAF, they haven't picked up a mage. On same goes for the other side as well. They haven't picked up a mage. They're trying to shut down those annoying heroes so that it won't be a problem into the game. Again, you want to make sure that you are going up with a very good draft, because 60% of the time it is just the draft winning you up the games. And okay, I want to remind you guys as well that this is going to be the best of 5 series. So these players have to fight it out like in a long match, maybe 3, maybe 4, maybe 5. I'm curious to know that if this is going to go in a clean sweep, or maybe we are battling it out into the match number 5. Yeah, I mean, best of 5 series, it's going to be a lot of games. After all, the suspense will always be up until we see an actual 2-0. I mean, even in 2-0, anything can change. But so far, though, the draft has been finalized. MAAF going in quite aggressive with the Foramis and Leslie, something we would not see being comboed quite often. On the other hand, quite a typical meta draft. Like, they are going in with the Angela Rome and Aurora as their mid laner to bring that crowd control they really need. So, what's your thoughts on that, PT? And let's not forget Yuzhong as well. They have picked up their EX as their Yuzhong. So I'm guessing the Xbox is definitely the jungler of the team. Again, the Xbox does have a lot of room to farm up. He does have a lot of room to escape as well. He has the Firaga armor. He has the immortality. He has another lifeline. You're talking about like 3 lifeline having on one single hero. That's like Paramis. If they go in with like a mage like a Paramis, that would have like counted up to 1 more lifeline for the Xbox. But again, looks like Paramis will be shifted to Luminous Lyre this time. It is going to be a very crucial part, because that netherworld is much needed right now. Exactly. And with that, ladies and gentlemen, we're heading into the Land of Dawn of the second match of tonight, and it's going to be Team Luminous Lyre versus Team MAAF into this best of 5 series of semi-finals of India Showdown Season 1 Females Tournament. So there we go. We are into the beautiful Land of Dawn, and so far the both of the drafts have been finalized, and giving you the thrill of the team fights would be joining me would be PT again, and I'm gonna be the giving you all of the analysis. Ray. So both of the drafts, they're looking quite strong, but PT, I'll just go ahead and say it. I feel like the side of Team MAAF, they have a creative kind of draft, so I'm actually looking a lot more forward to what they have in store. Oh, definitely. Team MAAF, they are going in strong. Look at them. That Paramis would be a very crucial member, as I mentioned. Obviously, on needed on the recruiter file. Look at the both teams already going down to the bot lane. Carmilla may be in a very bad position right now. She just flickers out. Angela was the one flickering out on time. But there we go. Both the teams are not engaging. They're just waiting for the junglers to swoop in. So far, though, it's only 2 minutes. Okay. Okay. Then really going aggressive into the Bruno. Might be able to pick up a kill, is it? Oh, because, oh my god.
quite a lot of poking. That is basically Leslie things. That is what Leslie specializes Yep. at so far. If you look at the map, they're shifting towards the turtle. Not much goal lead after all. It's still early on. Other than that, if you look at the resource-wise, Angela doesn't have the flicker. Look at the minicamp. The turtle is up. So Angela, she really has to watch her positioning. She is the most vulnerable one so far. Okay, Yu Zhong, he might be actually the one who's vulnerable, and he gets taken down. Okay, the first blood already going down into the hands of MAAF, looking quite strong. Look at them, they have this advantage over the turtle as well, and yes, they do pop off the turtle. You know, when you pop off that Yuzhong, you know, the EXP laner, it is going to get quite easier for you to take down the turtle. A very good move, but mid-lane, look at them, Angela in position will be taken down along with that, the firepower coming in from the Xbox. Okay, another kill onto them, but Yuzhong onto the other hand, he comes in with the Black Dragon Form, tries to go in for that Paramis, will be taken down. Even the Purify was used up to no avail. Exactly. So far, the kill board, it's quite similar. Even the goal lead hasn't shifted that much, but the first objective will going into the hands of Team MAAF so far. Other than that, Aura doesn't have the pride of fight, so in the next engage in 120 seconds, Aura will be quite vulnerable. Okay, bot lane though. Okay, look at that, very aggressive. Chippy will be taken down. They will be trying to make sure to get another one. Stevie goes out, the jungler for the shadow team off. Again, a wrong engage coming in, but she will be going down into the hands of Bruno. It is going to be very difficult, but they are trying to go in for more. Promise looking in a very bad position. That is a glacier coming in handy. You know, Uzu is just planning a little bit too ahead, okay? We will, like, you know, she died for a purpose here. Don't relax, guys. Uzu has like 1,000 strategies. She had a reason for dying there. I mean, we know why all Uzu part of the plan. this. Yep, all according to the case. Yeah. So far, okay. Yeah, but fracture coming in handy, but again, it does pop up a chunk of the Yuzhong XP, the hard gun coming into the play. This means that Yuzhong is safe for now. They might go in for a re-engage because they do have a Paramis. They might go in, but they are decided to take down the turret, the gold turret from the top lane. Yep, they're shutting down the gold shield as much as possible. And so far though, if you look at the map, the kill board, it's quite similar because I wouldn't, okay, but the second turtle is up and Nolan is nowhere near. So it means that this second objective would be going into the hands of Team Luminaire Lyre, but at the same time, at the top lane, Uzu, look at her, like with such a great strategy. There, the mage is actually trying to push down, knowing that there is no, like, lane clear coming in except for the Angela so far. The Yuzhong was quite low. So yeah, good strategy so far. They're trying to get objectives. I mean, you don't get the turtle, try to get the map control at least. Other than that, if you look at the game strategy, both of them are quite marksman reliant. After all, Bruno will be the main key. Xborg is more of a utility to, you know, use the last insanity. Bruno and Leslie will be a fierce battle into the late game because both of them scale late really, really well. Especially with the Malefic gun, this Bruno is quite insane, but I want to see if this Leslie will be buying that because I haven't really seen any Leslie being played recently, so I'm looking forward to that. And you know, Ray, talking about both the teams, they have a similar kind of team composition. They did cover up the early game, they did cover up the mid game, they did cover the late game as well, which is again a very good sign. But they might move towards the bottom lane because Team MAAF as well as Team Luminaire Lyre, especially Luminaire Lyre, they are already farming up quite aggressively, quite easily, trying to make sure that they are having that aggressiveness into the land of dawn. But the Team MAAF always coming up with new strategies. Look at them. Carmilla onto the bot lane for the backup again. Now, Nolan has to farm his buffs. He's just waiting it for his buffs, and he will be moving towards the bot lane very, very soon. Yeah, so far we're already into 6 minutes into the game. The last turtle will be coming up soon, and they're trying to eye the goal lane. Okay, possible engage. Okay, look at them. They're going in for more. Even the frigid glacier might come in handy. The Leslie gets up a kill. It will be Aurora going down now. They are still going in for more. Okay, 2 for 3
trade. You lose out the jungler though, as well as your roamer, but at the same time, you took out the opposing gold laner, which is gonna give. And if you look at the itemization, Leslie, he already has a Sky Piercer and building towards the Berserker's Fury. And Bruno is on the same path as well. Look at that. Both of them haven't gotten this. But I feel like Bruno slightly ahead due to the Hass's Claw, which has crit chance and light steal. So he's going to be regenerating a lot more compared to this Leslie, who doesn't really have the sustain option yet. He doesn't also have the Angela either. But okay, they're trying to chunk down the Shiraga armor. But look at that. Okay. Too much damage. Xbox does get to kill the Black Dragon form coming in handy. He's still feeling damage. He's trying to make sure that he's getting his passive onto that. He dives into along the turret, taking him down. Now, Team Luminous Lyre, they are on a lead right now. They are trying to farm up, but again, the mid lane will be not prioritized. Oh, they did prioritize and they did take it down. Okay, interesting. So far, the map is turning quite blue because look at that, the side of Team Luminous Lyre, they're dominating the map control really badly. They got one of the most important constructions in the Land of Dawn, that is the mid turret, which is going to give them so much of leverage into this map. They're going to be able to invade all of the buffs that are going to be coming next and deny Kylwi on this Nolan any kind of energy regeneration from the blue buff. So the invasions will be coming in soon. Even they even take down the gold and look at that. But I would consider it even considering that Team MAAF also got it. So far though, looking at the itemization, Nolan already has 2, but okay, poking. Other than that, Leslie, she really needs to farm up. She needs to match Venus. Just look at that. Okay, they're going in. Oh, look at that. The nether wall coming in handy. Nolan will be taken down. Killing spree picked up by the Xbox. They try to go in for more. The vengeance already there into the hands of Carmilla. Now Angela as well. They are trying to wait it up. They are trying to make sure that they are still dealing so much damage. The hailstorm coming in handy as well. No chance will be given. No chance to survive in this team fight. Team MAAF, they are on a deficit right now. But again, Leslie won't be joining up the team fight. She's just waiting it out for the late game. Yeah, and at the same time, that might be the doomfall because that is the issue with Leslie. She's extremely late game, and unless you find some, okay, they are going in again. Oh. Okay, look at the damage coming in. So much damage from the side of Xbox. Okay, they try to go in for more. The mid lane will be again in jeopardy right now. Both the teams fighting it out for the domination. On to the other hand, Khalid looking quite low. They are losing up farm steadily right now since they lost up the Lord, and they are losing up their buffs as well. Nolan, he's on a deficit right now. What are your thoughts on that, Ray? I mean, that's the issue with an assassin. Xbox, he can make a much more combat because he's the fighter. So the later the game goes, even if he's on a deficit, he can just get back his farm and get the items that he really needs. But okay, looks like they want to go in again. Okay. Chippy will be using up the flicker in a very good position. They lost up one member, Luminous Lyre. They do lose up the Xbox. Not a good option, but again, they take down 2 members of MAAF. Again, a good trade coming in. The Lord still into the inhibitor right now. They are trying to chunk it down. The minions will be coming in very, very soon. I did see how Team Luminous Lyre did not go for a lane sync. Instead, they were focusing on the side of Team MAAF to come out of the turrets, which they weren't available for. Exactly, and so far, the Luminous Lyre still has the upper hand because look at that, Bruno has the hands on the OP item, that is the Malefic gun, giving the range, giving the penetration, and we just saw that Bruno is just melting down everyone, and this Nolan just got his hands into the third item as well. But at this point, he can't really go into the backline. There's this aura with the freeze, the British flow, and so far, Team MAAF looking in a little bit of tight position, but this Paramis is the key player because look at that. Yep, the nether wall coming in handy as well. You know, it will be Sky. We take it down once again. In no way that the Nolan is always getting picked off right before the team fight ever started. Look at them. They try to go in for more. The Raging Sandstorm being used up. Yuzhong tries to jump in with the jumps, but unable to do so. They are safe for now. What a domination coming in from Team Luminous Lyre. Yeah, I mean, that's the benefit of having this draft. After all, I mean, they're going in with the Angela composition, Xborg, as well as the Yuzhong. Both of can make good use of their hard guard on top of them. So that really already gives them the advantage. And other than that,
if you also consider the fact that they have the Bruno, and Aura is just providing all the crowd control necessary, but she's on a rampage right now. Look at that, 618 KDA. So she's really dealing the damage. She even has the Wishing Lantern, so she's going to be dealing damage into this Carmilla, as well as this Khalid, who are quite tanky, and Yuzong just got his hands into the anti-heal as well, and the Lord has been enhanced, and it's going to be the Luminous one, and so far, Team MAAF, they're looking in a very tight position, and only this Paramis is really great. Netherworld can save them, but at the same time, so much damage coming in, I feel like the Netherworld immediately gets one-shotted because the burst from the last Insanity, Bruno's balls that are hitting so hard, they're just not able to do anything. And also, having a Leslie who's really bad at wave clear because she is only single target and also reliant on her energy, she can't really basic attack that much compared to someone like Bruno, right? He can just hit his balls non-stop. So I feel like they lack in the lane clear. Paramis is more utility than lane clear as well, so they might be losing out in this team fight unless there's a huge misplay coming in from the side of Team Luminous Lyre. That is true, Ray. But again, I'm looking at the Aurora. She's always popping up the Frigid Glacier in the manner that she is shooing away the side of Team MAAF, and that allows the Yuzong to jump in with the Black Dragon form from the back lines, which is again a very good strategy coming in. Look at that, Yuzong as well as the Xbox trying to get a hit. They're still dealing damage. They're still surviving, sustaining so much damage. The Lord already marching down from the bot lane as well. It is going to get spicier because this Lord is a very important Lord for them. The Bruno gets up the Bruno is at the base. Nolan in a very bad position. Look at the Lord moving in as well. Now the Crystal is in jeopardy right now. Along with that, even the Leslie will be taking down Bruno. So much damage and still dealing. Okay, a maniac though. I mean, the Bruno, man, he's just so buffed lately. I think the Malefic gun just made this guy a monster. It turned him into basically early game Lela, and that is basically what you guys saw. He's just so insanely strong at this point of the game, and look at that MVP. Parame is definitely like Uzu. We trust you. You're definitely the MVP, deserving. She's the best. But other than that, I feel like the Khalid was not that much of an early good pick because Khalid can't be flex, but at the same time they also picked up the Carmilla, which meant that the other side already knew that the Khalid was HP lane and they picked up a counter. Yuzong right now is a really good counter against this Khalid, especially after the nerf. Okay. PT, what a game we just had. Team MAAF would be losing out the first game to Luminous Lyre. Absolute domination. What do you think of that? I feel like they picked up on Nolan just to make sure that the Aurora as well as the Bruno would be the one falling down into the hands of Nolan. But again, I feel like the Nolan did not snowball the early game, which is one of the downfalls for the side of Team MAAF. But it could be corrected since you're into the semi-finals right now. It is a best of 5 series. They still have another chance to go at it. With that, we will be seeing that very soon. Now again, Bruno, Daki getting up an MVP as well. So much damage, and Team MAAF really allowed Daki to farm up like the whole map. Yeah, I mean, it's just that there was a really great sustain option. After all, when there's a support, especially an Angela, that means you have the global ultimate. You're going to be safe for almost most of the time. Okay. Okay. Oh, what was that? For her, I would sail across the cosmic sea to the end of time.
would sail across the cosmic sea to the end of time. I'm the boss. For her, I would sail across the cosmic sea to the end of time.
her, I would sail across the cosmic sea to the end of time. I'm the boss. And welcome back, ladies and gentlemen. You guys are watching India Showdown Season 1. With that, we are back again at the match number 2. Look at the exciting lineup we have today. It is again Team MAAF versus Team Luminous Lyre. With that, Team Luminous Lyre, they are on a lead. Look at them. They were at the first match. A very good macro gameplay coming in for them. Will Team MAAF keep up their pace to the game number 2? This is your caster Peachy, and along with me, I have the most cutest player as well as the caster you have ever seen. Hello, Asya. How are you? And welcome to the India Showdown Season 1. Thank you for that banger introduction, Peachy. And yes, I am really excited to be here today. And I did see both of these teams play in the previous game. A really great match. And especially I was casting for them yesterday. So, the Hyper, the jungler from Luminaire did catch my eye. She is amazing on her jungle. So I'm really hoping to see some amazing gameplays coming from both the teams. And with that, let's just move on to the draft as the banning phase has just started. So, Peachy, do you think will we see some respect bans incoming, or will it be those same standard bans? We definitely need those respect bans coming in, 100%, Asuya, because the Bruno into the last game creating an havoc, trying to make sure that she is always there into the trying to deal so much damage. So I do believe that Bruno would be the one as the respect ban. But again, look at that, the bans are all in. Looks like it will be maybe a Khalid would be getting banned, or maybe so I'm talking about an Xbog as well, because Xbog, as you mentioned, from the side of Team Luminous Lyre, the jungler is exceptional. She really played the Xbog very, very good, and she made sure that she was taking her team to the victory. And with that, we are still waiting out for the bans. What are your predictions as well, Asya? Well, there might be some respect bans, but just there are a lot of options open, Peachy. There may be a Mortis, maybe an Xbox, just like you spoke of, a Joy, a Bruno, a Suyu, Phobius, Khalid. So many options are open. Like it's like sometimes I feel like there should be more than 10 bans because so many heroes are so OP with that firepower. So yeah, but with that, just look at that. The first ban coming out with the Joy and the Phobius, and also the Angel has been banned out. Like, of course, no one wants to deal with these heroes, especially Joy, because she's been making her way, creeping up that meta recently. That's true, Asya. That is definitely true. And looks like Team MAAF, they have missed up a ban. Again, only 9 heroes or maybe less than that will be banned into this match. And talking about the respect ban, yes, we did see an Angela ban as well as the Benedetta getting banned. Okay, another respect ban, because the Benedetta is definitely a problem. I do believe from the side of Team Luminous Lyre, there is someone who is a very, very good Benedetta you're talking about.
Yes, it is none other than Annabelle because I did see her play that penny quite really well, especially yesterday. So they do not want to deal out with her and they will be banning her away. But then again, I was really thinking that when you have a mage like Sicilian who is really there creeping up that meta, you want something who can go dive into those back lines, and Joy and Benedetta are those two heroes along with other assassins who can actually target lock him. So yeah, Benedetta banning her out is really a respect ban, and again, it's like a safeguard for your mage. I do agree with you, Asuya. And with that, even the Matilda could have been taken down to the ban section and not maybe to the second phase, because I do believe one of the both the teams could prioritize it very well. And yep, we see that Angela Benedetta as well as the Lilia getting banned. Lilia along with the Phobius, understandable. What will team Luminous Lyre pick up? They did pick up the Matilda. They did pick up the Xborg as well. They traded out with the Sicilian. Yes, the Sicilian is definitely a insurance for the late game, but she has to position herself very, very good. Do they think they could do it? Because they have an Xbox with a lasting insanity on their backs. I mean, yes, when there is an expert, he can easily target the back lines with the last insanity. But then again, PG, in the early game, Xborg is kind of weak. You can harass him just by taking down his Faraga armor, and I truly believe that Gatotkacha and Suyu are those two picks who can make that happen. So we just need to see that how Team MAAF executes their skills, because if they really target lock onto that Xborg, it will be, especially the early game, is really in their hands. Because Suyu is also a hero PG who needs a snowball. If a team is doing really well, he will be unstoppable. But then again, if you are on the losing end, he will face some problems. So both the teams looking, both the drafts looking great, especially with that Aurora to counter out that dive in composition coming from the side of Team Ma. Okay, aggressive enough. But I was hoping that Team Marf would go in for a Alpha rather than a Suyu, because I do feel like Alpha could have been the better choice here, given you could pop off the Firaga armor right before he could just pop it off, try to burst it down. But again, Luminous Lyre, I'm going with a Aurora. Maybe they are onto the banning phase right now, and I'm looking at a Carmilla getting banned, and along with the Carmilla, one hero yet to be banned. And I'm curious to know what are they going in for. Maybe a marksman ban, because yep, that would be the marksman ban. The Ixia getting banned this time along with the Bruno onto the side of Team Marv. Quite strong enough. Will they be banning another marksman or maybe a tank? Okay, they go in for none of those. They go in for a Yuzhong. Understandable, because we did see the Yuzhong into the last game. So strong, so aggressive. What are your thoughts on that? What do you think that both the teams will be picking up? Maybe, four of the heroes still left. Well, it definitely will be a marksman because both the teams are lacking that right now. And an EXP laner, unless the expert decides to go for the EXP, these are the two picks which are left from both the sides. So, what do you think, PG, they could be? Because Khalid is yet to be picked by any of the teams, and I really believe if Team MAAF goes for Khalid, they will have a really strong early gameplay and they can harass the expert quite well. Okay. I'm liking your idea. So yeah, definitely a very good thing. But again, Team Lu Double L, they pick up the Ruby. Understandable, they might go in for that EXP lane, and I it is going to be a very good pick. The sustain queen herself, it is going to be very hard for them unless they choke down, take up a lot of anti-heal. Along with that, they take up a burst mage. To counter that Aurora, I feel like Valentina might come into the play very well. Valentina could take up the lasting insanity, maybe the I am offended as well, but they go in for a fluorine tank along with the Clint. Okay, I was not expecting this. Well, PJ, they do have a Sicilian for the mage, and he will be dishing out a lot of damage, like especially when it comes to the late game, he scales infinitely. The more the clock strikes, the more it takes,
the stronger he gets. Then again, like they do have that Matala for Team Luminaires, and when you have a Matala in your team, a lot of compositions are open for you. And because towards the late game with that flask of Oasis, her healing is immaculate. Her shielding is immaculate. The guiding wind always helping you to disengage. So their draft looking really strong at this point. And to counter out that heal, Lauren I think is a great pick because yeah, her heals will be quite strong, especially towards the late game. And the ultimate is a global heal. So yeah, it is kind of a help. But then again, I think they do lack a bit of tankiness because Gatotkacha is the only one who will be initiating. Yep, you're right about that. So yeah, that Gatot Kacha is going to be the face of the team, trying to make sure that he would be clearing up his lane very, very quickly, trying to rotate down to the mid or maybe the bot side or maybe the top side as their rotation goes on. And yes, as we talked about that, Brody into the game number 1, looks like Brody will be prioritized into the game number 2 from the side of Team Luminous Lyre. And this is going to be interesting. There we go, ladies and gentlemen. Welcome back to the land of Dawn, the second match of the semi-finals best of 5 series between Team MAAF versus Team Luminous Lyre. Both the junglers opting for a different kind of rotation. Look at them. They would be moving towards the top lane very, very soon. I mean, true, because it is the goal lane after all, and shutting down the marksman is always the best choice because they will be dishing out quite a lot of damage. Then again, the marksman matchup is quite understandable because Clint does have that early game aggression. At the same time, Brody is not any far behind. Oh, definitely not very not behind. But again, they are just waiting it out to making sure that they are not okay. Look at the body going in full stacks onto the Clint already. Oh, but Team Luminous Lyre, they come up to the top lane. They have to play it safe because Xbog is going to join them any minute. He's going to be level 4 along with that. Oh, the Sanguine Claw just spot out the Matilda, right? That the Bat Impact coming into the play as well, along with the Hailstorm Suyu trying to run away from the situation after dealing some damage. Now the first blood is yet to be popped. It is going to get very interesting to see who is going to be the one because top lane, the gatherings are already there. On to the other hand, we did see the Gatotkacha rotating as well. I mean, true, but he did miss out on 1 million wave, and I do not think that is good for him because he will be losing out a lot of gold, a lot of EXP at the same time. Just look at Chippy looking really low. Of course, it is Matala in the early game. She will be facing a lot of problems until she gets those equipments because at the end of the day, both of them have that support. Look at that plate already, taking down the Brody. Oh, interesting that grenade bombardment does come in handy. So you're trying to pop off the Firaga armor, successfully does so, and proceeding towards the turtle. The first turtle is always going towards Team MAAF. They prioritize the EXP lane. They try to make sure that they are making sure that they are annoying. Oh, look at that. The Ruby with the Eye of Fender will be helping the Xbox to take down the turtle with the help of Retribution. The Circling Eagle coming into the play as well. One member already down from the side of Team MAAF. They go in for more. The Hailstorm, along with that, it will be the Aurora flickering out of the situation. I mean, PJ, right now Luminaires do have that Aurora for the CC, and she is proving to be really monumental in those team fights, like we saw right there. At the same time, Suyu, he is very good when it comes to the stealing sneaky gameplays, and I was really hoping that Suyu comes in with his skills, secures that turtle, but unfortunately that didn't happen because the zoning out from the side of Team Luminaires was really good. And of course, the Matilda shield saving the life of people. And I think they really need that Gatotkacha for the team fights because he's the only one who can stand in front, and he's the only CC they have right now. Yep, you're right about that, but let's not forget about the Florine as well. The healing, which is much needed, they were lacking in the first game, will be picked up right here. Now, they are looking forward for more blood into the top lane as well. Flynn trying to farm up, unable to do so. They are freezing up the lanes now. With Matilda trying to run in, unable to get that window of opportunity. Will it be the Suyu? Because
position. The bridal fight's already taken off, and it will be a kill into the hands of Suyu. Will he be running back? The bad impacts along with that. The circling eagle still doing the play, looking quite low. Suyu will be taken down. Now the circling eagle proved to be very important here, and giving up the Matilda like that, not a good option. Well, true, it was for a one trade, but then again, do you see our Uzu doing so well on with that Sicilian, her sanguine claws always connecting onto the priority targets? And yes, like she is doing pretty well right now, and if she gets that opportunity to just stack up, I think she will be, a big bone of contention in those team fights. I do believe so. The bad impacts. I feel like the Sicilian is just baiting up for that mid game to the late game, dealing so much damage. Okay, so you try to go in, but unable to do so. Turtle will be taken out into the hands of Xbox. They try to go in for more. They're still dealing damage. The bad piece coming out of the play as well. Still a damage coming in. The last thing inside is right into the face of the Suyu will be taken down. Another member popping down. Florine as well as Clint will be taken on. So much damage from that Brody already. This is what Team MAAF has been doing, opening up the goal lane, trying to make sure that they give farm to the marksman onto the other side. I mean, true, and there is also some waste of resources there, BT, like the AOTG not connecting onto anyone. His initiation was kind of, late because the turtle was already taken up. And when your resources are down, you do not have any ways to disengage. Of course your Suyu will be targeted, of course your marksman will be targeted. So I really think that Team MAAF needs to maybe play it safer, because they lack that absolute CC which is there due to that Aurora till their Sicilian comes up. And they need to play it safer as well, because time by time, oh my god, another kill. Mystery Girl will be mysterious there, will be taken down. Okay, so you get down yet again. The farm is just not into the hands of Team MAAF right now, but they really cannot lose up the mid lane. Most important tower. Now, it gets a free tower for the Ruby team. Luminous Lyre, they are the ones for popping off those neutral objective right into the hands, maybe or maybe not, because Ruby is still waiting it out. Yep, she hits the tower. She's in a very bad position right now. Along with that, the circling eagle onto that Gatotkacha candy, to which will be taken down. PG, right now, just look at the macro gameplay coming from the side of Luminous Lyres. They have opened up the map for themselves. The rotations are getting unpredictable. I mean, 3 turrets, the first tier turrets from all 3 lanes, taken down just like that, of course. And if you see, there is out rotation from the side of Luminaire Lyre. There are always 3 or 4 people accompanying each other, supporting each other, taking down people one by one, and especially look at this Kacha. He's getting singled out quite a lot, and Team MAAF cannot afford to lose him because he's the only front laner they have for right now. Yep, you're right about that, Asuya. But again, your team Luminous Lyre, they are on a roll right now. They have been dominating up the game so far with the goal lead as well. Okay, they're trying to go in for more. They try to get some blood, unable to do so. Looks like it will be the Gatotkacha soaking up so much damage. Now, Team Luminous Lyre, they have an option to jump in for the team fight or just wait it out, because looking at the Sicilian right now, trying to steal up the purple buff, unable to do so, will be backing off for now. They will be having a very easy lane clear from the side of Team MAAF, but okay, Florine, they try to go in for more. The circling eagle coming into play as well. The grenade bombardment dealing damage onto the Xbox will be taken down. They go in for more. They're trying to do the sanguine loss onto 2 people. Double kill picked up by the Clint, and another kill picked up by the Sicilian. Look at that. Looks like Team MAAF, they are on a roll right now. They picked up the tempo to themselves right now. I mean, this is the opportunity they needed, BT, right there. Suyu, just like I mentioned before, he needs that snowball, but he wasn't getting that. The early game wasn't looking good for Team MAAF, but that one gank right there, especially if you did see the Sicilian playing the most important part, his sanguine claws connecting so well. The damage she's dealing, doing an amazing job, and I think Suyu finally gets that farm, that snowball he needs. And yes, the macro also stabilized as the turrets are kind of traded equally. Yep, you're right about that. Now,
both the teams have enough resources. They need to wait out for the floor in, because the bloom is one of the most important healing that the team MAAF needs right now, because they are not able to sustain the team fights. They are still dealing damage. They could have gone for a tanky EXP as well, and maybe a tanky like an Edith, but again, you're talking about an marksman Edith, not quite viable in this team composition, but maybe could have worked. With sanguine claws coming in handy right there. The bat sees so much damage already from that Cecilia, trying to position herself in a very safe position. Look at that AOG that's connected onto one people. The bat feast along with the bat impact still dealing so much damage in a very safe position. The wishing lantern though dealing so much damage. I mean, yes, but if you notice in these team fights, when Suyu goes in, like it's like she's trying to go in between four people, and like whatever person she's trying to take down is kind of does have a lot of HP left. The damage from the second skill is just not enough, and that's why she's getting taken down really easily. I really believe she needs to wait it out before people are really low, because with that Matilda, the heals and the shields, it is quite unpredictable that how you will heal up. I do agree with you, Asya. They really wanted a initiation, the EXP laner along with some tanky jungler as well. Maybe an Alpha or maybe a Bane could have done the trick. Now, whenever we see that Suyu trying to jump up, he is unable to get those kills. She's just not waiting for the team to make up a way for her to go in, and jumping in blindly will not make the play. Both the teams trying to take up the river control. They're checking those bushes one by one. Looks like it will be the Florian as well as Cecilian spotting the Ruby out and taunt onto the Ruby already. I mean, blows, trade of blows happening right now. They're just fighting for that control onto the river area, because whoever gets that first will be securing that Lord PG. And at the same time, I think Clint is doing a good job, but then again, a carry could have done a much better job, considering they do have a lot of tankiness with the Ruby, with Sonya on that expert. And I think, I really believe that Sonya needs to do some flank plays, take down Alexa, because she's being a really big problematic mage for all of them. And I really believe that she's the only one she can actually take down at this point, because Daki just stuns him whenever he tries, so he's trying to go in for that kill. So, and Aurora is quite squishy, so unless she's taken down, they will have a really hard time in those team fights. Yep, that's true. But again, the Lord is up. It is just waiting it out. Both the teams are trying to go in. Oh, they go in. The team fight is on. The Frigid Glacier got 3 people right there. But the follow-up from the side of Team Luminous Lyre wasn't there. This is the chance for Team MAAF to run up or maybe take up the Lord, trying to zone them out, because the river area control is in their hands right now. Maybe the Matilda as well as the Xbox could swoop in, trying to make a retreat play, but Team MAAF decided to disengage. I mean, both the teams are right now just struggling for the control. They just want to take one person down, and especially the target lock would be Mystery Girl, because she's the jungler, she has that retribution, and it can come handy for stealing, especially when Suyu is really good at doing those kind of gameplays. When the Lord has already spawned, people just trying to sink in those lanes, trying to gain that control in the river, but I do see an engage already happening. Oh, the Gatut cards are still taking up a lot of damage. The Firaga armor was almost off. If the Sicilian did come up on time, it would have felt like they would have popped up the Firaga armor. Unable to do so, they are still making sure to take those lanes, farm up, and not remain stagnant, which is a good sign for both the teams. But both the teams are playing it very slow. Again, a good sign. So maybe we could take a look at the items as well. I mean, true, like, they just thinking up those lanes from both the sides. No one wants to start that Lord, because the team who starts the Lord is kind of on the back foot. So yeah, just look at that, just trading blows right now. Ruby trying to push the top lane, because the top lane turret, second tier turret, looking really low. Sonya
I think Sonia going in to clear those lanes is not a great idea because if because if Xbox starts the Lord, it will take a lot of time for him to come and secure that Lord with the retribution. Okay, I'm liking the idea, but look at that, the law looking quite low. The retribution battle is all on. Looks like it will be Sonia winning up the retreat battle. Along with that, they win up another life. It will be the Gatot cards are falling down. Luminous Lyre, they are on a lead. Look at them, they might be recharging up their HP very, very soon and maybe give a follow up with the Lord. But Ruby gets I'm offended, not a very good option. So you will be swooping in, trying to take them down. Another kill maybe into their hands, but no. The torn apart memory doing so much damage. So you will be taking down another member, maybe try to go down. It will be the lasting insanity along with the Sultry Eagle coming out of the play. 2-man knockup, not much, still trying to deal some damage. It is Cecilian still in a very safe position right now, clearing those lanes left and right, making sure those minions won't be the one along with that team. Luminous Lyre pushing it down. I mean, why did your jungler go to clear the top lane when Lord is about to spawn? A really bad decision. And then again, losing, like, Suyu, he's trying to just solo it out there, but the Lord is approaching and there is a battle once again, PJ. Okay, another lasting insanity coming into play. It will be the Gatot cards are falling down. It did not even have an option to choose the revitalize. The revital is still there. Okay, another Sultan Eagle coming into the play. Clint will be taken out before that. The Lord is down. The inhibitors are falling down as well. The top inhibitor already down. The minions are still pouring in. The bot inhibitor looking quite low as well. It will be the Cecilian dealing so much damage. Will he be able to clear on time? Because the mid lane are starting to come up as well. They are losing inhibitors, like 3 inhibitors in just 1 minute. The minions are following in into the crystal right now. Look at them, they are attacking the crystal. It will be the Brody as well as that one cannon minion doing its job, and Team Luminous Lyre picking up another win. I mean, like, both the teams played well, PG, but then again, I think it is the micro decision which, just make the flow, the tide of the game. And I really believe that Mystery Girl going to clear up the top lane is the worst idea ever when the Lord is about to spawn and both the teams are just dancing around trying to look for one opportunity. And then she went in and kind of died. They should have just grouped up and defended because Uzu did a great job and Cecilian was farming up, but the team could not provide that time and space for her to actually stack up. Yep, you're right about that, Asya. And with that, what a match coming in from Team Luminous Lyre. They are on the lead right now with 2-0. They did give us a very good show, and the Xborg second match as well, proven so advantage to themselves. Now, again, I want to see that the Xborg respect bands coming in. I mean, Sonia on an Xbox doing a great job. So, like, did she pick it up in the first game too, PG? Yep, you're right about that. First game, it was the Angel and then Xbox combo coming in. Oh, then they should have definitely look to ban that Xbox out. And even the Martis, because I have seen her play these two heroes and she does an amazing job. Her retributions are on point. She knows when to engage, on whom to engage. Her priorities are really set well. So yeah, a great jungler from the side of Team Luminaire Lyres right now. And PG, I think Team MAAF also can do really well, especially Uzo on that Cecilian had done a great job. It's just that there was not enough time, not enough space. And if the draft is done better, I think they do have a solid chance. Yep, you're right about that. It's always like the 60% of the time that the draft will be the one, setting the face of the game, and that is quite true. And with that, we will be right back into the match number 3. And if you guys forgot, this is the best of 5 series. So don't go anywhere, get your dinners, get your water. We'll be right back.
would sail across the cosmic sea to the end of time. I'm the boss. For her, I would sail across the cosmic sea to the end of time.
I would sail across the cosmic sea to the end of time. Welcome back, ladies and gentlemen, to India Showdown Season 1. I am your caster Asuya, and with me is Peachy, and we are here for the best of 5 semi-finals between the two teams, which are Luminaire Lyres and Team MAAF. And right now, Team Luminaire Lyres are on the victory side with a score of 2-0. So this can be a crucial game, a game point for the side of Team Luminaire Lyre right now, and it can even be an epic comeback from the side of Team MAAF. So, Peachy, what do you think? What will happen? As we already know that the team Luminous Lyre are on a match point right now, since this is the best of 5 series and they have already scored up 2 points. That means this match is going to be the most important match for the side of team MAAF right now, because the pressure is high on them, because there is a possibility of going on a reverse sweep as well. And with that, yes, we are back again into the draft, and I do want to see that respect ban scoring, and maybe that Xbox as well as the Bruno should get banned yet again. I mean, yes, but Joy, I believe, is a great ban here because she's been wreaking havoc in the Land of Dawn nowadays, and she can dive into the back lane, so they do not want Joy on the enemy. So yes, just look at that. Finally, Team MAAF will be banning out an expert because Sonia was doing an amazing job on them. Definitely, the respect bans are finally in 2 games of Xbox still dealing so much damage. It will be this time, they will be taking it down. But again, look at them; they might go in for more. The Phobias as well as the Lilia getting banned. I am seeing it from the first match. The Lilia getting banned again. That is a very well respect ban there. Well, true, because Uzu, if she goes with Lilia, I think she's a monster. She plays really well. But then again, just look at that Matilda has been banned out a great ban, because just like I mentioned in the last game, whenever you have a Matilda in your team, a lot of team compositions are open. You can go in for the hitbox, you could go in for the, diamond composition, and you can also go to just zone out one person, target locking someone. And with that, the first pick from the side of Luminaire's Lyre will be the Angela. Okay, Angela coming into the play yet again. They don't pick up an Matilda this time. I'm surprised that Team Luminous Lyre, they did a very good job onto that Matilda. They could have prioritized it yet again. Maybe they are running up a Martes. Oh, okay. Maybe a Martes or a Martis and an Alpha Angela combo that I'm looking at. Maybe an Alpha and Angela could have been a banger here, though. But I'm really looking forward to see Sonia on the Martyrs because she does a great job in that. Then again, just look at that. Finally, Peachy, your wishes have been fulfilled because there will be the Alpha being picked up from the side of Team MAAF along with the Aurora. Okay, Aurora coming into the play yet again, but on a different team right now. Team MAAF, they prioritize that Aurora very well. Looks like they are going in for a dive-in composition with Aurora backing them up. Now, Team Luminous Lyre, what are they going to pick? And yes, as we predicted, the Martis will be coming onto the play along with a Lapu Lapu. Again, a very good
Pick, but how far will be the Lapu be viable in your opinion, Asya? Lapu Lapu did receive a buff, and I really believe that he can do an amazing job, especially because he has a lot of CC in build, and with the Angela and Lapu Lapu, well, of course, like the Angela will be just using her hard card onto Mortis, but then again, Lapu Lapu will be zoning people away, especially the mage and the marksman need to be careful of that flicker combo. Yep. Again, coming back to the ban section, they are still banning up more of the heroes that would be truly annoying. Maybe I'm looking at a tank getting banned like in Carmilla, or onto the side of team Luminous Lyre, but onto the side of team MAAF, maybe the mages. I'm not sure, but let's just see. Well, I think the marksman. They could be marksman banned, just like you said, but they will be going in for a Valentina because the mage hasn't been banned yet. I do not want any, alpha charge being copied or the barrage from Dixie or even the frigid glacier from the Aurora. Like Valentina is a mage who can do the Uno reverse. So yeah. And moreover, what do you think, PG? Like if Valentina has been banned, they might even go for a CC tank like Tigreal. Not Tigreal. I like your suggestions, Suya. Tigreal could be the one playing up very, very good, but let's just see what will be they going to ban up. One of the bans still waited up, and Valentina getting banned as well. Understandable. Do they want to go for something interesting? Maybe they are going in for an Atlas. I'm not sure, but maybe they could, or maybe they they won't. But let's just see. Harith gets prioritized into the bans section. Again, understandable, you don't want it onto the goal lane since both the teams are lacking up. Not both the teams, but Team Luminous Lyre are still waiting it up to pick up a Harith, and I feel like Harith could be the one closing up the distance to reach up Ixia, but the team MAAF really has to play around the Ixia a lot, and if they make sure the Ixia is getting farmed up, it is going to get deadly. I mean, true, she does have that range PG, but then again, I really believe that a carry could do a better job if you support her well, because Mortis along with an Angela will be really, really hard to kill. And with that, the final ban coming from the side of Team Luminaire Lyre will be the Carmilla. They did not want that curse of blood which multiplies the damage. So yeah, pretty great bans. And along with that, the Diggy has been also banned out. I do not understand why did they ban out that Diggy though, because they do not have much CC right now, or maybe they're just planning to take up some CC from here on now. Maybe or maybe not, but since we are back into the picking phase, let's just see what they will be going ahead. Oh, the Diggy as well as the Ixia strat, I think Team Luminous Lyre, they caught on. They really banned it up before Team MAAF could go ahead with, but the CC coming into the play. Again, understandable. A very good matchup against a Lapu Lapu, but she needs to evade all those attacks coming in from the Lapu Lapu. BG, that CC, I believe that the CC is the winner of the comp right there because she can definitely melt people around. She can definitely, do solo with the Lapu Lapu, especially because of passive lets her heal up. She can rotate pretty fast and she does a lot of damage. So I'm really hoping to see her trying to zone people away, trying to create some space for the marksman, for the mage to use their skills. But just look at that. Will I be seeing a Kagura in a tournament? Like, it's been ages since I saw a Kagura. Then again, PG, the Masha? Like, Luminaire's Lyre did go for Masha in the goal lane in one of the matches I casted for them, and she was doing an amazing job, especially towards the late game. Masha can literally, single you out. Like, one hit and you're Yeah. dead. Oh my god, the Masha into the goal lane. Okay, this is like a three fighter composition that we are looking at. Understandable, so much potential. But I do feel like onto the push side, they might be losing it onto the side of Team Luminous Lyre, but it could be covered up. It could be covered up by the Martyrs or maybe Nor.
but let's just see. But along with that, side of Team MAAF, they go in strong. With that, we are back into the land of Dawn. You're watching the third match of the day between Team Luminous Lyre versus Team MAAF. They are on a lead right now. Talking about Team Luminous Lyre, will they pick up the victory, taking them to the grand finale, or will they be going into the match number 4 by Team MAAF? Because I do see some interesting picks right here into this match. I mean, true, and I really believe the CC and the Franco are amazing pick, PG, because you need to stop the Mortis, and the suppression coming from the ultimate of Franco could be that one pivotal point. Great bloody hunt could make them, lose this game or win this game. I'm curious to know what they are going in for, because it is just the early game, so yeah, nothing much going around. It is just the Franco trying to hook them up. On the other hand, 2 members already there onto the bot lane. CC still taking up so much damage. The as well as the Angela dealing damage. Okay, maybe not. Okay, look at the Alpha going in strong. Chippy will be taken down. First blood already secured into the hands of Alpha. They try to go in for more. Will they be successful though? Because I do feel like the other side jungler, the Martis is still there. The decimation comes into the point. 1 kill already there. Another decimation doesn't hit on time. Martis walking away in a sliver of HP. I mean, 2-for-1 trade, and that also was Angela, who is the roamer, so I think the Luminaire Lyre definitely won out in this exchange. But then again, did you see how CC is winning out in the early game? And Angela is there to support Lapu instead just going in for the goal lane. Maybe they're, really secure about the goal lane, but just look at that once again. Yup, they go in for more. They're trying to get each other's blood, unable to do so. They just back out for now. The turtle is up. The total fight could have taken down. Okay, Kagura coming up with the stand right there, but the goal lane definitely winning out by Ixia. This is surprising to know, but once it goes to the mid lane to the late game, I want to see how the Marsha is going to deal so much damage. I mean, true, right now she does have that range for the poke, so of course Masha will be suffering. But then again, the late game she will be one-hitting that Ixia instead. But the turtle dance has started, but I did not see Sophia in there. Okay. The turtle might go into the hands of Alpha. They are still dealing so much damage. They go in for more. Their Alpha is all alone. Ixia coming up with the full barrage along with the flicker. Wasted out because he catches none right there. They are still stealing damage. And Sonia goes down. The Martis will be so much damage. Okay. The Iron Hook does connect onto the Kagura. She is safe for now. I mean, if you see that PG, that team fight, the bloody hunt saved up that turtle. Like, literally, that space was provided to Mystery Girls to just use up her retribution, to just use up her skills pretty well. So yeah, and at the same time, Sonia was kind of late into that team fight. The team from the Luminaires were not there. So yeah, easy turtle for the side of Team MAAF right now. But then again, if you see, the decimation was on to CC, and CC isn't getting taken down that easily, so definitely these 2 picks making that difference in the early game. Yes, you're right about that top lane. The skirmish might be on. Iron Hook once again does connect right there. The frigid glacier coming into the play. 2 men gets freezed up. They go in for more. Ixia is down. Along with that, Ixia tries to go in for the full barrage play. Now she did manage to zone out those heroes, but the Martis, look at Levi Ackerman coming in. The Bride of White's already. The decimation might come into the play yet again, but unable to do so. Ixia looking quite low in mana right now. She's still dealing so much damage, and we are seeing a pause coming in. I mean, one of the teams must be facing some technical issue, PG, as we just go in and wait. For her, I would sail across the cosmic sea to the end of time.
And with that, welcome back, ladies and gentlemen. That small pause was there, and we are back again. Look at that top lane. 3 members from the side of Team MAAF still dominating. Will they be able to get up? But no, they disengage. Coming back to the bot lane as well. They are trying to go in for invade Sonia. The blue purple buff looking in quite in jeopardy. They did not get a window of opportunity. They now move out. I mean, Joe and Sonia was there trying to take down Alexa with her passive, Uzu, on that Aurora. So yes, she was able to save herself with her passive, and then she was left in between 3 people. Of course, she would be taken down because the rest of the team was not there to support. They would have taken down. And with that, right now, both the teams looking strong, although Team MAAF does have that goal lead, that 15k. But just look at that CC right there dishing out so much damage. Like, it's not... I wouldn't like to be the Lapu Lapu at this point, PJ. That's true. Lapu Lapu has to rely on his skills as well as his basic attack, trying to come near the CC to deal damage, but unable to do so. The middle lane in jeopardy right now, will be taken down, or maybe not, because Kagura, on the other hand, tries to get her combos right, trying to make sure that she is still clearing up those lanes without any help. So moving back to the bot lane as well, the same situation, same story. Now the Franco looking for a window of opportunity, but the Alpha coming up with the Alpha charge. It will be the death of a middle laner right there. But the Iron Hook along with the Bloody Hunt into the body, the tower, the Lapu Lapu will be taken down. What a Bloody Hunt coming in from the side of Team MAAF right now. No chance on a roll. I mean, first of all, if you see in the mid lane, Alexa kind of messed up with the combos. She used up her second skill, teleported way far behind that security of the turret, and as a result, 2 people onto you were taken down pretty easily because you had just used up your Purify as well. But then again, just like I said before, PG, CC, with that immaculate sustain on the bot lane, she was able to sustain so much. Yep, that's true. Now the shift is totally onto the top lane right now, because with that the turtle will be coming up in the bot lane. It is going to be another neutral objective that both of the teams will be looking forward to, because I do see Team MAAF already coming up, grouping towards the bot lane already. They started up the turtle. Alpha, on the other hand, already there is the Aurora. Along with the Aurora, the Franco still waiting it out, zoning them out. Look at the domination coming in from Team MAAF. Another option might come in. They are still trying to deal damage. There's some poking. There's some heroes getting killed and getting poked as well. They go in for more. Sonia will be taken down into the hands of Uzu. Now, there we go. Another Iron Hook does connect there. It will be the Angela falling down, and they are going in for more. Okay, another kill secured. It will be the side of Team MAAF going down, but they are what is happening? There's so much going on to the bot lane right now. 4 members are already down from the side of Team Luminous Lyre. I mean, they did a great job in this game, especially the Franco. If you see, he is target locking that March, just not letting him use his CC, not letting Sonia use up that decimation, which is needed quite a lot. I mean, just look at him right now with a 2-3-1. And at the same time, I'm really seeing that GP is kind of wasting her ultimate at a lot of time, because if you see, even in the previous engage, there was no engage from the Mortis, but yet the hard guard was onto him. And yes, a team fight was kind of forced, so maybe they need to just wait it out patiently and really wait for the Bloody Hunt to get used up onto someone, because they really need Sonia with the damage, because if she's not there, they don't have it. But then just look at the top lane. Okay, another Iron Hook along with that Bloody Hunt. Oh my god, Lapu Lapu will be taken out. Another full barrage coming into the bot lane as well. Sonia will be taken out once again. The hard gut coming into play as well. Alpha still waiting it out for the Alpha charge. Goes in with the Alpha charge, still trying to deal damage, but the Marsha with so much damage will be taken down. The Alpha, Alpha shouldn't have taken down that damage right there. I mean, I do see Alpha going solo quite a lot of times. Like, your team is there to support you, but then again, if you see both the other members were either on the top lane or either on the bot lane trying to take those kills,
So really, Alpha need to, just look around before she engages, because most of the time she's taken down, she's kind of solo. Yep, you're right about that. But that's the work of a Masha. You need to be around the map. It looks like Team MAAF, they are going in for the Lord already. On the other hand, Masha still trying to make sure that they are getting up the neutral objectives without any issue. And yep, they did get a few of the turrets. Along with that, they take up the Lord. It will be Team MAAF with the Lord, and they will be marching down very, very quickly. Like for teams, things are looking good for Team MAAF right now with that game control, with the map control. They're really able to control the movements of their enemy. At the same time, I think Alexa really needs to take down the Ixia or either Uzu, because that's what Kagura needs to do, right? But instead, I do not see her. I just see her taking the last hits and not being able to provide much utility. But look at that hook from no chance. I mean, all the hooks I've seen from her, she's doing a great job on that Franco. I mean, why don't you pick her more often, Peachy? I really want to see her play those hooks. Yep, even I want to see that, because it looks like Team MAAF will be going ahead into the game number 4, because they are marching down with the turret, with the Lord taking down those turrets left and right. Look at the passive going off the turret as well, as well as Franco looking for a hook. No chance. Okay, if the full brush coming into the play along with the flicker, it will be this Mart is going down. So much damage from that Ixia. Just the full barrage zoning them out right now. Team Luminous Lyre, they have been pushed back to their crystals right now. The hard guard already there onto the Masha. Masha is not able to get an opening. If she rushes down with a thunderclap right there, it is going to be a death. I mean, right now the side of Team MAAF does have that advantage on gold, like 70 gold lead, and at the same time, no chance, giving them no chance. I mean, just look at that hook with the Purify has been used up by Angela. Yeah, a great team synergy, great team composition, especially Sen on that Ixia. Like, she is farmed up, she has that damage at this point, especially from that, her ultimate can zone people away, and that's what helped them to secure those 2 inhibitors from the top lane and the bot lane. Yep, definitely. 5-1-2 already onto the Ixia. They are, onto the side of Team Luminous Lyre. There's no one trying to reach up towards the Ixia, even though Ixia's position was compromised into the last position, last team fight. She was there with the flicker. She almost flickered in. That was just a wall stopping her to go in. And if she were caught right there from, maybe onto the Lapu Lapu, or maybe, another Inok along with the bloody hand coming in, to with the Chippy will be going down. Angela down. That means no hard guard for them, along with that thunderclap onto that. CC so much damage. Look at them. They are going in for more. They are trying to make it short, but in this time it will be the Ixia falling down into the hands of Masha. Masha onto the other end, still sustaining. Will be going down. Now another kill picked up by Alpha. They might go in for triple kill. Maybe a Maniac coming in, because the Alpha charge might be in cooldown right now, coming up very, very soon. It was just the Lapu Lapu surviving. Will he be able to clear those minions on time? I mean, I don't, or maybe because GP is already there, the hard guard is available, he can, if she can buy some time which is needed, maybe the rest of the members can just spawn back. Close call. Look at that Alpha trying to go in, charging up. The minions are still pouring in from every single lane right now. They did not get in window of opportunity. Along with that, the hard guard already popped up a very early hard guard. This means that it is going to go on a cooldown despite having a fleeting time. It is an easy load for them, unless Team Luminous Lyre go in for more, because they are trying to go in. Look at the Masha's opposition. Goes into the thunderclap, tries to get him damage on the full barrage coming into play as well. Another full barrage along with the flicker. It will be the shutdown. Along with that, Martis will be going down. 2 members on the side also. Luminous Lyre are down. They going in for more. Alpha on to the other hand, still recharging his HP onto that creep. Is it an easy push? Maybe a last final stretch coming in from Team MAAF. They take up the Lord. They did get up the Lord. Team MAAF, they will be marching up. They are already gathering around the bot lane. Look at them. They are low in HP right now. Will they be going ahead? But the Ayunuk does not connect there once again. But
As the Lord marches down, I think they will have a really hard time because they do not even have sufficient minion clearing which they require. At the same time, a lot of wastage of skills coming from Alexa and also Chippy Chippy of just like you said, hard guard coming on too soon onto people, and then Kagura using just missing her ultimate. She really needs to mark down the mage. She really needs to mark down the Ixia, and especially I really believe that Ixia should be an easy target because just like you said before, she almost flickered into the wall, into the enemy base, but there was no one who could actually take her down. I wonder why Kagura is not, prioritizing. But then again, like they did manage to save up this time, but they have lost all three of their inhibitors. Things not looking good for them. They are facing that minion pressure. Yeah, they are definitely facing that minion pressure. Again, they don't have a very easy lane clearance. They are still trying to make it through. It is just the Marsha giving up a very good victory. Oh, they might go in for more because the team fight just started. Look at them. They're still dishing damage to each other. The Frigid Glacier coming into the play as well. Not much to the Whale, but it will be the Marsha going down, unfortunately. But they go in for more. The minions are still marching in. It will be the bot lane as well. It will be the top lane. Oh, another iron hook. Oh, there we go. It will be evaded by that Kagura so quickly, but the crystal is all exposed. Just one minion left, and from the mid lane as well, the minion will be coming in. Sonia will be taken out into the hands of Ixia. Ixia gets a double kill. The co-entry try to take in for more. The cannon minion still into the base. Look at them. They're hitting the crystal, and with that, team MAAF picks up their first ever victory. There we go, taking us to the game number 4. And with that, we are back again. Look at the scoreboard. Look at the Ixia's damage. Sen. So much damage. 26% damage. Almost equal to the Alpha Mystery Girl. That Alpha pick really proved out very, very well. But along with that, the Franco though, that hooks were on point every single team fight. Well, I agree. I highly agree. Just like I mentioned before, Candy Twitch on the CC, and no chance giving Martis no chance. Yep, you're right about that. It was that Alpha. Along with that, I feel like they could have picked up the, some maybe a Beatrix trying to be there for the team fight. Maybe they could have gotten that early game, clearance as well. That Marsha pick did work well, trying to make sure to get, a split push, but it lacked into the team fight. She is not a team fight hero. She just goes in, tries to make sure that she's just one-shotting those heroes and going back. Maybe like a Natalia, but bulkier. Well, yes, but then again, I think she would have worked out if there wasn't that snowball coming from the side of Team MAAF. I mean, they were on a rampage, especially no chance to the Martis, to Sonia to display her skills. And that's what I said, that suppression will be really, really needed. Those hooks connecting onto people, them wasting their resources, their battle spells. So yeah, and then Ixia had farmed up along with that Sky Piercer. She did an amazing job zoning people away, and then actually no one was actually target logging her, even though she is so still one using her ultimate. So I think PG, like, that was the draft once again, and just like you mentioned before, the draft decides that which team might have the upper hand. So maybe in this game we might see another surprise for us is waiting. Yep, definitely. And with that, we are moving forward to the game number 4 very, very soon. So hold your horses. We'll be right back. I'm the boss.
her, I would sail across the cosmic sea to the end of time. I'm the boss. And welcome back, ladies and gentlemen. And this is the best of 5 between Team Luminaries, Lyre, and Team MAAF. Team MAAF with a score of 1. Meanwhile, the side of Team Luminaries on 2. So this might be the game point for them because they just need one victory. Or once again, this might be another game-changing epic comeback from the side of Team MAAF. So that the score becomes equal 2-2, and we are here just to notice that, just to see that what comes out of this game. I am your caster Rasuya, and with me is none other than Peachy. So Peachy, what do you think how this game will go? Okay, looks like Team going for that reverse speed, but the last game coming up quite aggressively. Now they did a very well job into drafting around. They provided a lot of support to the alpha along with no chance on a beautiful iron hooks coming in every single time trying to land it up onto the most crucial members of the side of Team Luminous Lyre. They did it very, very well. I want to see them to win up the draft yet again into the second match, and I do believe there is going to be the Aurora who is going to be as the respect band. And let's dive into the draft very quickly. Oh, Asya, what do you think that they might go in for some bans? What are your predictions so far into the match number 4? I mean, maybe banning out that expert once again could benefit Team MAAF because, you know, like, did you see that how Sonia was suppressed, especially by No Chance with the bloody hand onto her? She wasn't able to provide much into the game. At the same time, I really believe that a mage, more of a utility mage from Alexa, could do much better because Kagura didn't have much impact into that game. She couldn't target lock the people who she should have.
And yes, I think banning out the next Borg will be there, and like Joy is a permaban in all their matches as far as I have seen. So yeah, these bans, these picks, what do you think, PJ? Let's just see. Let's just see what will happen, because I'm curious to know, to jump into the draft very very quickly. But I feel like the Aurora should be banned along with that. The Xbox should be banned no matter what. When they opened up the Xbox, they should have made sure to take up some counter picks around that Xbox, but they weren't able to do so. And I'm talking about Team MAAF right there. But let's just see what will happen, because again, very important uh, time, a very important match for the side of Team MAAF yet again, because they are on a bridge right now that would fall if they lose up the game, and if they win it up, they are going into the match number 5. I mean, true, and with that, finally we are here onto the band phase. Like, we're just waiting it out with the girls will cook up in this game, especially Team MAAF needs to play it really serious, because if they want to reach up, move ahead into the tournament, they really need to win out this game. But with that Yeah. draft is set, everything is set, PG, the first band from the Team MAAF, what do you think it will be? I'm guessing maybe the Xborg, again a Bruno, maybe the Ixia, maybe I'm guessing the Aurora as well. Okay, looks like the Matilda will be prioritized. Understandable that you don't want to be opening up that Matilda. I mean, true, when you have her, it's like you have a lot of team compositions open, and there is, that opportunity to engage as well as disengage the heals, the shields. She's just an insane support, and yes, Team Up will be banning her out. And once again, the respect ban, just like we talked about before, they do not want Sonia on that X-Borg. Oh, you're right about that also, yeah. That Xbox getting banned, understandable, much needed, and yes, another respect ban coming in. And when you're into the fourth match of the day, you're already, you have shown your cards. The card of taking up the comfort picks, showing up of what heroes that you play best, and yes, if you calculate it very well and put those heroes into the ban section, it could be Team MAAF winning up the draft yet again. But let's just see what will Team Luminous Lyre would be banning up. Looks like they are going ahead with the Lilia as well as the Phobias and the Joy as the Parma pen. Every single matches we did see that. Looks like they are quite annoyed by that. I mean, true, but just look at that. The first pick, once again, being the Sicilian. I think this is the opportunity for the Team Luminaries to pick up that Aurora, because just look at that. Like, this Queen has been doing amazing job providing that CC, but then once again, Sicilian is another force to be reckoned with. They just need something to, take down the Vexana, maybe take some assassin who can just target lock onto her, because if she's not taken down, she will be a really, really, bone of contention in those team fights. And with that, Khalid, finally a Khalid being picked up, basically. Yep, and this time it will be on to the side of Team Luminous Lyre. Understandable. They want to prioritize those dive-in composition. Both the teams, I have noticed that they go in strong with the dive-in composition, and once they pick it up, they go in very quickly. But it looks like Team MAAF already picked up the Ixia, along with that Gadot Kacha, along with the CC. Their late game is secure right now, but again, they need to mind their position. And onto the side of Team Luminous Lyre, what are they going to pick to counter the Ixia? Because they need a counter badly. They need to close that distance. Maybe an Harith could come into the play, but looks like it will be a Alpha Jungle. Team Luminous Lyre, they are catching on their tricks already. I mean, true, but as far as I say, PG, like, it's kind of a repeat of the first draft or the game before the previous one from the side of Team Up, because the Sicilian was there, Katot Kacha was there, and they ended up having only a Katot Kacha as the initiator. So I really believe that the marksman and the mage pick is really great, but you need people to provide that space and time in your draft. So maybe go in for a CC, because just look at Luminaries right now.
Khalid will be really annoying in the early game. Even though he got nerfed a bit, he's still great. And Aurora, of course, we do know she will be providing a lot of CC with two of her skills. And Alpha, a really great jungler in the early game. He has a fast jungling speed. He has that alpha charge with a really low cooldown. So the draft looking really hefty right now. Let's just see that how Team MAAF just counters it out. Okay, the draft is going on quite strong. Both the teams prioritizing a set of heroes that is, again, trying to make sure that they are going in for a dive in composition. Understandable that they want to pick it up so that they won't be coming up with strong heroes. But yes, it looks like Team MAAF will be prioritizing those Ansela as well as the Rafaela, which could be very well paired with the Alpha. So yep, a very good band. Now coming back to the side of Team Luminous Lyre right now, what are they going to pick? I'm curious to know. Two of the heroes yet to be picked, the tank and the marksman. I'm curious to know what are they going to counter for the Ixia. What are your guesses, Asiya? Maybe Irital or 1-1 PG? Because I think 1-1 can do a great job, but then just look at that. They will be going in for a Brody once again, and in the first game, this Brody, his damage was massive. Especially Brody did get a buff recently, so he's been performing quite well. So I really believe that Team MAAF needs to shut down the Brody quite often, or else he will be creating a lot of problems for them. Okay, understandable. Brody though, I don't think like how Brody would be the one closing up the distance, but again, his high burst potential would be the one making sure that the Ixia would be running backwards, or maybe either way, the full barrage is the one going to make sure that the Brody is running away. But let's just see what will happen, because two picks yet to be picked onto the side of Team MAAF. They go in with an Akai Rome, along with an Akai Rome, the Roger as their jungler. I am so surprised to see a Roger back into the meta. They could have gone with a Fredrin as well, but what are your thoughts on this Roger, Asiya? Well, PG, I mean, Roger is strong in the jungle, although he did get some nerfs. But then again, I really believe that he really needs something like an Angela always supporting him if he wants to do well. But then again, it also depends on the team, how your team is able to support. But finally, that Akai, I think, is a great pick there, because he will be able to use his heavy spin to just push people away, help them disengage, provide some space and time. And also, he can also, provide the initiations if he's able to pin people on the walls. So let's just see how Team MAAF executes their draft. Because if you ask me right now, Team Luminaries, their draft looks a bit stronger to me. Okay, understandable. Yes, I do feel like they are on upper hand right now, given that they have picked up a Minotaur. Along with that, they have a dive in composition. That means that the Minotaur could go in with a Minonian Fury along with the Flicker, trying to catch up every single member. But Akai, on the other hand, with a heavy spin, would be always there, trying to make sure that they will be stopped by. So, and with that, ladies and gentlemen, we are back into the land of the fourth match, the most crucial match between the side of Team MAAF versus Team Luminous Lyre, who is going to be the one winning this series up, because Team Luminous Lyre, one match win, they are going to the grand finale. And if Team MAAF wins up, we will be seeing that with the match number 5. I'm curious to know, and with that, both the teams, they are zoning out the lethal, trying to make sure that they are dealing damage to each other. I mean, true, and like Minotaur doesn't have much of a sustain in the early game. He does have those heals though, so he will be safe for now. But both the teams just playing it strong. Just look at Khalid. Annabelle just doing the Khalid gameplays right now, because he's great in the laning phase. But although she's looking in a bad position, she might be able to escape. But she's trying to cut that lane. Okay.
they are just trying to make sure that they are rotating out very well because the turtle will be up very, very soon. Okay, the Sanguine Claws does spot out few of the members on the side of Team Luminous Lyre already, but Gatotkacha looking quite low though. I'm not liking how Gatotkacha is getting so much damage from the Khalid, just trying to wait it out, trying to make sure. But look at Team MAAF right now. They're waiting for the Aurora to jump in, trying to make sure they're rotating, but the plan is flopped. I mean, I really believe that if there was some rotation towards the EXP lane in the early, they could have secured that first plat because Annabelle was really low. But then again, Khalid's early game damage is really insane. I mean, just look at that. Oh. So okay, top lane might Gatotkacha will be taken down with that the first blood already there. Alpha jumps in with the Alpha charge, trying to deal so damage to member. Okay, he jumps in defensively for now, but the Akai is all alone. He tries to come back. The Minotaur Fury already baited out though. Oh, that's not coming to anyone. Ain't no way they pop the Minotaur Fury right before the turtle, and the turtle is just wide open for both of the teams to take. And maybe look at them, they're trying to go in, but it will be the Khalid still zoning them out. They still have another touch, but Mystery Girl will be taken it along with that. Chippy will be the one taking down the Sicilian easy turtle. But no! Turtle wins up the win. Turtle making sure Team MAAF gets it no matter what. I mean, what was that? So we are just missing on that retribution. That one basic attack from the Gatotkacha securing that turtle. Oh my god, doing an amazing job. But just look at the Daki looking really low. But she will be able to escape for now. And at the same time, PG, I'm saying that the side of Team Luminaires do have a better rotation because, the Khalid was so low. And yet, you did not went, he was in a really low age. He did escape, and Uzu was there for the support, but then again, a guy should have seen that turtle is in the top lane. It's really, they should go and low gank. He's muted. For her, I would sail across the cosmic sea to the end of time. And welcome back everyone. There was some slight, disconnection from one of the teams, but they have just fixed it. So yes, we are right back into the game. And yes, just like I was speaking before, there was a lot of waste of resources, and the Gatotkacha securing that last hit onto the turtle, another iconic gameplay. But then again, I really believe that Team MAAF is really lacking that, rotations from their side, because Team Luminaires are always on their heels going from top to bottom, and finally I do see Annabelle in a very, very bad position. But the Raging Sandstorm just being used to escape, but EOTG again wasted once again, PG.
But the heavy spin does connect there onto that Ixia. Okay, it will be the Brody who will be taken down. Ixia trying to run away from the clutches of Akai. She will be safe right now, but the Millionaire Fury does connect onto the Akai. Akai in a very bad position. The Frigid Glacier onto him. So many ultimates on him. He finally falls down. The top lane though, they still don't have, the Khalid does not have a flicker. The Khalid has to wait it out now. On to the other hand, the turtle will be up very soon. Maybe we will be seeing some kind of situation there as well. I mean, true. For now, Team MAAF looks to be in a better position, especially securing a kill onto a marksman, as I've also decided to just invade near the red buff. So they are looking really low, but I do not think that they will be just engaging. They're just trying to control the river area for now, trying to control the map so that they can safely secure the second turtle for the game. No. Yes, you're right about that. 4 men already trying to take up the river, controlled it themselves. An easy turtle yet again into the hands of Mystery Girls. But look at that, the full barrage. Oh, so much. Just 1 HP. Right shot with the basic attacks yet again. Get up the Brody. Brody is in a deficit right now. Talking over the top lane right there. Minotaur trying to stand up, trying to get a knock-up. 2-man knock-up already there from his first kill, and he still waited out for his Minotaur Fury. He does have it. He doesn't have it along with the flicker, but they are waiting it out for the Alpha to jump in, but the Alpha is on to the other side of the map. Sen destroys the turret, gets up the turret, but the mid lane looking quite low. It will be the Cecile and going down into the hands of the Aurora of the Pride of Ice already there, but the Roger jumps in with the like and pounds. So much damage onto them already. I mean, MAAF doing a better job. They're doing great, and especially I really believe that Sonia is being pushed behind. She's getting zoned away, so the team really needs to give some support right there, because Akai's damage, Akai is a great tank, but then again, his damage is also great because it's HP based. So yeah, like they were doing pretty good as well. The macro gameplay looking good once again from their side. And it was also on that goal lead for now, 2k goal lead, and I really believe that Oh, okay. Heavy spin comes into play yet again, but Akai will be the one falling down, taking so much damage from the turret. But the full barrage would be there. 1 member already down. I believe it will be the Aurora going down. So look at them. They are trying to go in for more, but the Roger will be safe for now. They try to making sure that they get the turret, but I do believe like Team Luminous Lyre would be there on time. I mean, true, and I was really hoping that we'll see some good gameplays from the side of Team Luminaire in the early game because of Animal on that Khalid, and also they have that Alpha, but then again, they were in the, up front in the early game, but now it's almost 7 minutes into the game. Those 2 turtles secured by Team MAAF really giving them that goal lead, giving them the upper hand in the game right now. I really believe that Team Luminaires need to group up, wait for the Brody to farm up, maybe? Yep, Brody could really be the game changer, but again, one good set coming in from Chippy would be game turned, tables turned instantly. But again, Team MAAF, they are playing it all together. The heavy spin is on point yet again, coming in from the no chance. Look at them. They're grouping up into the middle lane right now. It is just, okay. The Khalid jumping up with the Raging Satchel. Look at the Mirror and Fury connecting there onto the 3 people right there. Alpha charge onto the game as well. They still go in for more. The AOTG does not connect there, but Khalid, sorry, not the Khalid, but the Katokas are still soaking up so much damage. He's still sustaining. Look at his passive going up and down constantly. Roger trying to get a window of opportunity, but Roger jumps in. Sorry, the Brody jumps in with the basic attack along with the torn apart memory will be taking down that Roger. The middle lane already gone, and easy middle lane picked up. Looks like Team Luminous Lyre, they are on a roll. They picked up the tempo right from the hands of Team MAAF. But this is the opportunity which Team Luminaires were looking for. I mean, taking down Uzu in the mid lane, like, she's doing a great job with the Sanguine Claws, with the bad impact, dishing out a lot of damage, so they cannot afford to lose her. And yes, she was gone down once. Along with that, so many casualties on their part. Even losing up the first tier turret from the mid lane, not a good sign, because that opens up the map quite a lot.
That's true. That's true. With that, it will be the side of Team. Okay, the full barrage coming to the play yet again. The quicksand almost healing up the Khalid, unable to do so. The Akai jumps in, tries to get the heavy spin, does get the heavy spin, but the Minotaur is always there to jump away, trying to make sure that he is stopping up, trying to reach them out for the Roger, but the Roger jumps in with the Lycan punch, unable to do so. He's still waiting it out. It is the Katutkas are still taking a lot of damage, and the Lycan punch, it will be the game over, the life over for the Brody. Maybe they go in for more, but I don't think so. They need to go in vain. They might go in for that early Lord, though they do have an advantage. I mean, the team fights just swapping left and right like a pendulum. Sometimes it's Luminaire on the, up front, and then suddenly it's Team MAAF taking that position back, and I really believe that Uzu is the one dishing out a lot of damage, and those Sacred Claws. So yeah, the team fight is on again. Yep, look at them, they're going in for more. The exchange of damage, right there. The full barrage will be the one taking down the Alphas live. Now, they try to go in for more, but they just took down the Lord. So, yep, it is a wise decision. They just look up wherever they feel like the map is open, but I feel like they chose the wrong turret because 3 members are already so. Look at the Savage Claws along with that. It will be a monster kill for the Ixia. The Blazing Center comes in handy as well. Double kill picked up by Ixia. She is still dealing damage. Along with that, the bat impacts coming into the play as well. 4 members are already down from the side of Team Luminous Lyre. Now, the tempo is definitely in the hands of Team MAAF. I mean, if you see her AOTG, it's always connecting onto so many people, and it's always on point, and he actually waits it out before the disengages potential from the side of Team Luminaries is just used up, and that's when I think the Katotkacha is playing a really great role in those team fights with his AOTG, and then again, the Akai also doing great job with the heavy spins, just pinning people left and right, and also he knows the priority picks because I've always seen him with the Brody getting pinned, but just look at him, he will be escaping in 1 HP, and finally the Lord marching from the top lane PG. Oh, but the lanes are not saying. That is not an option. But with that, the bot lane will be going down. The inhibitor is already popped up, but it will be the Brody picking up another kill onto the Akai. No heavy spin for the game, but he uses it up trying to make sure he gets the Brody. But I feel like they could have gone in for the mid inhibitor as well, since both the inhibitors are looking quite low already. I mean, true, but what can I say, PG? Like right now, Team MAAF on the upper hand with that gold lead of 7k, and the kills are almost like equal. But then again, the macro is really on their side right now. They're controlling the enemy movements. They're just baiting away their skills, and then the Katotkacha is like a final nail on the coffin. He's being initiation up front, but there is a team fight once again. Yep, the team fight is on. The bat feast along with that. It looks like Sicilian was in a very bad position, but he is safe. One of the AOG does come in handy, but the heavy spin. Akai walks away safely, but full barrage along with the flicker will be taken down. 2 members from the side of Team Luminous Lyre. They go in for more. It is the Roger still sustaining, but it will be the shutdown with the hailstorm. Okay, the base would be all exposed right now since the minions are already walking in. Well, true, and I think this is the last struggle from the side of Team Luminaries as the minions are marching down, but then again, they will be able to defend, especially with the Hannibal right there. Maybe so, because it will be the Khalid stopping them. The quicksand already used up. The 1 cannon minion still left. Looks like Team MAAF, they are not going ahead to push the minions down because their window of opportunity passed away. The Lord is free for them. They just need to burst down the Lord very quickly, and if they do it, it is there. But are they waiting up for the side of Team Luminous Lyre to walk in? Because I do feel like they are just waiting it out. I mean, they could have taken that Lord pretty easily because they're far away, but then finally Annabelle going in, providing that vision which is required, but then Katotkacha doing an amazing job with the vision as well as the sustain.
Oh, the retribution will be won into the hands of Team MAAF. The Lord already down. Legendary picked up by Ixia on another kill into the hands of the Akai as well. Roger goes in with the Lycan Punch. Alpha down. 3 members are already down from the side of Team Luminous Lyre. Look at the domination as well as the aggression coming in from Team MAAF. They go in strongly, trying to clear up those lanes. Oh, another full barrage coming into play. The crystal looking quite low. The frigid glacier does manage to clear up those minions from the middle lane. Unable, it is not available for them. Looks like Team MAAF picking up another victory, taking us to the game number 5, Asuya. I mean, at this, what can I say, PG? The Katokacha and the Akai deserving that MVP in my eyes because they did an amazing job. They pinned away Daki. Like, if you see, like, even if no one was actually dealing damage to her, that Akai made sure that she cannot dish out the damage at the same time. Like the UTG connecting onto so many people, and also how well it was timed. Beautiful work done. Yep, and with that, what a match coming in from the side of Team MAAF. The score is currently 2-2-2. Oh my god, another match in, and it will be so crucial for both of the sides because I can't believe that these girls are going out all strong just for the spot into the grand finale right now. The biggest day, the stage is all set and it is coming up very, very soon. Who it will be? Will it be Team Luminous Lyre or will it be Team MAAF? Both the team looking quite strong. Team MAAF really pulled up the last game, taking up the domination right into their hands, even though they gave away that alpha. I do believe, the Akai is one of the key important factor because that heavy spin did connect every single time. I mean, true, and this is something which you mentioned again and again. Akai and Gatutkacha on point, always locking down the priority targets, and of course the Ixia with that zoning away with that damage because she was all farmed up. And with that, I think we will be going in for the short break as we will be waiting it out for the last and the final 5th match. So stay tuned, everyone. For her, I would sail across the cosmic sea to the end of time.
sail across the cosmic sea to the end of time. I'm the boss. For her, I would sail across the cosmic sea to the end of time.
I would sail across the cosmic sea to the end of time. I'm the boss. For her, I would sail across the cosmic sea to the end of time.
sail across the cosmic sea to the end of time. I'm the boss. Welcome back, ladies and gentlemen. I know you've all been waiting, we've all been waiting, and we had some issues, so yes, we will just be right back for the fifth match between the two teams. And since this is the best of five, this is the crucial game. Both the teams need to play it out really serious because the victory in this game decides that which team will be leaving us behind and which one will be continuing on in this tournament. And I am your caster Asuya. With me joining is none other than Itami. So, hi there, Itami. Hello Asuya and hello everyone. As Asuya said, we are back onto the semi-finals, which has been extended over a game number 5. So both of these teams are doing really well onto the previous 4 games. So it like this series had to go on to a game number 5. So that was kind of a expected as well as unexpected, but it shows that both of these teams are really strong contenders, and the draft phase, the ban phase has already started, and they have decided to prioritize with the Joy ban. So as well as the Xbox. So two jungler bans coming up so early. This is the fifth match where a Joy has been banned out. Of course, she's been climbing up the meta right now. No one wants to deal with her because she's quite annoying. She can dive into the back lane. And with that X-Perk Itami is definitely a respect ban. This is the third time Xbox has been banned out because they do not want Sonya onto it, just because she plays it really well. I agree. The Xborg as well as the Martis last night was really good from coming up from Sonya. So maybe they might ban out the Martis too, but I don't think Martis will be quite ban worthy, and you will be losing one ban spot. So instead of the Martis, you can go with something else for the ban section. The Matilda ban is coming up. That is quite expected considering how much of heals she can provide onto the game and how much she can initiate as well as make those escapes with that wind, and as well as that wings coming up from him, and Ixia as well as that is Joy. Maybe I don't like. It's Katotkacha, and Okay. it's definitely Ixia and Katotkacha being the respect bans in this game because they did spell a lot of trouble for Team Luminaries in the previous 2 games, especially Ixia. She was getting farmed up, she was cloning people away, and especially with that Sky Piercer, she was hitting those numbers. And of course, the last game that Utkacha did an amazing job with the AOTG. He even, took down the turtle with a basic attack when he was all alone. So yeah, they did not want to deal with any of these two. Now since, both of these signature picks for Team MAAF have been banned out, we just need to wait out and see that what will they pick up instead. And look at that, Itami, the first pick on Daki will be the Lilia. The Lilia pick coming up, the Lilia onto the early phases of the game, she can already deal some ridiculous amount of damage even before getting those core items like the glowing combined with the Ice Queen wand. So for the early game execution as well as
if from the side of Team MAAF there is a utility kind of a jungler or a utility kind of a composition, tanky kind of a composition, then Lilia might be a really good pick. But against a flashy assassin kind of a composition, she might not work out that much well. But the next picks coming up from the side of Team MAAF, that is going to be the Aurora followed by the Phobius too. So dashy kind of heroes are getting kind of denied because of that Phobius pick. I mean, it's been the first time in these 5 matches where the Phobius was kind of left out because there are so many respect bans in the first phase. The Sicilian, Matilda, the Exberg, the Ixion, also the Kajut Kacha. So we will finally be seeing this man making his debut in the Land of Dawn. And then with that, Team MAAF going in with the Aurora, another great mage. She's the queen of CC after all. She just needs some, close range. And she can shut people down, provide some space and time for the other teammates to dish out the damage. And with that, just look at Itami, like Benedetta from the side of Luminaries has been picked up. And we have seen it even yesterday that she did an amazing job with the Benedetta Annabelle on that. What do you think? Indeed, the Benedetta the Benedetta against the Phobius might not be that much of a good idea, but still, the Benedetta pick, it depends upon the comfort. Like, it depends upon how good you are going to be using this hero. That kind of hero is that Benedetta. She is not that easy hero too. Like, it requires a lot of mastery to be actually able to master that Benedetta as well. But we did saw Luminaire Lyre actually picking up the Benedetta last night, and they were able to execute it quite well. But a Roger pick coming up from the side of Team MAAF. So Roger definitely most probably is going to the jungle after those nerfs. He was like, before that nerfs, he would be used as well as prioritized as the first picks. But right now, he can be only played mostly onto the jungle. So I mostly only see him onto the jungle and no more onto the gold lane. So gold lane Roger is kind of a bad idea considering you are going up against a Bruno. Well, true. In the last game, Team MAAF took up that Roger onto the jungle, and yes, it worked out. Especially because there was a massive support from the entire team. So I think they will just, make it work out in this game too. But then again, combo of Roger and an Angela works out really well, and Luminary Lyre maybe just knows that, and they will be just banning out the Angela because no one wants to deal up with those heals and that hard guard, especially towards the late game. It doesn't even have a cooldown because the fleeting time does the work really, really well. And with that, the final 2 bans, with that it being the Alpha. And I think Alpha is a great ban. And Julian Itami, 2 of the junglers been taken away from the side of Team MAAF. Yep. And the Julian, there might be someone from the side of Team Luminaire Lyre who can actually master the Julian, and she is quite good on it. That might be the reason why they have decided to ban it. But the Alpha ban is quite expected considering how good he goes with the supports as well. The Angela ban was also coming up, followed by the Harriet too. So onto the gold laning phase, Bruno might have some difficult time against that Harriet. So they have just decided to ban it. They don't want to risk it considering they have the Bruno too. And Bruno, onto the early phases too, he can deal some damage, but after he gets his core items, like after he gets that crit build, he will be able to contribute more onto the game. So true, I highly agree, and especially with the Malefic Roar, he's been just creeping up into the meta, and in the late game he can just, two-shot the mage. His damage is literally insane, so I really believe that the side of Team MAAF needs to pick up something who can shut down the Bruno, take him down, lock onto him, because Aurora will not be having a great time in this game, Itami, because Benedetta can always just dive into the back line, take her down. Popple and Koopa are the best partners in the world. Popple and Koopa is actually getting picked up from the side of Team MAAF. So, we don't see Popple and Koopa getting picked often onto the tournament scene. So, Team MAAF have cooked something really different. I guess they are relying more onto their comfort picks instead of those meta, because going up against the Bruno, there are other options as well, such as the Beatrix or maybe even the Clint. There are plenty other marksmen which would have been done even better. But
I don't doubt this Popple and Koopa pick actually, because Popple and Koopa can, he with the use of his spike, he can actually get some vision onto that map too. So after he gets his core items, he will be able to deal some disgusting amount of damage, and he got the crowd control as well. But a Bane followed by the Rafaela, I like what Luminaire's Lyres are cooking as well. Well, true. Bane will be really, really crucial on the team fights because Phoebus will be there trying to buying some time for the team. He will be there in the vanguard with his spellwire trying to sustain, but if he gets that knockup from the Bane, he will have a really, really hard time, and especially not to mention towards the late game, he can deal an immense amount of damage. Like, on top of that, they have the Raphaela for the heals. What else do you want? I highly agree, and this is going to be the decisive game between both of these teams. Luminaire's Lyres going up against Team MAAF. Both of these teams onto the semi-finals right now, and whichever teams are victorious, they will be securing a spot onto the finals, grand finals. And I guess without any further ado, here we go on to the land of dawn. But already Annabelle is having some hard time dealing with that Phobius, and as I mentioned before, Phobius will get his ultimate no triggered once Benedetta will be using that dashes as well. So that might be one of the reasons why they have decided to prioritize the Phobius. I mean, true, Phoebus being a really great counter for the Benedetta. But then once again, like we do see, like No Chance trying to support their marksman at this point because they do not want Bruno to be charging up, to be getting that gold. I mean, just look at that 4 members right there. I agree, and they are like trying to pressure onto that gold lane as much as possible. But Roger has already got that levels 4 spike, and they will just be focusing on to their neutral objectives. The turtle is yet to be spawned. There is still the 30 seconds timing, and look at Annabelle already having some hard time already. Roger with the engage onto Chippy. There comes the ultimate coming up from that Bane. Mystery Girl might be taken down, but it will be Kufra getting down. Actually, Mystery Girl is quite low. Roger will be able to escape. Naki on a bad position as well, but she will be able to escape for now. That is going to be a 1-for-0 trade. The first blood going up for the side of Team Luminaire's Lyre. I mean, this is what I was talking about, Itami. The ultimate, the deadly catch from Sonia will be disrupting those team fights really bad. But just look at that, Phoebus looking really bad position. But he did receive that support from Musu. Like, both the teams doing great at this point. I think they really need to look out for the ultimates coming from Sonia, though. I agree, and No Chance is actually trying to get some vision onto that Matilda. And the turtle already being spawned. This time it is going to be Team MAAF contesting the turtle first. And Phobius, look at the Phobius, just spamming his ultimate, trying to distract the Bane as much as possible so that he won't be able to engage. But Annabelle will be taken down. Mystery Girl will be securing that turtle. And there comes another engage coming up. No Chance will be getting that kill onto Sonia, and Team MAAF just got the advantage. They just got a turtle as well as 2 trades for themselves. I mean, true, things looking good for Team MAAF at this point. They were securing the first turtle of the game, and right now, even though the gold lead doesn't look much, these are the micro gameplays which add on to it. But then again, I think there is some lack of CC from the side of Team Luminous right now because Kufra jumping in, logging onto someone, the freeze, especially coming from Aurora, playing that crucial part in the game. But then again, like, I really believe that the EXP matchup is really not good. Because Benedetta does have a lot of dashes, she can roam around the map, provide support, but then again you will be providing free ults to the Phobius. I agree, and I guess Team MAAF having the gold lead just for now, and they are not trying to over-engage as well, which is a good thing. Actually going with the wind of a first item, but the Tyrant's Taki, and there comes the follow-up, but the Aurora will... Okay, that will be the Bane getting the deadly catch as well as a kill onto that Kufra. That is going to be a 1-for-0 trade for the side of Team Luminaire, even though it was Team MAAF with that engage, but they were not able to get that trade. The engage is not yet set up. Popple and Koopa is quite low, so it would be better she will be going back to her base, and exactly that is what is happening right now. I mean, true, the deadly catch just playing that game for them right there. Like,
Bruno was about to be taken down, but the deadly catch, the support from Rafaela, the heals, just on the nick of time, providing that support which was needed, and the gang kind of got reversed. Exactly, and the turtle will be spawning onto the next 5 seconds. I guess both of these teams will try to contest this turtle for now as well. The turtle already being spawned, and looking at the minicam, no engages by far, no chance on a backward. He was trying to get a vision onto their participation to be able to escape somehow. Benedetta with that engage with the ultimate, but there comes a bit deadly catch once again from that Bane, connecting onto nobody. The frigid glacier has been used out by that Aurora as well. There comes a Phobius trying to spam his ultimate and make an engage, but it will be Sonia losing her life onto there, and the turtle will be good. I guess that is going to be an uncontested turtle for the side of Team MAAF. As soon as Team Luminaire / jungler has fallen down, Team MAAF will be directly contesting onto the turtle. They are focused onto their objectives, and they will be getting the turtle as well. I mean, true, but just look at the Benedetta. She is looking in a really low HP once again. Maybe it will be. Okay, she was able to like disengage for now. Emily looking quite low. I guess she does have a black shoes as well, and she is quite low on mana too, so okay, she will be able to retreat. Kufra trying to another engage onto there, the jump not connecting this time. I mean, these Kufra's engages are really great. You know, I have seen a lot of Kufras, they are not able to initiate properly, but then this one, she's doing an amazing job. Giving no chance for people to dash away. And then with that, the macro situation also in the team, you know, in the hands of Team MAAF right now as the first tier turret from the top lane just taken out like that without any assistance. Yep, look at Uzu trying to make more pokes onto that Lilia right now, but looking at the tower advantage, it is going to be Team MAAF having that one tower advantage for not Annabelle. She was low on HP, and that Vayne will be taken down as well. That Vayne is definitely not having a good time, even though the utility kind of a jungler as well as a support may have the higher advantage, but the execution part is not mattering that much. Sin will be able to get that turtle, but it is going to be Daki falling down onto the Aurora getting that kill onto the Rafaela too, and Emily is quite low, but Candy Twitch will be able to escape somehow with that low HP. Team MAAF are absolutely going rampage onto this game, trades after trades, and they have the gold lead as well as these objectives too. I mean, true, 2 for 0 trade, not a good sign for the side of Team Luminaires right now because they're kind of losing it out on the early game. And, like, I highly believe it to not have much sustain, even though they do have that heals, but in the early game, the heals will not be enough. Rafaela really needs the, you know, flask of Oasis and the rest of her equipments because she can actually heal quite a lot. But just look at that Kufra with the Tyrant's Raids followed by the Frigid Glacier. Beautiful timing coming up, and you know the turtle will be another uncontested turtle side of Team MAAF. A really good positioning as well as map awareness coming up from this team. Annabelle might be taken down once again. That Phobius is definitely pulling that Benedetta at this point, and she is not having a good time. Roger with that engage onto the mid lane, and Popple and Koopa as well as that Phobius able to get that kill onto that Benedetta. So Annabelle, she is like the Phobius is a literal counter to their Benedetta, and that is what is happening. She is getting denied with those dashes, and no, she is not able to engage, neither deal damage. All like for now, she is just falling off. I mean, true, like even if she wants to go engage, take down Uzu or take down the marksman, which Phobius is always there in the front lane, trying to provide a wall, trying to provide that space for the rest of the team to join in, for them to deal damage. And right now, things not looking for good for Team Luminaires as the core lead of 5k on the side of Team MAAF right now. The macro also in their hands at, like, just look at the sinking coming from all the lanes. So many turrets down, and it will be the mid lane turret first here right there. HP will be, oh my god, that he was able to save from the Benedetta. Now the Aurora's freeze will be used out as well, but that engage coming up from Phobius, the Phobius will be taken down, and there comes the unstoppable from that Aurora, the Frigid Glacier this time connecting as well as getting the shutdown. But look at that Bruno, Daki with a really good follow-up will be able to take Aurora down. Uzo will be taken down, and you know that is going to be a 3-for-1 trade, and Team Luminaire's Lyres are actually fighting it off this time. Kufra, no chance, is trying to make another engage onto there, but there is no proper follow-up. She might be taken down, but no, she is barely able to escape.
And as long, like as late as this game is going, that Bruno is able to deal some massive amount of damage right now. I mean, true, but the pivotal point of that team fight was how Benedetta was able to initiate her ultimate, finally connecting on to three people with the Petrify combo, just chunking away the HP, and that's what the rest of the team capitalized on. And these are the kind of engages we really want to see. Agreed, and the Lord already being spawning, and it's Team MAAF actually who is contesting for the Lord right now. And I guess they will be able to contest it unless Bane comes up with a really clutch play. He is trying to engage onto that Lord fight as well, but there is no proper vision. That is going to be a first Lord going up from the side of Team MAAF, and they are disengaging as well. No chance trying to jump in, but she won't be able to do so. She is aware of the consequences too. But looking at the tower advantage, Team Luminaire is actually having the more tower advantage. They are one tower ahead, but still the goal lead on the side of Team MAAF. I mean, they did manage to secure the Lord, but then it was traded with the turret from the top lane. And yes, Benedetta with her mobility will always be there trying to split push. And as the Lord marches down, I really believe that since this is the first Lord, they will be able to chunk it down pretty easily, especially with the fact that they do have that Bruno, and the Bruno is farming up. She's doing good with her positioning. She just really needs that late game. And just look at Benedetta, she's just clearing that lane right now. She was able to escape somehow. The Frigid Glacier connecting all people, but okay, Team MAAF are just focusing more onto their objectives. They are trying to get the tower advantage, and that will be the tower taken. Okay, not taken down yet, but the tower has been taken down for now, and they are just focusing onto their towers, trying to sink those lanes. And I guess Luminaire Stars have one tower like onto the bot side, as well as 3 inhibitors standing for themselves for now, and it is Team MAAF right now with the goal lead. And if a engage comes up, okay, Annabelle trying to engage onto Candy Twitch. She is on a dicey position. She might be taken down as well, but no, she will just be disengaging for now. Well, true, and both of these EXP laner taking a pivotal part in those initiations, and Candy kind of winning it out because, of course, it is Mobius after all. I agree, and Benedetta with the Petrify play coming up, and that Glacier being used out by that Aurora as well. The engage coming up, Popple and Koopa with the kill onto Chippy. Killing spree going out from the Roger. He is trying to go berserk, but okay, there's no proper follow-up. The Lilia looking quite low. The Black Shoes has been used by her as well. That is going to be a 2-4-0 trade for the side of Team MAAF. They are going to be focusing more onto their objectives too. And Team Luminaire Stars only remaining with that 3 inhibitor towers for now. I mean, do you see how Kofra and our Mobius just go in, beat out all the skills, and then there is this Roger in the front lanes trying to take down the squishies, and yes, he's quite successful. Like, just look at him, he's in the Thunderbelt, so he's kind of hard to take down because he will be having his defense up, but at the same time, Bruno is also firing, but just look at the engage. The engage coming up, no chance will be taken down. Just a Darky. The damage for coming off from that Bruno, a 1-4-0 trade, and Team Luminaire Slides are actually fighting this off as well, even though in terms of the kills, it is Team MAAF with the 7 kill advantage, but the goal lead is almost the same, so that is going to be the second Lord coming up. So I guess both of these teams will be trying to contest for this Lord, and they should be aware of their positioning as well. That heal coming up from that, like Rafaela, is quite high too, but okay, they are just poking and trying to get as much vision as possible. They are playing it in such a disciplined way, and intense match coming up right now. Well, true, they're fighting for the control onto the river area so that the team who gets the control can take down that Lord pretty easily, and meanwhile Team MAAF just waiting for their tank to respawn. No chance. Now finally back, both the teams in that river area, dancing around the Lord, looking for that one kill, looking for that one control. I mean, just look at Mystery Girl, she's trying to go back. Very bad position. She might be taken down as well. Benedetta with the 4, but the Mystery Girl somehow able to escape, and Annabelle will be punished. Sin as well as Mystery Girl quite on low HP. They will be able to retreat for now, and Team MAAF
They are still 5 members ahead. Annabelle will be the one falling down. They are just going back onto the base. They are quite low and they have taken some damage, but I guess that was a win-win situation for the side of Team MAAF. And the Lord is yet to be contested, and Popple and Koopa as well as the Roger will be directly going on for the Lord. That is going to be an evolved Lord. So it will be quite hard for the side of Team Luminaire's Lyre to actually defend this one. You know, Itami, Luminaires did have that chance, a solid chance to get that Lord to win out that team fight. If only they would have been able to take down the Roger, because she was just offering herself up on the chopping block. But yet, like, she just escaped in low HP, and that shield just saving her life at the clutch. And the Popple and Koopa with the stun, with the damage, taking down the Benedetta, and like even she escaped in 1 HP. So yeah, a win-win trade. But then I think it was a crucial mistake from the side of Luminaries not being able to just take down that one solo jungler. I agree, and the Lord actually is spawning like directly coming to the base from the top lane. So the lane sync is quite up to the point, but the engages, the execution part is going to be mattering the most at this point. At least if they are able to get 1 or 2 inhibitors, or maybe even in this game, then it would be better. Kufra trying to make another engage onto the Benedetta. Annabelle might be taken down. She is quite low and she will be getting punished for that overextension right onto there. She was able to buy some time, but that might not be quite worth it, because that is going to be the 2 towers falling down already. Sonia will be taken down. Ducky with the kill onto no chance, but still it is going to be 4 members for the side of Team MAAF still alive, and Ducky might be taken down. Roger, look at him, but okay, she is able to save her life somehow, and Team Luminaire's Lyre are somehow able to defend this base. For the side of Team MAAF, they are quite low, so disengaging would be a better option. If Ducky did try to engage onto this, she will be able to get all of those 3 kills, and they are aware of that. They are just disengaging and trying to recall, and they will just be stopping for now because the towers have already been fallen off, and it's only the crystal remaining for the side of Team Luminaire's Lyre. I mean, you know, that I wasn't expecting that they will be able to defend, but then again, Bruno dishing out a lot of damage at this point, and once again, the glooms of Lilia have started to hurt. If you see, she was creating that no man's land in front of her, dishing out a lot of damage, like literally making people go away from that area. And I really believe that Team MAAF couldn't actually, you know, Bruno was out in the open, 3 people were in front of them, the rest of them were focused on taking down the Lord, but yet it was only the Phobius trying to charge in, and when he was able to, you know, take out some of the HP, Roger just dived in mindlessly, and that final heal coming from Rafaela just saved her life. So I think they should have focused on the Bruno Itami. Definitely, Daki is being the one who is the most damage dealer for the side of Team Luminaire's Lyre. So if she is taken down, then they will have the higher advantage to be ending this game. So unfortunately for this fight, it didn't happen, and they kind of paid it off. Like, they did got the towers, but they should have been able to end this game too. That didn't happen, and it is quite extending. That is going to be a 3rd Lord coming up, and Team MAAF will be the one contesting the Lord first, and I guess they are aware of the consequences that Team Luminaire's Lyre, even though they have still 5 members alive, and that is going to actually going to be an uncontested Lord for the side of Team MAAF. So this Lord will be quite hard to defend. I mean, true, and especially if the lanes are all synced up, it will be a hard time for Luminaries. But then again, you know, they do have Annabelle, and she's trying to buy out some time. But then again, with her ultimate, she is on the opposite side. She's been taking down 1 versus 5. I think, like, you know, she can maybe go for that side like push, because she will be doing a great job at that. And I think Team MAAF does know that, because Roger is not just letting her go for that push she needs. I highly agree, and the Lord marching from the mid side, so this is going to be a tough defense coming up, but really big team fight, like engage coming up, might be coming up from that Kufra as well. They are trying to engage onto there. The minions are quite synced up quite well. Uzu trying to engage onto Annabelle, and the Lord, okay, the Deadly Cat has by the brain as well. The Benedetta trying to use the ultimate, but directly this is going to be Team MAAF going for the base, and that was a perfect lane sync. You know, they didn't even
one of the sides, like both of the sides, even didn't lose one members. So it was just the lane sync and focusing more onto their objectives. That is what happened. And Team MAAF will be the one victorious, and they will be securing their spots onto the grand final. So congratulations for the side of Team MAAF, and like a really good gameplay from the side of Team Luminaire Lyre as well. I mean, true, all of the girls just rocking it out. I mean, you did an amazing job, and just keep participating in all the tournaments because we really want to see you shining out there. And yes, with that, Itami, I think, the draft, especially picking up a Benedetta against a Phobius, was the major mistake, if you ask me, because Team Luminaire didn't have a beefy front line. They had a support, like, they didn't have anyone. Meanwhile, the side of Team Mav picked up that Phobius. They have the Cobra, two of the tanky people, and then again, Popol and Koopa also. He does have his dog to defend, right? And like a lot of space was created due to this, and I think, what can we say, but stand is stand. Team Marv will be securing the the fifth game and going on ahead with us in the tournament. Yep. And for that game, for the game number 5, it was Popple and Koopa with the MVP as well. So she was able to just burst out her turrets and more onto the object. That is what happened. A deserving MVP as well as a really good composition coming up from the side of Team MAAF. So worthy winners. I guess for today, that is going to be it with today's matches. So we will be back tomorrow. Till then, me, Itami, as well as Asuya will be signing off. Good night, everybody, and take care.